स्थितियों को देखते हुए हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहां भाषाओं, खान-पान, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमें इसके साथ ही आजादी के बाद से लगातार हुई घुसपैठ के कारण आसाम में, मणिपुर में, पूर्वांचल में, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट जैसी समस्याएं, साथ ही सारा विश्व एक बाजार है। दुनिया में व्यापार, विचार, अन्य तरह के संव्यवहार के लिए सभी तरह के षड्यंत्रों का प्रवेश भी देश में होता रहता है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आसाम सरकार से घुसपैठ के संबंध में सारी जानकारी मांगी गई। पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घुसपैठ पर हुई कार्रवाई के संबंध में निर्देश भी दिए हैं। हमारे पड़ोसी देश विशेषकर पाकिस्तान एवं चीन अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हम छद्म युद्ध का मुकाबला कर रहे हैं। यह बात सही है कि वर्तमान सरकार के 9 वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर बहुत ताकत के साथ कार्रवाई हुई है, फंडिंग रोकी गई है, अनेकों संस्थाओं के पंजीयन रद्द हुए हैं, एनजीओ के माध्यम से चलने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगी है। अभी भी तरीका बदलकर नए नए ढंग से हमारे दुश्मन प्रयास जारी रखते हैं। इन सब से निपटना एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने, स्कूलों की बड़ी कक्षाओं में एवं महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को सैन्य शिक्षा अनिवार्य किए जाने की हम भारत सरकार से मांग करते हैं। इसमें दूसरा लाभ यह होगा कि हिंदुस्तान का फिजिकल फिटनेस भी बढ़ेगा। आज जिस तरह से बहुतायत हम अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, हर घर में सर्वाइकल, आंखों की बीमारियां और हमारा बहुतायत समय अनुपयोगी कामों के लिए जाता है और बीमारियां सृजित होती हैं। तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए, एक स्वस्थ हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए भी मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य रूप से स्कूल की बड़ी कक्षाओं में और महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए सैन्य शिक्षा अनिवार्य की जाए। धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, कंसर्न ओवर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज ऑन फॉरेन सॉइल। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मुझे समय दिया 0 आवर में। सर, हाल ही में हमने देखा है किस तरीके से खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो एम्बोल्डन हो रहे हैं, वो भी फॉरेन सॉइल पे जाकर, और हमारे देश को धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि हम एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बॉम्ब कर देंगे, पार्लियामेंट में अटैक करेंगे। तो इस तरीके की जो थ्रेट्स आ रहे हैं उस पर हमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर नियंत्रण में लाना जरूरी है। सर, हाल ही में कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस इसी रीजंस की वजह से एस्केलेट हुए थे, जहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं उनको थ्रेट किया जा रहा था, उनके बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे थे फोटोग्राफ्स के साथ कि उनको हार्म किया जाए, उनको हार्म्स वे में लाया जाए। तो ये कहीं भी हमारे, मैं मानती हूँ हमारे पार्लियामेंट के माध्यम से हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है कि ये गतिविधियां हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम हर कार्रवाई करेंगे टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अमेरिका भी हमसे कह रहा है, अमेरिका हमसे कह रहा है कि जांच करें उनके अमेरिकन सिटीजन जो हमारे आतंकवादी हैं उन पे कार्रवाई करने की, हम एमईए के माध्यम से और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से हम उन पे कार्रवाई करें, उनको वापस देश में लाएं और उन पे सख्त से सख्त जो सजा बनती है उनको सजा मिलनी चाहिए। इस आपके माध्यम से यही कहना चाह रही थी सर कि हमें इसको ध्यान देना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। This is an important issue. I'll discuss with floor leaders so that a voice from this august chamber can go to the entire world. Shri Prakash Chik Braik. Respected Chairman Sir, मैं आप विषय प्रोविडेंट फंड खातों में आधार के लिंक के कारण
चाय बागान के श्रमिक, पश्चिम बंगाल के चाय बागान श्रमिकों को बहुत सारा समस्या का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रोविडेंट फंड को आधार से जोड़ने वाले अनिवार्य करने के कारण पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों को बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति के कारण कर्मचारियों को पेंशन की असुविधा हो रही है एवं प्रोविडेंट फंड की पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मैं एक चाय श्रमिक हूँ एवं चाय बागान का वर्कर हूँ और ऑलरेडी एक आदिवासी संप्रदाय से आता हूँ। इसके कारण 58 साल के बाद में जो रिटायरमेंट होती है चाय बागानों में, रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों को प्रोविडेंट की फंड की पैसा नहीं मिलती है एवं विभिन्न प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग से बहुत सारे काम जो चाय श्रमिक एवं ग्रामीण चाय मजदूरों के लिए किया गया, जैसे क्रेश हाउस, हॉस्पिटल की व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि का पट्टा देना से लेके बिना पैसा में राशन, बिना पैसा में स्वास्थ्य एवं विभिन्न प्रकार की परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से चाय श्रमिकों को किया गया है। लेकिन आधार लिंक के कारण जो पैसा नहीं मिल रही है एवं इस मिसमैच के कारण जो गरीब चाय श्रमिक है वो पैसा नहीं पा रहे हैं, पेंशन नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूं, इसको जल्द से जल्द ठीक करे एवं पश्चिम बंगाल को जिस तरह से अवहेलना की नीति केंद्र सरकार से किया जाता है, विभिन्न प्रकार के सोर्सेस के कारण इसको ठीक किया जाए। हम लोग चाहे मजदूर एवं प्लॉकिंग करने के कारण महिलाएं जो है उनका अंगुली छिल जाता है, आधार उसको मॉनिटरिंग करने नहीं सकता, मशीन मॉनिटरिंग करने नहीं सकता है। बहुत सारा ग्रामीण इलाका है जहाँ नेटवर्क का समस्या है एवं जहां से उनको उस सुविधा को देखना पड़ता है। अभी जहां तक है आधार के कारण जो समस्या है इसको ठीक करे एवं ऑफलाइन को कंटिन्यू रखे जब तक ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण एवं गरीब श्रमिकों को इससे असुविधा हो रहा है। राज्य सरकार 100-150 साल से जो हम लोगों का डिमांड था जमीन का पट्टा, राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय ने 10 एवं 11 दिसंबर को अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी में एक चीज पास कर दिया एवं जमीन का पट्टा प्रत्येक चाय श्रमिक को दिया जा रहा है एवं उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए करके दिया जा रहा है, जो श्रेणीय है। भारत में केवल पश्चिम बंगाल में चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है, और भी स्टेट पे होता है जहां ये सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से इस मैटर को संशोधन करने के लिए बोलता हूं एवं मंत्रालय को बोलता हूं जल्द से जल्द इस मैटर को ठीक किया जाए एवं चाय श्रमिकों को इसका सुविधा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भट्टी। धन्यवाद माननीय प्रकाश पारायिक जी। माननीय डॉक्टर अमर पटनायक, डिमांड फॉर सेटिंग अप एन इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कैंपस इन ओडिशा। Sir, I'm speaking in Odia, sir. प्लीज। Sir, ओडिशा रे एको इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी रो कैंपस प्रतिष्ठा करिवा पई ये दाबी, उड़ीसा में एक इंडियन मैरिटाइम इंस्टीट्यूट का कैंपस खोलने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट है। सर, भारतीय मैरिटाइम यूनिवर्सिटी अधिनियम 2008 मसिया रे मैरिटाइम यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा करा जायतला। सामुद्रिक अध्ययन, अनुसंधान एवं तालीम को सुगम करिवा पई जातीय स्तर रे एक विश्वविद्यालय आरंभ करिवा पई ए विश्वविद्यालय रो उद्देश्य थिला। सर, भारत वर्ष रे 6टी जगह रे एबे से कैंपस अछि। गोटे हला चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई बंदर, नाभी मुंबई एंड विशाखापट्टनम। ये जो 6टी कैंपस अच्छी सर से माने बहुत भलो काम करछंती, किंतु सर एबे ओडिसा रो 480 किलोमीटर होची हमरो कोस्ट लाइन, आ एई कोस्ट लाइन रे हमरो पोर्ट्स अछि, आ आहुरी 14टी पोर्ट पई मध्ये स्थान निरूपण करा जायछि। ओडिसा रो एक समृद्ध सामुद्रिक इतिहास रहिछि। प्राचीन काल रे दक्षिण एशिया रे अनेक देश एहार सहित वाणिज्य संपर्क मध्ये थिला। सब भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जेतेबेले जाइथिले बाली, सेतेबेले बाली यात्रा विषय रे मध्ये उल्लेख करथिले, आ एई जो परंपरा मध्ये उल्लेख करथिले। एहार नौसेना, ओडिसा रो नौसेना रो उन्नति क्षेत्र में मध्ये बेस जनाशुना थिला। यह केवल अर्थनैतिक विकास को प्रोत्साहित करि नथिला, बरम श्रीलंका, थाईलैंड, ब्रुनेई एपरि बहुत देश संगे वाणिज्य भागीदारी उपरे मध्ये सांस्कृतिक प्रभाव पकाइथिला। एक दीर्घ उपकूल प्राकृतिक बंदर रहिबा व्यतीत ओडिशा मध्ये प्राकृतिक संपद रे यथेष्ट भरपूर। खनिज पदार्थ परिवहन रे ओडिशा रो एक प्रमुख हब हबार मध्ये क्षमता अछि। एहा छडा सर हमरो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अछि, से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे मध्ये एई प्रोग्राम को जदि लिंक करि दिया जाए ताले बहुत लोकन को मध्ये ट्रेनिंग दिया जाए कि सेमान पई चाकरी उपयुक्त व्यवस्था करा जाई पारिबो।
सर जेतेबेले बंदर परिवहन एवं जलपथ केंद्र मंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित जातीय सागरमेला एपेक्स कमिटी नेशनल सागरमेला एपेक्स कमिटी तृतीय बैठक रे ओडिशा सरकार भारतर आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास रे सामुद्रिक परिवहन महत्व पर आलोकपात करथिले एवं ओडिशा रे गोटे कैंपस खोली पाई मध्य समीक्षा करने को केंद्र को अनुरोध करथिले। एहा द्वारा केवल जे ओडिशा रो उन्नति हेबो से नुहे भारत वर्ष रे मध्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगे बहुत प्रकार रो कोलैबोरेशन करा जाय परिबो सेमानंक संगे ट्रीटी करा जाय परिबो गोटे इंटीग्रेटेड कॉरिडोर मध्य करा जाय परिबो। सेति पई सर मु केंद्र सरकार पाखे निवेदन करिवि कि ओडिशा रे गोटिए इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी रो कैंपस खोला जाऊ हमर गोटे मैरिटाइम म्यूजियम अछि कैंपस हेले मध्य या आहुरी ताकू अधिक एक्सपेंशन करि परिबो लोक माने एथिरे बहुत प्रभावित होई परिबे भारत वर्ष को बहुत सुविधा होई परिबो। धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय श्री मस्तान राव बीडा, need to support and enhance the horticulture sector in Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you for Honorable Chairman, sir, for giving me opportunity to speak on importance of horticulture in the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was amongst the top states for fruit production during 2021 and 22, producing approximately 1.8 crore metric tons of fruit as per ministry estimates. The horticulture sector is critical to the state's agriculture landscape and includes diverse array of crops with mango, banana, orange, and papaya leading in production. Horticulture is rapidly growing, with Andhra Pradesh aiming to become a significant horticulture hub, exporting its produce globally. This transition to horticulture provides a climate resilient and higher income alternative for the farmers, contributing to food and nutritional security in the state and country. However, India's share in the global horticulture market remains a mere 1%. The sector faces numerous challenges such as small operational landholdings, irrigation inadequacies, poor soil management, inadequate transportation infrastructure, and fragmented supply chains contributing to delays. The perishable nature of produce and lack of equitable cold storage and warehousing facilities across the states lead to wastage affecting profits. Addressing these issues and taking the required action, such as expanding cold storage facilities, is crucial for unleashing the sector's full potential. I therefore urge the government to support and enhance the horticulture sector in Andhra Pradesh, particularly boosting its contributions to sustainable agriculture and increasing our country's exports in the global market. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Thank you, Mani Masthan Rao Bida ji. Mani Shri Niranjan Visi ji request to exempt GST for handloom sector. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for giving me an opportunity to raise the matter of an urgent of public importance on the to exempt GST for handloom sector. Sir, the fact that GST has been implemented in the textile sector, especially the handloom sector, after its implementation in 2017, which has not produced the desired results. Cotton fiber, yarn, and fabric, which were not taxed, attracted 5% GST, and for fabrics from handmade yarn, it would be 12% for the yarn and 5% for the prepared fabrics. This translates to simply mean that the weaver would now have to pay GST for the yarn they purchase, color dyes they use, print jobs they complete, and a host of other things that involve material of process for the entire process of creating a handloom fabric, in addition to their own fabrics. This will have a declining effect on marketing turnover of handloom products and therefore adversely affect the earning of the weavers engaged in this profession, sir. This had an impact on 43.32 lakh workers and weavers who account for 14% of the total textile production in the country. Even the elementary education level among these workers is very low, which makes it difficult for them to comply with GST through filling of forms, observance of producers, and procedure and other formalities, and to seek out help for the professional dealing with GST, who have an attached cost
for their services and accordingly would force the waiver to travel to urban areas, adding to their financial misery. The state of Odisha has a rich culture of handloom and textile. To help the handloom waiver with the financial burden caused through GST, the government of Odisha, led by our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik, has enhanced the interest-free loan assistance for the weaver and handloom artisan to rupees 1 lakh under the Bunakar Assistance for Livelihood and Income Augmentation Scheme, Bolia scheme, sir. Weavers can avail of working capital as per their requirement to a maximum of rupees 1 lakh from the bank at 0% interest. The Bolia scheme is being implemented in Odisha, both in urban and rural areas. Therefore, I believe that exemption of GST from the handloom sector can be a major extension of helping hand to these workers and can further help to preserve the rich culture and tradition of our country. Thus, in order to encourage promotion of handloom products, I urge the government of India through you to exempt GST from handloom धन्यवाद products. धन्यवाद माननीय निरंजन VC जी। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, डिमांड टू हैव इन्फॉर्म प्राइसिंग ऑफ गैस सिलेंडर एट ₹500 पर सिलेंडर थ्रू आउट द कंट्री। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में चुनावी भाषण के दौरान भाजपा द्वारा ये कहा गया कि घरेलू गैस सिलेंडर देने के लिए वादा किया गया है। ये अच्छी बात है और चुनाव माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया था। पूरे देश में गैस सिलेंडर के दाम एक समान होनी चाहिए। देश में 1100 से 1200 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस मिल रहा है। क्या सरकार 600 से 700 रुपये प्रति सिलेंडर वर्षों से मुनाफा कमा रही है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को भी 500 रुपये से अधिक दर पर प्रति गैस सिलेंडर देश में नहीं मिल रहा है। रक्षा बंधन के समय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय में 100 रुपये की राहत दी गई। लेकिन अभी भी इस योजना के तहत 600 रुपये से अधिक दर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं रसोई गैस खरीदने के लिए बाध्य है। डोमेस्टिक सिलेंडर 14.2 किलोमीटर दिल्ली में है 903 रुपये और उज्ज्वला बेनिफिशियरी के लिए है 603 रुपये। कोलकाता में है 229 रुपये और उज्ज्वला का है 629 रुपये। मुंबई में है 202 रुपये और उज्ज्वला का है 602 रुपये। चेन्नई में है 918 रुपये और उज्ज्वला बेनिफिशियरी का है 618। मेरी मांग है कि सरकार देश में 500 रुपये की दर पर रसोई गैस सिलेंडर देने की नीति अपनाए, यह हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं अपना नाम यहाँ भेज दें। माननीय प्रमोद जी, आप जानते हैं प्रक्रिया। माननीय उपसभापति माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, कंसर्न ओवर इंक्रीज इन केसेज ऑफ इंक्रोचमेंट इन द रिवर बेड एरियाज। जी, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ऐसे गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश के अंतर्गत नदियों की जो इनकैचमेंट एरिया है उसका निरंतर संकुचन हो रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि नदियां धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं और उनका जो फैलाव है वो समाप्त हो रहा है। उससे आए दिन बाढ़ की भी समस्या बनती है और मान्यवर राष्ट्रीय नदियों पर तो थोड़ी चिंता सरकारों की रहती है, लेकिन जो क्षेत्रीय नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हमारे स्थानीय स्तर पर जो बहती हैं, उन नदियों का जो भी इनकैचमेंट एरिया है उन पर आवासीय बस्तियां बनती जा रही, लोग खेती करने का काम कर रहे हैं और नदियां निरंतर सिकुड़ती चली जा रही। वो एक गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। मानवर इसके चलते जो हमारा भूगर्भ जल स्तर है वो निरंतर नीचे जा रहा है और वो सारे देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मानवर ये इतना गंभीर विषय अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत सी नदियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही
और जो नदियां छोटी छोटी नदियां हैं उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। लोग उसके इनकैचमेंट एरिया में खेती कर रहे हैं, तमाम और कई निर्माण कार्य कर रहे हैं और नदियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो मान्यवर मैं चाहूंगा ऐसे गंभीर विषय की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। मान्यवर इतना ही नहीं, स्थानीय लेवल पर जो वाटर बॉडीज थी, तालाब इत्यादि थे, पोखर थे, उनका भी अतिक्रमण हो रहा है। वहां पर उनका भराव करके वहां लोग आवासीय बस्तियां बना रहे हैं और उससे हमारा भूगर्भ जल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है। तमाम सारे हम प्रयास कर रहे हैं कि रेन वाटर रिचार्जिंग का, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, वैदिक काल से जो हमारी नदियां और हमारे तालाब जो हमारे भूगर्भ जल संरक्षण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते थे, आज उन पर ही इतना बड़ा संकट छाया हुआ है। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा संकट उत्पन्न होगा। आने वाले समय में पीने के पानी का भी गंभीर संकट होगा। मान्यवर इतना ही नहीं, अगर इन स्थानीय नदियों, छोटी छोटी नदियों पर चेक डैम बनाकर हम वहां के भूगर्भ जल स्तर को भी बढ़ा सकते हैं और सिंचाई के संसाधनों को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब नदियां ही नहीं रहेंगी, और आज हो ये रहा है, स्थानीय प्रशासन बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधकर बैठा रहता है, लोग नदियों का, तालाबों का अतिक्रमण करते रहते हैं और स्थानीय प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता। मेरा आपसे इस गंभीर विषय के ऊपर आपसे आग्रह है कि इसके ओर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, राज्य सरकारों को भी निर्दिष्ट करे कि उनके अंतर्गत आने वाली जो स्थानीय नदियां हैं उनका संरक्षण किया जाए, उन नदियों को जो विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया जाए। आज हम तमाम सारी सड़कों और योजनाओं के ऊपर लाखों करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन नदियों के संरक्षण के लिए हमारी प्राथमिकता नहीं। केवल कुछ राष्ट्रीय नदियां हैं जिनके संरक्षण की चिंता होती है, लेकिन स्थानीय नदियों के संरक्षण के लिए मैं चाहूंगा एक धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, डिमांड टू प्रोवाइड हाउसेस टू गडिया लोहार्स इन दिल्ली एंड टेक स्टेप्स टू अपलिफ्ट द सोशल स्टेटस ऑफ दिस नोमैडिक कम्युनिटी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जो कुछ लोग जो गरीब हितैषी होने का स्वांग रचते हैं और कुछ पार्टियां जो गरीबों के कल्याण के नाम पर वोट लेकर सत्ता का आनंद लेती हैं, मेरी बात से उनका असली चेहरा व चरित्र देश की जनता के सामने आ जाएगा। मान्यवर, सन 2001 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय चौधरी साहब सिंह वर्मा थे। उन्होंने गरीब घुमंतु देशभक्त जाति गाड़िया लोहार के पुनर्वास की योजना बनाई तथा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री अनंत कुमार से रोहिणी के सेक्टर 2 में गाड़िया लोहारों के लिए छोटे फ्लैट बनाने की योजना का शिलान्यास करवाया। मान्यवर, 2 वर्ष के कार्यकाल में ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए, जिनका उद्घाटन तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया। इन फ्लैटों में केवल एक रिहायशी कमरा और नीचे एक दुकान उनके काम करने के लिए थी, इतना ही उनका निर्माण था और लगभग 35 के लगभग ये फ्लैट थे। मान्यवर, इन लोगों का दुर्भाग्य कहेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी की सरकार आ गई जो 2013 तक चली। इसके बाद दिल्ली में आप पार्टी श्री केजरीवाल जी की सरकार आ गई जो अभी भी सत्तारूढ़ है। मान्यवर, 20 सालों में ये फ्लैट खाली पड़े हैं, 20 सालों से, और ये खंडर होने के कागार पर है, लेकिन गाड़िया लोहार फुटपाथों पर गंदगी के बीच पड़े हैं। मान्यवर, गरीबों के हितैषी होने का स्वांग रचने वाली कांग्रेस और आप पार्टी का इससे बड़ा संवेदनहीनता का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर इन फ्लैटों की मरम्मत करवाकर गाड़िया लोहारों को दिए जाएं और वहां बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधाएं दी जाएं। अगर फ्लैट कम पड़ते हो तो इनसे ज्यादा और फ्लैट बनाकर उनको पुनर्वासित किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री ए मोहम्मद अब्दुल्ला, डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूट, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूट फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री टू इंप्रूव कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। प्लीज that will go on record. No, please. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, India suffers from a serious level of unbalanced distribution of food. Something even more worrying is that the country wastes a significant portion, which is approximately 16% of its farm produce, such as fruits and vegetables, due to less availability of
cold chain infrastructure. Often we see the practice of farmers destroying their produce instead of selling it at fully low prices. Our Indian food processing sector has a tremendous capacity for growth that can improve socio-economic condition of the rural masses. However, the performance of this sector is lagging substantially when compared to other developing nations. India is ranked first in the production of milk, banana, papaya, mango, ginger, and pulses globally. Sir, however, the overall processing level of the perishable products stands at just 10%, which significantly limits to the processing capacity when compared to other nations such as USA, France, and Thailand. Despite having the advantage of favorable agri-climatic condition, the Indian food processing sector lags compared to global food processing supply chain in terms of overall productivity. Many food processing business operates in the small and medium enterprises sector, which often lacks the resources need to upgrade their facilities and machineries to latest technology. Hence, it faces challenge like wastage and contamination. Considering the present situation, the union government must take immediate action to improve the cold storage and logistics of farm produce at the village level across the country. I also call upon the union government to announce a minimum selling price for all farm produce and announce special schemes to build more cold storage centers across the country to benefit both the farmers and to prevent unforeseen price hike of the agro products which are badly affecting the common man. Thank you, sir. Thank you, Mani Mohammed Abdullah ji. Mania Srimati Mamta Mohanta request to promote Santhali Sarij in the country. धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे इस गुरुत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, ओडिशा में सांताल समुदाय की बड़ी आबादी है। सिर्फ ओडिशा में नहीं, भारत देश की काफी राज्यों में इनका आबादी है। संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के मामले में ये सांताल समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। इस समुदाय की भाषा को पहले ही देश की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये समुदाय अपने पहनावा, कपड़ा के लेके भी काफी चर्चा में रहते हैं और ये सांताल समुदाय महिला व्यवहार करने वाली वस्त्रों को सांताली साड़ी, झाल साड़ी, पंची साड़ी बोलते हैं। ये सांताली साड़ी को हर कोई बहुत पसंद करते हैं और ये साड़ी इस समुदाय की परंपरा सहित जुड़ी है। पूजा, पार्वण, शादी, ब्याह, विभिन्न कार्यक्रम में ये साड़ी पहनना अनिवार्य है। महोदय, आपको बता दूं कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में ये सांताल साड़ी का काफी चर्चा में आया था और ये साड़ी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बहुत पसंद है। वर्तमान समय में ये सांताल साड़ी का संरक्षित और बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी में समाज के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान होगा। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि ओडिशा की संबलपुरी साड़ी को काफी बढ़ावा मिला है। विश्व के विभिन्न देश में संबलपुरी साड़ी लोग का पसंदीदा बन चुका है। ऐसे ही सांताल साड़ी को भी प्रोत्साहन की जरूरत है। महोदय, मैं आपके माध्यम में वस्त्र मंत्रालय को अनुरोध करना चाहूंगी कि इस सांताली साड़ी, झोल साड़ी को संरक्षित और विकास के लिए कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी डिमांड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ कोसियारी कमिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। माननीय दिग्विजय सिंह नहीं, माननीय श्री जीवीएल नरसिम्हा राव need to implement urgent measures for revival of RINL Visakhapatnam steel plant. Thank you, Chairman Sir, for the opportunity. So my 0-hour submission is about the need to support and strengthen RINL, popularly known as Visakhapatnam steel plant. So this steel plant was established in the 80s after years of agitation and sacrifice of lives of 32 people. So the plant came into existence, the plant came into production in 1989. And there has been a demand for preferential allotment of captive iron ore mines. So successive governments have not provided these mines. And as a result,
the cost of production of RINL is significantly higher compared to the sale or other plants. So for 10 years, Congress came to power in Delhi in 2004 only because they won 34 out of 42 seats from Andhra Pradesh. But despite that, they also had a government in Andhra Pradesh from 2004 to 2014. There was a complete neglect. There was never allotment of iron ore, captive iron ore plants, mines in favor of RINL. On the contrary, they invested over 2,000 crores in a forced wheel plant in Raebareli, several thousand kilometers away, only to placate their Congress president and also the then and present MP from the same constituency. And they also invested at a time when RINL had cash reserves. They invested over 14,500 crores for expansion, which actually put heavy interest burden on RINL. So the story of RINL, Visakhapatnam Steel Plant, is a story of complete neglect and injustice. So in 2021 January, the government has taken a decision for strategic disinvestment, but I'm glad this decision is currently not progressing, it is stalled. So since 2022, the third blast furnace is not working. The third blast furnace has not been functional due to several issues and problems. So I call upon the government, sir, and also the salaries of executives, pensioners and contract workers are delayed because of financial difficulties. Suppliers are also not being paid. Executive promotions, particularly even the time-bound promotions for executives have stopped. Therefore, I call upon the government to take urgent measures for revival, sir. In 2000, when RINL was referred to BIFR, the Atal Bihari Vajpayee's government bailed it out by giving 1333 crores. I call upon the present government to take urgent measures for revival, to provide promotions, and to take pro-employee measures. Thank you, Mani GVL Narsingh Rao ji. Mani Shri Anil Prasad Hegde ji, issue of digitization of data on India digital ecosystem on agriculture. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the time. The government is proceeding blindly with the digitalization of agriculture without first putting a legal policy framework in place, sir. Although a draft of the policy paper, India Digital Ecosystem on Agriculture idea, was shared in 2021, inviting feedback, there has been no final draft since. There are also serious concerns if the policy, whenever finalized, will be farmer-friendly, because the committee working on this policy did not have a single farmer representative, sir. This policy vacuum has not stopped the government from signing one-year MOUs in 2021 with 11 companies to develop proofs of concept of AgriStack. 2 years later, there has been no updates about the successes and outcomes of these MOUs and how the government will proceed in this regard, sir. In the interest of transparency and accountability, the government needs to share details about the work done under each MOU. As the government actively promotes digitalization in agriculture, there are questions if this will benefit farmers or further lead to their exploitation. E-Sahamati is being touted as the consent manager to help farmers safeguard who all can access their data. While ensuring such consent is extremely vital and necessary, it is not sufficient to ensure that farmers have full control of their data. What is needed beyond consent for meaningful data protection is participatory governance over data, sir. People and farmers should be able to decide what digital services can do with their data rather than digital services making the decision and then using the fig leaf of consent to coerce people to use their services on unfavorable terms. Just like shareholders can vote in the AGM of a company to decide what the company can or cannot do, or citizens of a country can vote to decide who will govern them, people who use digital services should be able to vote to decide what the service can or cannot do with their data. In conclusion, I request the government, sir,
to ensure that all digital infrastructure is governed in a participatory manner. Thank you. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी। डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, डिमांड टू सेव ग्रेट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। माननीय सोनल मान सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति जी महोदय। ये एक विषय ऐसा है सर कि this needs attention of the entire country. We speak of the tangible heritage, but we are unable to think of the intangible heritage which has kept our country intact despite so many attacks. Our culture and traditions, civilizational values have remained intact. Especially, sir, I would like to mention the fine arts of dance and music, which are the USP of India in the world. भारतीय परंपरा में श्री भगवान नटराज शिव को बहुत महत्ता दी गई है सर। नया कन्वेंशन सेंटर जो बना है भव्य G20 के लिए और अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर भी 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई है। तो उनको नटराज कहते हैं, न नेताराज, न कविराज, न वैद्यराज, न गीतराज, नटराज। तो इसी में नाट्य में सर सभी विधाएं, सभी विज्ञान, सभी विद्याएं शामिल हैं। और ये नाट्य शास्त्र से निकली हुई जो परंपराएं हैं, जिसने भारत को सुनहरी सूत्र में बांध के रखा है, राइट फ्रॉम त्रिपुरा, मणिपुर, असम, अरुणाचल to Gujarat, Rajasthan, down to Kanyakumari and Kashmir. And this has taken India around the world, sir. तो उसमें यदि USP में सोलो जो डांस है, एकल नृत्य, जिसको हम तपस्या कहते हैं, कि सर मैं भी उसी में ट्रेन हुई हूँ। 8-8 घंटे हम लोग रियाज करके, सीख के 2-2.5 घंटे ऑडियंसेस को पूरे देश में, यानी पूरे देश में और 90 देशों में गई हूँ सर, एज अ सोलो डांसर। तो ऑडियंस को पकड़ के रखते हैं। अब वो सारा खत्म हो रहा है सर, ग्रुप कोरियोग्राफीज हो रही हैं, जैसे टीवी में, बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं। लेकिन सर ये हमारी यूएसपी है, इसके लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए खास। 8 शास्त्रीय विधाएं जो हैं, उनमें सोलो डांस, तपस्या की पूरी वो होनी चाहिए, क्या कहें उसको, सीखना होना चाहिए सर। और ये यदि मर जाएगा, ये यदि क्षीण होता जाएगा, if we allow this to die, sir, a huge part of our cultural heritage will also die. मैं इतना ही मांग करती हूँ सरकार से कि 200, 500, 1500 कलाकार तो हैं, लेकिन एक कलाकार की जो तपस्या साधना उसकी कला है सर, इस हमारे हेरिटेज को, हमारी धरोहर को हम मरने ना दें। और मुझे सरकारी इसमें मांग मैं कर रही हूँ कि सरकार हस्तक्षेप करें। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। ऑनरेबल श्री वाइको जी request to direct NAFED to take suitable measures for processing the procured copra and to market the coconut oil as Bharat coconut oil. Thank you very much. The Union Government Agency NAFED procured copra coconuts from farmers at rupees 108 per kilogram and keeping a stock of 1 lakh metric tons from Tamil Nadu alone. It comes to only 10% of the total copra production. The remaining 90% of the coconuts are sold in the open market. The copra price in Tamil Nadu has come down from rupees 90 to 85. Taking advantage of the offer for sale through action by NAFED, big companies have formed a syndicate, cartel, and plan to bid at rupees 65 per kg. This way, the cost of copra per kg will further come down to rupees 50, and price of coconut will come down to from rupees 12 to rupees 5 in the market. Once this happens, the coconut farmers will be severely affected and they will be at a heavy loss. To protect against such a move, South India Farmers Association is staging a protest at Jantar Mantar, New Delhi, demanding that the government agency itself should process and market the coconut oil. NAFED is procuring wheat from farmers and selling wheat flour under the name Bharat Atta.
They also buy dal and sell under the name Bharat Dal and onion under the name Bharat Onion. Therefore, on behalf of the Indian coconut farmers and their associations, I am urging the government to take efforts to introduce Bharat coconut oil by directing NAFED to get the copra processed and sell to the public. This way, both the farmers and the general public will be benefited, removing the middleman. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Vaiko ji. Mani Srimati Sulata Deo ji, demand for increased funds for biodiversity conservation in the Chilka Lake. थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी द परमिशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये उड़ीसा से रिलेट करता है और देखा जाए तो इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट जो हमारा टूरिज्म का टैगलाइन है उड़ीसा के, ये चिलिका लेक है जो एशिया का सबसे बड़ा ब्राकिश वाटर लेक है। ये लागून है, चिलिका लागून है। मैं इसके संदर्भ में डाली हूँ। Despite being the first Indian site to be declared as a wetland of importance under the Ramsar Convention in 1981, the status of biodiversity in Asia largest brackish water lagoon चिलिका is under threat। क्योंकि चिलिका अभी देखा जाए तो चिलिका में बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। अभी चिलिका विंटर सीजन चल रहा है, बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड आते हैं वहाँ पर रेस्टिंग के लिए और चिलिका लेक जो है वो सबसे पसंदीदा जगह है उन लोगों के लिए, उन बर्ड्स के लिए। और देखा जाए तो इरावदी डॉल्फिन भी वहाँ पर है। इन चिलिका लेक को ठीक से रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उसके बायोडाइवर्सिटी संरक्षण करने के लिए ये एक वेटलैंड भी है। सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से 2022-23 में 30.51 करोड़ का वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए दिया गया है। मगर देखा जाए तो उड़ीसा की चिलिका के लिए या कोई भी वेटलैंड के लिए एक भी पैसा का प्रावधान नहीं हुआ। ये पता नहीं क्यों, क्योंकि जब हम टूरिज्म के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वेटलैंड को संरक्षण करने के लिए बात करते हैं तो चिलिका पहले आता है क्योंकि वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लागून है। पहले से तो फोनी के टाइम से चिलिका लेक बहुत मुश्किल में था। अब देखा जाए अगर हम लोगों को उतना पैसा नहीं मिलेगा जो संरक्षण के लिए तो फिर कैसा होगा। ये हम लोग का जो उड़ीसा के जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है, सीडीए चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी करके बहुत सारे काम हाथ से खुद ले रहे हैं। मगर मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से निवेदन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये किस तरह से ज़्यादा असिस्टेंट दे कि इसको हम लोग संभाल के रख सके, इसका बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण कर सके और बहुत सारे जो प्रजाति विलुप्त प्राय है जो चिलिका में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं उसको हम सहेज के रख सके। अभी हम बोल रहे थे कि ये बर्ड रेस्टिंग का पॉइंट होता है, जो विदेशागत पक्षी आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो हाईकोर्ट के जो दिया गया है, जो हम लोग का जो वो घेरी है, उन लोगों को वो कैसे करके वो घेरी को डिमोलिश करते हैं, जो प्रॉन घेरी होता है। थैंक यू। धन्यवाद सुलता देव जी, धन्यवाद। माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, डिमांड टू शिफ्ट हेल्थ फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय प्लीज डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्लीज यू स्पीक। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दोनों को हृदय से आभार प्रकट करूंगा। इस देश में महिलाओं और बच्चों में खून की कमी के लिए उन्होंने 2018 में एनीमिया मुक्त अभियान चलाया, लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। 15-16 में 6 महीने से 6 साल के बच्चों में 58.6% खून की कमी होती थी, आज 67.1% है। गर्भवती महिलाओं में 50.4% महिलाएं खून की कमी होती थी, आज 52.2% है। किशोर बच्चों में 29.2% किशोर बच्चों में खून की कमी होती थी, आज 31.1%
बच्चे खून की कमी के बैठ कर ना शिकार हैं। बात करें झा साहब प्लीज। किशोर बालिकाओं में 54.1% खून की कमी होती थी, आज 59.1% खून बच्चों में खून की कमी है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और कश्मीर, जहां ये कमी बहुत अधिक मात्रा में है, शायद दुनिया में सर्वाधिक खून की कमी है। मैं केरल का उदाहरण दूंगा। शुरुआती दौर में इन्होंने खून की कमी में बहुत अच्छा नियंत्रण किया था, लेकिन एक सच्चाई यह है कि उपसभापति महोदय, पिछले 5 सालों में केरल में भी खून की कमी 35% से बढ़कर के 39% हो गई। शैशव काल में 14% से बढ़कर के 27% हो गई और गर्भवती महिलाओं में 22% से बढ़कर के 31% हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह विषय मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के सारे प्रयासों के बावजूद आज भी खून की कमी बढ़ती जा रही। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, प्रशंसा करूंगा। इमरजेंसी ने बहुत सारे काले इतिहास रचे हैं, एक अनजाने में अच्छा काम हुआ। शिक्षा को राज्य सरकार के विषय से हटा करके समवर्ती सूची में लाने का काम किया गया। मैं इस सदन से आग्रह करूंगा, इस सरकार से आग्रह करूंगा, स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन आवर, ऑनरेबल क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 91, श्री A.D. Singh. Should I ask this? Honorable Minister. Question number 92. Acha, oh, I didn't see you. I'm so sorry. A.D. Singh, I'm so sorry. I didn't see you. Supplementary number 1. Shri A.D. Singh. We all know that opening of Indian ports to international cruise lines requires a lot of infrastructure, upgradation and logistic support. You have to develop state-of-art terminal with hassle-free, quick and timely immigration. How many ports are being upgraded to international terminals, and what is the status of the infrastructure development, including the road and rail connectivity? Honorable Minister. माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था और उनका कहना था कि एक भी इंटरनेशनल कॉल हमारे हिंदुस्तान में, भारत में आया नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2022-23 में 60 पोर्ट कॉल आए थे और 2023 में अब तक 29 पोर्ट कॉल और वेसल आए हुए थे। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हमने अभी 7 मेजर पोर्ट जो हमारे हैं वहाँ रिन्यूवेशन और नए पोर्ट बनाने की, उसको रिनोवेट करके अच्छी सुविधा देने के लिए हमारे 7 पोर्ट के लिए हमने काम शुरू किया हुआ है और कम से कम 5 पोर्ट का काम कंप्लीट हुआ है और बाकी 2 का काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री A.D. Singh. The government has just launched India's first international cruise vessel MV Empress to Sri Lanka. What is the response of the tourists to this cruise vessel, particularly the foreign tourists? What are the future plans for Indian international cruise lines? Since you are opening up Indian shores to foreign international cruise lines, you will be in direct competition with them. How much are we prepared to compete with these lines? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, हमारी मिनिस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत इस क्षेत्र में आगे जा रही है। आपने सुना था गंगा विलास, उन्होंने जो पहली जर्नी शुरू की थी, वॉयज शुरू की थी, वो 30 सितंबर 2023 में और अच्छी कम से कम पूरा 1 महीने के ज्यादा भी वो टूर अच्छी तरह चली और कम से कम अभी 4 साल का बुकिंग उसमें आया हुआ है। ये इसी तरह के क्रूज और बनाने का काम हमारी मिनिस्ट्री अभी आगे बढ़ा रही है और जैसा मैंने कहा कि सभी पोर्ट में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर
जो सभी एक ही जगह सब सुविधा उन्हें मिले, इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम हमारे मेजर पोर्ट में करते हैं। और आपने तो सुना होगा स्पीकर महोदय कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, हमें हमारे जो 7,500 जो किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी की पूरी हम इस सागरमाला के अंदर डेवलप करने की सोच रहे हैं और काम भी शुरू है। उसमें 8 से 2 प्रोजेक्ट हमने लिए थे और कम से कम 200 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। उसमें से जो सदस्य ने जो पूछा, तो उसी मुताबिक जो पुराने हमारे जो पोर्ट्स, छोटे छोटे पोर्ट्स थे, या जहां जहां नए चाहिए वहां नए बनवाएंगे और उसको पोर्ट, रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी दे देंगे, ताकि सी ट्रांसपोर्ट जो है अच्छी तरह से चलेगा, पोल्यूशन कम होगा और क्रूज टूरिज्म उसमें बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री GVL नरसिम्हा राव। Thank you, Chairman, sir. Sir, about 3 months ago, a Visakhapatnam cruise terminal, international cruise terminal, was inaugurated by Honorable Minister and Minister of State. I'd like to thank the Ministry and Honorable Prime Minister for such a great facility to Visakhapatnam. Sir, my question is, so far, no domestic or international cruise operations have started. So I'd like to know, when would these services begin? Second, why would, as part of that question, what is the role of the state and central governments in introducing these cruise operations from Visakhapatnam? Because the pilot operations have had a huge response. I'd like to know, when would proper operations begin? Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूं। ये भी उस कार्यक्रम में थे। हमने जो विशाखापट्टनम में जो पूर्व शुरू किया हुआ है, और हमारा प्रयास है कि हर तरह से हम बाहर देशों में सेमिनार लेते हैं, उन्हें सहभाग लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं, ताकि इस क्रूज टूरिज्म का प्रसार सभी जगह हो और इंडिया में ज्यादा वेसल आए, क्रूज वेसल आए। और जिस तरह से उन्होंने पूछा कि स्टेट का पोर्ट तो उन्हीं के स्टेट में है, जब भी वो मांगेंगे वो भी यूज करने के लिए हम निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो टूरिज्म बढ़ना है, उसके साथ साथ हमारा क्रूज टूरिज्म भी बढ़ाने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सी का टूरिज्म, ये इंटरनेशनल शिप हो या नदी में जो पर्यटन है, वहां भी हमारी कोशिश है। हमारी वाटरवेज है, इंडियन वाटरवेज है, उसमें भी सब जगह हम ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री KC वेणुगोपाल। Yes. Sir, thank you very much for giving me an opportunity. Sir, tourism is one of the most employment generating sector in our country. Of course, cruise tourism is one among the major area of development. Cochin is one of the best place, sought after destination for all of us for this cruise industry. My point is that there are so many stakeholders in this area. One is, of course, shipping ministry. Another is tourism ministry. Definitely external affairs ministry will also have a role in this thing, and the state government also have the role. But there's lack of coordination because of the lack of coordination among these ministries. Now, which type of enhancement we needed in this area is not happening. Or whether the ministry is planning to have a better coordination on all these ministries to enhance the potentiality of this cruise tourism. Sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इसलिए जो पोर्ट का हम रिनोवेशन कर रहे हैं, उसको जो क्रूज टूरिज्म की फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें ये भी सब है। सभी जो कस्टम होगा, बाकी सब जो मिनिस्ट्री इसको लगती है, तो वहाँ उसी एक ही जगह पर उनका सब क्लियरेंस हो, इमिग्रेशन हो, सभी इसी से हो जाएगा। और इसी तरह के मैंने बोला कि 7 पोर्ट हमने पहली बार लिए है, और आगे बाकी बचे हुए भी जहाँ जहाँ क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ जब साइट मिलेगा वही भी हम आगे करेंगे। और इसलिए ये सब फैसिलिटी इसी एरिया में हमने की हुई है, और निश्चित तौर से विद इन शॉर्ट टाइम में सभी प्रोसेस जो है उनके लिए जो टूरिस्ट के लिए लगता है, वो प्रोसेस वहाँ पूरा हो जाएगा। Fifth supplementary, Shri P. Wilson. Sir, Chennai is one of the metropolitan city, and we have a major port, Chennai Port Trust, as well as we have another port in
Tuticorin. Sir, is there any idea of developing this cruise tourism in Chennai as well as in Tuticorin? And other minor ports are also there. One, if you come into Chennai by flight, you can see the beauty of Chennai while flying the sea side. So why don't you have this cruise tourism? Thank you, Chairman. Honorable Minister. Respected Chairman, Chair. Honorable member has pointed out about the Chennai port cruise tourism facilities. For your information, Chair, we have already started our international cruise liners to operate. This is Cordelia. About few months back, I went and I did by flag off under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his vision, ultimately helping all the ministry to take up exemplary initiative, and not only initiative but also achieve the target. So that is the power of his personality and vision. So because of his transformative, holistic transformative policies in the country, now the development has grown up and every citizen is getting the benefit of it. To draw the attention of the international cruise liners, as honorable members of this house, they all understand, they have seen the world and they did the experience of moving in the beautiful cruise. There are three categories: ocean cruise, coastal cruise, and river cruise. And to draw the attention of the international cruise liner, first condition is to create an ecosystem for the promotion of cruise tourism. In this regard, all the relevant ministry joining hands to each other on the principle of PM Gati Shakti National Master Plan, multimodal connectivity. That is why, through the integrated approach, we have been creating the adequate and very, very globally competent infrastructure as a result, and also creating the policy, friendly policy, so that international cruise liner feel at home in our Indian coastal lines. So that's the way. 2022, we had a incredible India International Cruise Conference at Mumbai. There, we have invited all the globally leading cruise liners, and they have participated, and we had detailed interactive session. And when you wanted to know why you are not coming to India, why not utilizing the Indian coastal cruise, river cruise, then their open statement was like this, that you will have to create the ecosystem. You'll have to create the policy of that kind so that we can operate the coastal waters effectively for the coastal tourism. So that's the way they have put up their view. Accordingly, we have relaxed in many sectors so that they could very, very easily operate. That's the reason why now leading global players are coming forward. MSC, Royal Caribbean, and Cordelia, Costa Serena, many more. And because of the Honorable Prime Minister's visionary leadership and because of his untiring effort, for your information, in the last 10 years, what is the growth? International cruise calls. Please don't mind. I want to just figure out about the fact of happenings on the ground. 2004 to 2014, the total number of international cruise call was 311. And number of passengers was 222,000. During the last 10 years, you just give attention. The international call, it went from 311 to
682 and recorded the passengers number of 8,72,496. That is the growth, massive growth. That's the reason why now India has become the global destination for the river cruise, coastal cruise, and ocean cruise. For your information, in the sector of river, when Honorable Prime Ministers flag up this MB Ganga Vilas voice from Banaras to Dibrugarh, 3,200 kilometers, covering the 27 river system. And that time, when immediately after the flag off the event, many more questions raised by some of the learned friends. But later on, it is proof that it was a seamless journey. बीच में कोई रुकावट थे नहीं. लोगों का कहना था, कई लोगों ने ऐसा सवाल की थी, टिप्पणी दी थी कि नदी में पानी नहीं है, कहीं जहाज फंस जाएगा. लेकिन ये साबित हुई 50 दिन के सफर में कोई रुकावट थे नहीं और 31 स्विस सिटीजन को बड़े कंफर्टेबल ढंग से बनारस से डिब्रूगढ़ तक ले गया गया थ्रू बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड. That was the longest river course in the world. Recorded history. That's the reason why the European and American now putting their concentration towards India to enjoy the river cruise. That is the reason I think MB Ganga Vilas, the owner, he informed me, Sanwal ji, ये तो 26 तक बुकिंग हो गए, सब यूरोपियन और अमेरिकन ने बुक कर लिया. यानी कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहे कि हिंदुस्तान को डिस्कवर करिए और रिवर क्रूज का मजा लीजिए, उसी हिसाब से respected chairman sir, if you allow me to, I'll continue. So मजा लीजिए. और 31 स्विस सिटीजन ने जब ये उनकी वॉइस कंप्लीट हुई, बाद में जो बयान दी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कही कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, इट्स a beautiful nation in the world. So that's the experience they have gathered by putting their effort in the river cruise. That's the power of our leader personality and vision. Honorable Minister. Honorable Minister, I suggest a good question was raised by Mr. K.C. Venugopal. Your response is there. Now arrange a cruise trip of members of Parliament so that what you impactfully traversed here, they notice. And I am sure the honorable members would also want their chairman to be with them. Question number 92, Srimati Sulata Dev. Honorable Minister. Question number 92. सर सभा पटल पर रख दिया है. Supplementary number 1, Srimati Sulata Dev. Thank you, Chairman, sir. Question number, supplementary number 1. The recent measure taken by government to address the rise in cases of anemic women as per recent National Family Health Survey. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा सवाल माननीय सांसद जी ने पूछा है, क्योंकि एनीमिया को लेके काफी बार हमारी चर्चा सदन में होती है, परंतु ग्राउंड पर जो हमें काम करना है उस बारे में कभी कभी हम कम पड़ जाते हैं. इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ. सरकार ने 2018 को एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत की है, जिसके तहत अलग अलग स्ट्रेटेजिक मोड पे एज ग्रुप वाइज 6 ऐसे एज ग्रुप्स उसमें आइडेंटिफाई किए हैं, वो उत्तर पे सभा पटल पे रखे हैं. उसमें चिल्ड्रंस के अलग अलग एज ग्रुप है, वुमेन्स के, उसके बाद प्रेगनेंसी के, लैक्टेटिंग मदर हो, ये आधार पे अलग अलग एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनको स्क्रीनिंग करना हो. उसके बाद अगर वो एनेमिक पाई जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए सरकारी सुविधा की उपलब्धता भी की है. उसके अलावा अलग अलग 6 इंटरवेंशंस के
आधार पे ये एनीमिया मुक्त का भारत का काम चल रहा है, जिसमें हम प्रोफाइलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट हर एक राज्य के लिए उपलब्ध कराते हैं एनएचएम की बजट के माध्यम से। जो बजट स्टेट गवर्नमेंट मांगता है केंद्र सरकार के और तो वो बजट दिया जाता है, जिसमें आप आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट की उपलब्धता कराते हैं। उसके अलावा डीवर्मिंग जो कि चिल्ड्रन में हम 1 to 19 एज ग्रुप के लिए करते हैं, प्रेग्नेंट वुमन के लिए करते हैं। उसके अलावा आज अगर मैं एनीमिया के बारे में कहूँ तो एनीमिया न्यूट्रिशनल एनीमिया भी है और नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया भी है। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया के कॉजेस क्या है, क्या डेफिशिएंसी है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। और पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि बेसिकली काम किस पे करना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और नॉन न्यूट्रिशनल। नॉन न्यूट्रिशनल में जैसे सिकल सेल है, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स भी तय किए हैं, जिसके आधार पे ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज है। आज मुझे खुशी है सदन को बताने की कि प्राइमरी लेवल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि फोकस करिए, हम अभी इलनेस पे नहीं, अभी हम वेलनेस में काम करें, और जिसके माध्यम से आज लगभग भारत में 1,60,000 से भी ज्यादा हमारे आरोग्य मंदिर तैयार हुए हैं, जिसमें ये स्क्रीनिंग की, ट्रीटमेंट की उपलब्धि कराई है। और उसमें मैं कहूंगी कि हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी मदद से, डिजिटल मेथड से हम जल्द ही, अब गए तो तुरंत हम समझ पाते हैं कितना लेवल है एनीमिया का, एचबी का। उसके अलावा आईएफए फोर्टिफाइड फूड के लिए हमने अलग अलग स्कीम्स पे प्रोविजन किया है, जिसका अच्छा आज रिजल्ट भी आ रहा है। और उसके अलावा जो भी कमियां है उसके दूसरे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ के, वुमेन एंड चाइल्ड का मिनिस्ट्री को जोड़ के हो, जिसमें हम पोषण अभियान के माध्यम से, ऐसे अलग अलग योजनाओं को जोड़ के आज अवेयरनेस में काम करना हमें ज्यादा जरूरी है। मैं सदन को आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से, जवाब के माध्यम से आदरणीय चेयरमैन सर, मैं जरूर सबको एक तरह का अनुरोध करूंगी, इसके ग्रास रूट पे हमें ज्यादा अवेयरनेस पे और स्क्रीनिंग पे काम करना आवश्यक है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलता देव। Whether government has taken step to increase the percentage of intervention, which has constantly been below 25% across the country, and if so, the details of measures taken, if not, the reasons therefor. Honorable Minister. जो मैंने अभी आदरणीय चेयरमैन सर जो मैंने जवाब दिया है, उसमें आपका वही रिप्लाई डिटेल में दिया है कि आपने कौन से मेजरमेंट के आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं। जिसमें मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे हमारी आशा बहनें हैं, उनको भी स्पेशल एक इंसेंटिवाइज हम करते हैं कि अगर बच्चे को आपने पाया कि वो एनेमिक है, तो उसके लिए उसको इंसेंटिवाइज करते हैं। अंडर 5 एज ग्रुप के लिए बच्चे के लिए आईएफए का सिरप हो, टैबलेट्स बड़ों में देना हो। उसके अलावा अगर महिलाओं में कमी है एचबी की, तो उनके लिए टैबलेट, कलर कोड के टैबलेट आते हैं, उसके लिए उनको प्रमोट करें। तो आशा बहनों के लिए हम भी इंसेंटिवाइज करने का पूरा उसमें प्रोविजन है। इसके अलावा हम अभी की बात करें अगर नया इनिशिएटिव, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, वो आज गांव-गांव में पहुंच रही है। वो गांव-गांव में पहुंच के ये एश्योरेंस दे रही है कि आपके लिए जो भी सुविधा है, जो भी स्कीम्स है, उसके लिए ये गाड़ी, हम तो उसको मोदी जी की गारंटी की गाड़ी कहते हैं, लोग ही कहने लग गए हैं, तो उसमें हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, तो ये गारंटी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये काम करने के लिए हम सबको सब मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, जो आज ग्राउंड लेवल पे हमारे माध्यम से होना आवश्यक है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर संदीप पाठक। थैंक यू सर। सर, किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस उसके जनमानस के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। जिस तरीके से डायबिटीज इस देश में स्प्रेड हुआ है, आज कोई भी ऐसा परिवार या कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे प्री डायबिटिक कंडीशन या डायबिटिक कंडीशन नहीं है। अगर इसको टाइमली अरेस्ट नहीं किया गया तो ये एक पैंडेमिक का रूप ले लेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या हमारे देश में डायबिटीज से रिलेटेड डेटाबेस तैयार किया गया है और क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसको टाइमली रोकने के लिए? थैंक यू।
माननीय मंत्री जी। आदरणीय आदरणीय चेयरमैन सर, जैसे कि प्रश्न एनीमिया के आधार पे किया है, लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि डायबिटीज के लिए भी चिंता है, हाइपरटेंशन के लिए भी चिंता हो रही है। इसके लिए जैसे मैंने पहला कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रिवेंटिव में काम करो, प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दो, तो उससे हम आरोग्य मंदिरम की जो स्थापना हुई है उसके लिए आज सरकार ने डायबिटीज के स्क्रीनिंग के लिए जो कि 30 वर्ष की आयु के एज के आगे है, उनके लिए कंपलसरी एक स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। हमारी आशा बहनें भी उसको आगे लेके जा रही है। अलग अलग हमारे 12 डायग्नोस्टिक वहाँ पे कंपलसरी करवाए जा रहे हैं, और हमारा जो सर्वे है उसमें भी वो डिटेल्स आए हैं कि वो नंबर बढ़े हैं स्क्रीनिंग के लिए, ताकि लोगों को पता चले। और इसके लिए सरकार ना सिर्फ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा वो आरोग्य मंदिर जो कि प्राइमरी लेवल के हेल्थ सेंटर पे हम दे रहे हैं, और उसमें करोड़ों लोगों की हमारी स्क्रीनिंग भी हुई है। 4th सप्लीमेंट्री श्री KTS तुलसी। Thank you, sir. Sir, the question is with regard to the rise in cases of anemic women. And there are two contradictory reports. One, that it is declining, the other, that it is increasing. And the problem is that there is no reliable data which is provided to be able to see as to what is going wrong with the policy of relieving the country of anemic women. The report of the public PIB of 4th February 2020 says that the measures taken for reduction of anemic women has not yielded the desired results. It is shocking that the anemia amongst women of adolescent age has risen from 54% to 59%. Sir, your worst is supplementary. There are 21 states in which it is most common, and this research shows that this is prevalent amongst women of particular tribe. So what response you would like? The question is that the information must come in the public domain so that we know as to what the reality is. Honorable Minister. चेयरमैन साहब, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि अलग अलग डेटा अलग अलग तरह से रिपोर्ट करते हैं, उसमें एनेमिक किसको मानना। सच बात यह है कि अभी आज के दिन में हम एनेमिक का इसको मानते हैं जिसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय करा गया है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हर ह्यूमन बीइंग वाइज, फॉर एग्जांपल यूरोप में एक स्टैंडर्ड है, तो यूरोप का क्लाइमेट अलग है, यूरोप का लोगों की रहन सहन अलग है, जीवन शैली अलग है, उसका एक पैरामीटर हो सकता है। दूसरा, ब्लड कहाँ से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज तक हम सब लोगों ने देखा है कि अपनी उंगली पर एक टाकनी लगाते हैं और वहां से सैंपल लेते हैं और उसको बाद में एनालाइज करते हैं। तो कई जगह से, और बाद में आप डायरेक्ट वेन से ब्लड लो, और वेन से ब्लड लेके हम जब उसकी एनीमिक स्थिति को मापते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग रिपोर्ट आता है। आईसीएमआर ने उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करना चालू करा है कि इंडिया की दृष्टि से कई ऐसा पैरामीटर था जो दुनिया में कुछ था, इंडिया में कुछ था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग सेक्टर वाइज, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंटल वाइज थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इंडिया में परफेक्ट क्या हो सकता है उसके लिए आईसीएमआर एक डिटेल स्टडी कर रही है। और एनएफएचएस डेटा आज तक हम केवल यहाँ से ही टाचनी लगा के ही लेते थे, उसको भी वेन से ब्लड लेके इस बार सैंपल करना चालू करा है, ताकि हम हमारे देश में परफेक्ट स्थिति को समझकर उसका इलाज कर पाए। 5th सप्लीमेंट्री
श्रीमती दर्शना सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनीमिया मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार आयुर्वेद जैसी भारत की पारंपरिक औषधीय प्रणालियों के माध्यम से एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी। आदरणीय चेयरमैन सर, जैसे कहा कि एक होलिस्टिक अप्रोच को लेके ये सरकार काम करती है। जैसे मैंने कहा पहले भी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज उसमें सहभागिता देती है, और उसके साथ मैं कहूँगी कि आयुष मिनिस्ट्री भी हमारी उसमें जुड़ी है, वो चाहे स्क्रीनिंग में हो और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पे हो, और हमारे ऐसे कई सारे आयुर्वेदा के जो कुछ औषधियाँ है जो अच्छी साबित हुई है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी, तो वो भी अलग अलग आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, अलग अलग माध्यम से उसके लिए भी ट्रीटमेंट की सुविधा है। जो हमने आरोग्य मंदिरम कहा, उसमें हमारे आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट मिलती है, और उसके साथ ही हमारे एम्स ने न्यू दिल्ली में भी एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया है, जो हमारे एडवांस रिसर्च एनीमिया के लिए वो भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 श्री ईराना कडाडी। प्रश्न संख्या 93। ऑनरेबल मिनिस्टर। अब सभा पटल पर रखा दे। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे देश के किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में नैनो उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हमें घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की जरूरत है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि नैनो उर्वरक के उत्पाद की इच्छुक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सरकार उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर कोई विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने किसानों के प्रति बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देश के अंदर 2014 के बाद मोदी जी का सरकार आने के बाद देश का किसानों का पूर्ति के लिए उर्वरक का उत्पादन और सप्लाई चेन पिछले 10 साल में बहुत ही शानदार रूप से मोदी जी सरकार की रहा है, और इसी अंतर्गत नैनो यूरिया की भी संशोधन हुआ, और नैनो यूरिया किसानों के लिए, प्राकृतिक के लिए और सरकार का खजाने के लिए भी बहुत ही माना गया कि उपयुक्त है। तो माननीय सदस्य ने नैनो यूरिया के बारे में जो कहा है, अभी तक करीब 8 नया प्लांट की उत्पादन करने का परमिशन लिया गया है, और उसके साथ में करीब हर साल को 44 करोड़ बॉटल की उत्पादन की कैपेसिटी 500 ml की बॉटल की हो जाएगी, और पिछला 3 साल के अंदर 7.43 करोड़ बॉटल की खपत हुई है। और इसका अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि मोदी गारंटी जो गाड़ियां अभी जो विकसित भारत की चल रही है, उसी के अंदर ड्रोन के माध्यम से वहां की किसानों को और ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया की उपयुक्त कैसा होती है, किसानों को पूरा अवगत कराया जा रहा है चेयरमैन सर। तो और नैनो यूरिया केवल 260 रुपया की एक बॉटल है, जहां की
ग्रैनुलर यूरिया 262 कुछ किसानों को मिलती है, लेकिन सरकार उत्पादन में खर्च करने के लिए करीब 2400 रुपए तक खर्च करके करीब 2150 रुपए तक भारत सरकार ने उसको सब्सिडी देती है। तो ये ऑलरेडी इसका कम पैसे में किसानों को मिल रहा है। चेयरमैन साहब, सेकंड सप्लीमेंट्री श्री ईराना कडाडी। हमारे देश में गौशालाएं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में बहुत मददगार हो सकती है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन को बढ़ाने हेतु गौशालाओं के फार्म वेस्ट को बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा गौशालाओं के कोई सब्सिडी या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। गौशालाओं को प्रोत्साहित करना और गौशाला में गोबर का उपयोग करके उसमें से बायो फर्टिलाइजर बनाना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना और ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती में करके किसान का और लोगों को ऑर्गेनिक खाद्यान्न प्राप्त हुए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए फर्टिलाइजर सेक्टर में हमने बहुत कुछ बदल किया है। आज तक ट्रेडिशनल वे में हमने देखा है, हम केवल केमिकल्स फर्टिलाइजर में यूरिया और डीएपी, एनपीके का उपयोग करते थे और ये सालों तक चलता रहा, इंपोर्ट करते रहे और चलाता रहा। मोदी जी ने एक नया प्रयास किया, क्यों हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर ना जाए, क्यों हम फर्टिलाइजर की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम ना करें, क्यों हम देश में इंडिजिनियस फर्टिलाइजर प्लांट लगा के हमारी रिक्वायरमेंट हम ही क्यों न पूरा करें। इस दिशा में काम करते हुए एक पहल किया। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल केवल इतना ही है कि उसको प्रोत्साहित करके उसको अपॉर्चुनिटी देना है। इंडिया का एक साइंटिस्ट विदेश में था और विदेश से साइंटिस्ट यहाँ आया, मोदी जी को मिला और उन्होंने नैनो फर्टिलाइजर के बारे में मोदी जी को बताया। मोदी जी ने कहा कि आप यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये देश को आप कुछ नया नहीं दे सकते हैं। इस साइंटिस्ट ने देश में काम करना चालू करा और देश ने नैनो यूरिया का आविष्कार करा और नैनो डीएपी का आविष्कार करा। दुनिया में सबसे पहली बार इंडिजिनियस देश ने नैनो यूरिया बना लिया। 500 ml बोतल एक बैग को रिप्लेस करती है और ये बोतल को यूज करने के लिए ना आपको एक बैग लानी पड़ती है, आप वहां जाके आउटलेट पर जाके 500 ml की बोतल लेके आए, आपने आपके खेत में चले गए और उसको स्प्रे कर दिया। एक बैग आप जितना यूरिया लगाएंगे इतना एक कप बोतल स्प्रे से उसको पोषण मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है। आज देश में 9 प्लांट ऑलरेडी चालू हो चुका है और आने वाले दिनों में 2025 एंड तक 13 प्लांट चालू हो जाएंगे और 2025 एंड तक 44 करोड़ बोतल की क्षमता हिंदुस्तान में प्राप्त हो जाएगी। वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा और दुनिया में हमारे यहाँ से नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट भी होगा। वो गेम चेंजर है और इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए ड्रोन के द्वारा हम नैनो यूरिया का छिड़काव करें और उसके लिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव में किसान के सामने एक उसका प्रशिक्षण किया जाता है, डेमो किया जाता है। मैं परसों पंजाब गया था और परसों में जब पंजाब जा रहा था, रास्ते में रोड पर मैंने देखा एक किसान अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कर रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी खड़ी करो, मैं किसान के पास चला गया। मैंने किसान को पूछा कि आप किसने आपको ड्रोन से छिड़काव करने के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन पहले मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, वहां डेमो हुआ था, हम देखने गए थे और सुबह में वो फ्री होते डेमो वाला, तो मैंने उसको कहा कि मेरे खेत में आके छिड़काव कर दो। अल्टरनेट फर्टिलाइजर के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का एक्सेप्शन आज बहुत मात्रा में हो रहा है। बात है गाय के गोबर का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम कैसे करें। हमने तय किया है गोबर धन योजना के द्वारा देश में कोई प्राइवेट व्यक्ति या इंस्टीट्यूट या कोऑपरेटिव सेक्टर वो गोबर का उपयोग करके, गाय का गोबर हो या तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसका उपयोग करके गैस प्लांट लगाए तो देश को गैस भी मिलेगा, उससे स्लरी मिलेगी। स्लरी को फर्टिलाइजर बना के बेचने के लिए भी हमने
कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर पैदा करेगा तो एमडीएस स्कीम चलाई है और मार्केट डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा हम 1 किलो पर ₹1.5 सब्सिडी भी आज के दिन में हमने चालू कर दिया है, ताकि ऐसा प्लांट लगे और किसान को ऑर्गेनिक खाद मिले, बायो फर्टिलाइजर मिले, उसका उपयोग करके किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके और जनता को ऑर्गेनिक खाद्यान्न, फूड, वेजिटेबल खाने को मिले। Supplementary number 3, Sasmit Patra. Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. I'd like to thank the Minister at the outset for having an exclusive policy for the revival of the Talcher unit of FCIL in Odisha through a JVC through Talcher Fertilizers Limited, which leads to setting up of a new greenfield urea plant of 12.7 lakh metric tons that will help the state of Odisha and the nearby states. My specific question, sir, is what is the present status of the Talcher Fertilizers Limited revival process? Because it is a specific gas classification route that has been used, which is probably rare and for the first time in this country. And for that, I also commend the Honorable Minister. But what is the present status of this project? And by when can we expect Talcher Fertilizers to be Honorable Minister. देश के किसानों को यूरिया की डिमांड की पूर्ति करने के लिए 2014 से पहले करीब 6 यूरिया यूनिट देश के अंदर बंद पड़ा था। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत मोदी जी 2014 में आने के बाद 6 उसमें से 2 प्राइवेट वाले हैं और 4 भारत सरकार की है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ये हर यूनिट 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का क्षमता के साथ, यानी करीब 6 अगर क्यूमुलेटिव किया तो 72 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के मोदी जी सरकार ने निर्णय लिया था। तो इसमें अभी 5 चालू हो चुका है। तालचर अभी करीब 50% वहां पर काम की प्रगति में है और आने वाला सितंबर 2024 को उसको लक्ष्य रखा गया कि तालचर जो गैसिफायर की है उसको चालू हो। तो ये मोदी सरकार आने के बाद इतना बड़ा पैमाने पर यूरिया का प्रोडक्शन का लेने का जिम्मेदारी उठा करके किया है। इसी के साथ माननीय चेयरमैन सर, नेशनल यूरिया पॉलिसी 2015 के तहत जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनका कैपेसिटी से भी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोदी सरकार ने उसको बढ़ावा दिया और ये एनयूपी के तहत करीब 20 से 25 लाख मेट्रिक टन की उत्पादन बढ़ी है। यानी आने वाले दिनों में जितना मात्रा में किसानों को चाहिए इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब धन्यवाद। 4th supplementary, Sri Syed Nasir Hussain. Thank you for this opportunity, sir. Sir, there has been a lot of news about Atmanirbhar Bharat and lot of tall claims from the government on the China issue also. I just want to ask the minister that whether the government is still importing urea and fertilizer from China. If so, what is the value and quantity, and what are the measures that the government taking to reduce the dependency on the import from China? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, देश में कुल मिला के प्रतिवर्ष 3.25 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन है और ये हमें विरासत में 230 लाख मैट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन देके गया था। हमारी सरकार आने से, मोदी गवर्नमेंट आने से हमने हमारा जो बंद पड़ा हुआ प्लांट को फिर से चालू करने के लिए तैयारी करी। आज गोरखपुर, हमारा रामागुंडम, सिंदरी और बरौनी 4 फर्टिलाइजर प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया और उससे हमारा प्रोडक्शन आज बढ़ के 285 लाख मैट्रिक टन तक, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, 285 लाख मैट्रिक टन
टन तक हमने पहुंचा दिया। बाकी जो फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम टेंडर करते हैं। टेंडर करने में टेंडर के हिसाब से टेंडर्स या तो मैन्युफैक्चरर्स उसके प्राइस कोट करता है। चाइना से भी आता है, चाइना कोई चिंता नहीं भाई। आपने जो परंपरा चालू करी थी ना, आप हमें जो विरासत में दे के गए थे, ये विरासत को पूर्तता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत तहत पांच प्लांट का शिलान्यास और स्टार्ट हमने करा है। माननीय चेयरमैन साहब, दूसरे 3 प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भारत सरकार ने उसको प्रोत्साहित करके न्यू यूरिया पॉलिसी लाके उसका प्रोडक्शन चालू करा है। आज हम 400 लाख 350 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर में इंपोर्ट करते थे, आज 200 लाख मैट्रिक टन ही इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ग्लोबल टेंडर करके फर्टिलाइजर जहां से मिलता है, क्या हम हमारी जरूरियात की आवश्यकता हो टेंडर करें और एक कंट्री से हमें फर्टिलाइजर ना ले तो क्या हम किसान को फर्टिलाइजर से वंचित रखें? सर, पॉलिटिक्स करने की कोई जगह होती है, कोई हद होती है। कोई आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? देश के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? चेयरमैन सर, जिन्होंने नहीं किया है ये मोदी गवर्नमेंट कर रही है, और देश को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो भी पूर्तता करने की आवश्यकता है भारत सरकार करेगी और कर रही है। 5th supplementary, Shri Birendra Prasad Basse. For giving me opportunity. So in the interest of the farmer and in the interest to curb the foreign fertilizer, increasing domestic production of the fertilizer is the call of the hour, sir. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation, the oldest fertilizer corporation of India, are earlier in Indian economy and agricultural development of India and northeastern region especially, Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation played very important role, sir. Yes, sir. The project is very old project, sir. They have everything. There's a captive power. They have a gas connectivity from Oil India, and there's a market to Myanmar and market to Bangladesh also. Sir, it is the hour, call of the hour to revive the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation. It is the oldest fertilizer. Like other fertilizer, earlier fertilizer in the Andhra Pradesh, which was rectified by government, his government is planning to modify Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation of Assam, sir. Honorable Minister. चेयरमैन सर, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर प्लांट हमारे आसाम का एक महत्वपूर्ण प्लांट है, चल रहा है और उसका प्रोडक्शन आ रहा है। माननीय चेयरमैन सर, बदलाते समय में केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़े, उसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास हो रहा है। उसमें से ही नैनो यूरिया आया है, उसमें से नैनो डीएपी आया है। आज नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की प्राइस हमारी फर्टिलाइजर की जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है उसकी प्राइस से बहुत कम है, इसलिए हम प्रोत्साहित करते हैं। और मैं एश्योर करना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर के स्थान पर हम नैनो ये फर्टिलाइजर प्लांट ऑलरेडी चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन वहाँ हम नैनो यूरिया का भी प्लांट लगाएंगे, नैनो डीएपी का भी प्लांट लगाएंगे, ताकि ये रीजन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो और वहाँ से जैसा बताया पड़ोसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। सभापति महोदय, धन्यवाद आपको। आज क्वेश्चन जस्ट आस्क क्वेश्चन 94, उसी पर आना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज देश में एक ही गारंटी है, वो है मोदी जी की गारंटी। भारत 2027 तक दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं समझती हूँ कि यह वादा पूरा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ भी नहीं रुके हैं, उन्होंने इससे आगे बढ़कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे विशिष्ट प्रधानमंत्री जब से इस देश का नेतृत्व संभाले हैं, तब से देश के जन जन को सशक्त बनाने के लिए विश्व के सबसे बड़ी आर्थिक समावेशीकरण योजना लागू किया, जो जन धन के माध्यम से लगभग 51 करोड़ खाते खोले गए। और इतना ही नहीं, देश में जितने अनावश्यक कानून थे, जो 1500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया। बैंक से लोन लेने के मामले में सीमा के निस्तारण के लिए आईबीसी कोड का भी निस्तारण लागू किया। 20 से अधिक जो लेबर कानून थे, जो समय समय पे बिजनेस घरानों को दिक्कत करते थे, उनको भी समाप्त करके 4 श्रम कोड लाने का काम किया। एक देश एक कर के तहत जीएसटी ला करके टैक्स को सही करने का काम किया। आयकर में फेसलेस करके कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का काम किया। हमारे उपदेष्टा प्रधानमंत्री जी औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए काम शुरू किया है, इसलिए आधारभूत संरचना पर लगातार विकास का काम किया है। जैसे हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे विकास आप देख रहे हैं। पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ा करके देश को गति को देने का काम किया है। अगर लगातार पिछले 3 बजट में देखें तो 3 साल से लगातार 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख करोड़ करने का काम किया गया है। कारपोरेट टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। एफडीआई को सरलीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कई योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें आर्थिक माहौल को बदल दिया है, जैसे पीएम गति शक्ति, पीएलआई स्कीम, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में केवल अकेले हम नहीं कर सकते हैं। जब तक देश के सबका सहयोग नहीं होगा, उसको जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए आप देखें कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, भारतवासियों का सहयोग चाहिए। इसलिए नागरिक को हर मूलभूत सुविधा प्रदान करने की योजना बना करके प्रधानमंत्री जी आए, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे नल से जल हो, सड़क हो, आयुष्मान कार्ड हो, स्वनिधि का ऋण हो, चाहे मुद्रा ऋण हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना हो, स्किल डेवलपमेंट के साथ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं जो गरीबों को 81 करोड़ जो अन्न दिया जा रहा है उसको 5 साल तक आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। माननीय जीएसटी के रूप में हमारी सरकार ने एक राष्ट्रीय टैक्स की व्यवस्था दी है। इसी का परिणाम है कि आज अरुणाचल से गुजरात तक तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है। सामान के पैकेट पर भाषा चाहे जो छपी हो, टैक्स एक ही लगता है। व्यापार में कितनी सुविधा हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी टैक्स लगातार सुधार हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि कृपया वो बताएं जीएसटी सिस्टम में क्या सुधार किए गए हैं, सिस्टम और प्रभावी बने, इन पर सुधारों का क्या परिणाम निकलता है। ऑनरेबल मिनिस्टर। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि जीएसटी ने अपने अंदर 17 टैक्स और 3 सेस को समाहित करके व्यवसायों को सशक्त बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी प्रणाली के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जो कि जैसे जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन किए बगैर पात्र करदाताओं को एसएमएस आधारित नील फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटी रिटर्न 2B का निर्माण हुआ, जिसमें टैक्स पेयर को जीएसटी रिटर्न में विभिन्न स्रोतों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी ऑटो पॉपुलेट किया जा रहा है। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया में भी आधार के माध्यम से तुरंत वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान किया गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिसिस सिस्टम लागू करके, जिससे कि कर चोरी, बेमेल चालान आदि के मामलों का पता लगाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से जीएसटी सिस्टम दिन प्रतिदिन सुविधाजनक होती चली जा रही है। इसलिए सिस्टम को भी कहीं ना कहीं समय समय पर इम्प्रूव किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री राम गोपाल यादव। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान।
मेरा एक बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है। ये पर कैपिटा इनकम जो है, ये एक बहुत बड़ा गफलत पैदा करती है लोगों। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अरबों रुपया है और कुछ ऐसे जिनके पास 10 रुपए का जिनकी आमदनी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट ने आपके माध्यम से ये सर्वे करवाया है कि देश के निचले 20% लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। पति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय पूछा है, निश्चित तौर से अगर देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट आता है उसके आधार पर ही कि जो नेट जीडीपी होता है, नेट जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इसका आंकड़ा निकलता है। अगर आप देखें तो 2013 में जहां पर कैपिटा इनकम देश की 79,118 रुपए थी, वहीं पर 2022-23 में देखें तो 1,72,276 रुपए हुई है। जहां कि देखें कि 14 में प्रधानमंत्री जी के बाद 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 118% की वृद्धि हुई है। ऑनरेबल प्रोफेसर, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पॉन्ड। I have understood your question. I have understood your question. Fourth supplementary. Shri Saket Gokhale. Shri Saket Gokhale. Yes, sir. So thank you for the opportunity. Through you, I would like to ask the Honorable Minister, what is the total amount of GST dues of states, especially West Bengal and other states, that are yet to be released to them? And I would also, in addition, like to ask, states which have had their GST dues pending or withheld, what is the reason behind that? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, अगर देखें तो जीएसटी बकाया किसी भी राज्य का किसी का भी नहीं। जितना भी जीएसटी का था सारे सभी प्रदेशों को दिया जा चुका है। अभी बहुत से प्रदेशों का कहीं ना कहीं एजी रिपोर्ट आया, उसके बाद भी हमने अनंतिम भुगतान उनको कर दिया है और एजी रिपोर्ट आने के बाद फाइनल भुगतान उनका हो जाएगा। श्री राजीव शुक्ला, फिफ्थ सप्लीमेंट्री। हाँ प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स टू इंटरव्यू। धर्मल उसी में आप दे दीजिएगा। वन सेकंड, ऑनरेबल मिनिस्टर। जब सर ये जो है मेरा सवाल नहीं, ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिस्पोंडिंग not only to the last supplementary but to the earlier one also from professor. Yes, honorable minister. Sir, on the question of GST compensation, sir, it is important to understand that if the AG certificate, which the honorable MOS has explained, but I just want to put it on the table so that members are clear. If the AG certificates don't reach us, we can't clear. When the AG certificate reach us, there are some states which tell us, hold on till we tell you to clear it. I want to specifically name the states so that there are no doubts in the minds of the people here. AG certificate not received as yet for some states. For instance, Goa 2017-18, 18-19, 19-20, AG certificate has not been received, Goa. And again, Goa for 21-22 and 22-23, the quarter one. So no AG certificate has come. In fact, for 22-23, except for Karnataka, no state has given the AG certificate to us as yet. Now, West Bengal, since the honorable members from West Bengal, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 22-23, the first quarter, AG certificate has not come from West Bengal. So amount will not be released. So to call it pending, I'm sorry, it's a misnomer. Let them send the AG certificate, we'll clear it. So also, sir, there are several other states which have not submitted the AG's report. One state, again, Kerala, sent the AG certificate, but also told us to hold on till they reconcile some numbers with the AG themselves. So we are holding on. So that's not, again, pending from our side. So on this, narrative which goes around saying AG certificate,
GST compensation is all pending? No, I'm sorry. Let's be clear on that. Shri Rajiv Shukla. और देश भर में जो है इसके सरलीकरण से लोगों को, व्यापारियों को बड़ी सुविधा होगी और बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी सुविधा होगी। लेकिन इतनी शिकायतें हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इस तरह से अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। शायद भाजपा के लोग भी जानते हैं कि कितना ज्यादा व्यापारी अधिकारी इससे परेशान है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये जो उनको सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, उसके लिए आगे बजट आने वाला आपकी जो भी होगा, जो वोट ऑन अकाउंट है, जो आप कुछ सोच रही है ऐसा कि कुछ सरलीकरण इसका किया जाए? गिरफ्तारी के प्रावधान का भयानक मिसयूज है, डरा के गिरफ्तारी का उनको ही करते हैं। तो कुछ आप सोच रही कि इसका कुछ रास्ता निकाला जाए? Honorable Minister. Yeah. So let me again take this opportunity to explain. The GST Council has been approached. Ministers, the finance ministers of states who are seated as honorable members in the GST Council have all been approached by various communities, business leaders and also by traders. They have been told about the difficulties that they're facing in the ground. And the GST Council does discuss these things. And periodically, the forms have been simplified accordingly. And as regards complaints where there are misuse of, let's say, authority, where some local officer is exceeding his brief, action has been taken by the council. And I would welcome not just Honorable Member Rajiv Shukla, but any member who thinks there are difficulties faced at the ground, particularly if officers are exceeding their brief. I'm quite happy to receive it and take action on it. The House will meet at 2 p.m. today. Be done, but it is quite all MPs from Kerala. We are making a demand that what is the role of the union government? That is, chairman is asking. I know it very well. So my suggestion is we are seeking the intervention of union government by giving support and aid by means of the National Disaster Management Authority has to give support and aid to the state of Kerala so as to make the situation in a good condition. Otherwise, it will be becoming a big casualty. It's a very serious issue that used to be responded by the government. Sir, we are seeking a response from the government. Well remember, I had met you at Sabarimala on the Makar Sankranti day some years ago. Yes. Now, Mr. Anthony. Thank you, Chairman. Are you associating with? Just 1 minute. Sabarimala is in my constituency. My constituency. I know that. Yeah. I know that. That's why I called your name. You associate yourself. All the members from Kerala. Yeah, I associate with this. Please send your slip. The serious issue taken by the MC Premendran. Sir, the current situation in Sabarimala. सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने एक महत्वपूर्ण एक मिनट राम कृपाल, just one. To maintain law and order and to ensure safe passage to pilgrims, there are only 650 policemen are present for the pilgrim, whereas the Chief Minister has taken 2,500 policemen and officers for his royal chariot called Navakerala Sadas. What? ठीक है, हो गया.
माननीय सभापति महोदय, रामकृपाल जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने की इजाजत दी है। मैं बहुत ही पीड़ा के साथ आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर। मेरे संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में कल सुबह 9 से 10 के बीच में एक अनामिका नाम की बेटी जो नाबालिग थी, मात्र 17 साल की थी, दलित बेटी थी, अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। थाने के ठीक सामने क्लोज रेंज से गोली से मार दिया गया। क्या कसूर था? कमलेश पासवान की बेटी नहीं, बल्कि हम सब लोगों के देश की बेटी थी जो दलित समाज से आती थी। क्या कसूर था उसका? कैसे सुरक्षित रहेगा बिहार में आम आवाम? अब से कुछ एक महीना पहले एक दूसरी घटना की जानकारी दे रहा हूं सर। ठीक सामने, थाना के सामने, रानी तालाब विक्रम के अंतर्गत आता है सर, देवराज नाम का। सर मैं डिमांड करिए। मैं डिमांड करता हूं, देवराज यादव नाम के व्यक्ति को, जो व्यवसायी था, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा। बिहार में अराजकता की स्थिति है, हर दिन गोली गोली। यही नहीं, पुलिस भी असहाय हो गया है। पुलिस के सामने डकैती होता है, रोज हत्या होता है। पटना राजधानी में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हत्या नहीं होता है। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है सर, कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, दलित बेटी के साथ न्याय कीजिए, गिरफ्तार कीजिए तुरंत अपराधी को, स्पीडी ट्रायल कीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुभाष चंद्र बहरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा के एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे भीलवाड़ा में काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पे ESIC जो है लागू है और लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी वहाँ मासिक अंशदान करते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलाकर करीबन 5 लाख लाभार्थी जो ESIC से हैं स्वास्थ्य के लिए, वो जरूरत रहती है उनको। परंतु सबसे बड़ा दुख है कि वहाँ जो ESIC का वो राज्य सरकार द्वारा चालू है और राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जाता है और उसमें काफी रिक्त है पद, डॉक्टरों के, स्पेशलिस्टों के। बहुत बड़ा भवन है हॉस्पिटल का, बहुत बेड है, लेकिन
बराबर नहीं चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसको आदर्श हॉस्पिटल घोषित करके ईएसआईसी खुद के अंडर में लेवे और खुद संचालित करे। यह बहुत आवश्यक है ताकि वहाँ पे जो काम करने वाले श्रमिक है उनको और उनके परिवार को पूरा लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीके श्रीकंदन जी। Hello, respected sir. The farmers, especially from the district of Palakkad, which is the rice bowl of Kerala, are facing immense difficulties on account of less return for their produce as well as the backlog of amount for the paddy they given to government. The government of Kerala has failed to disburse paddy procurement price to many thousands of farmers, citing that the general share of procurement price has not yet been released to the state government. The farmers were not able to sow for the second season, and many of them at the verge of committing suicide, as the farmers were not able to repay the bank loans and other debits due to non-disbursement of money by the government. Therefore, I urge upon the government to look into it and address this issue very seriously. Thank you, sir. Thank you. विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं शून्यकाल में देश में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है और जिसका रिपोर्ट एनसीआरबी के माध्यम से सामने आया है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विनायक जी, आपका जो सब्जेक्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ छत्रपति, नहीं, मैंने उसके बाद विषय बदलने के लिए विनंती की है और मेरे सामने जो हाँ मैं दिया है, ये देखिए सर। अच्छा देखिए यहाँ से दिखाई नहीं देता बस नहीं दिया मैंने 11 बजे दिया है सर। धन्यवाद सभापति महोदय। इस अवसर पर मैं देश में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है इस महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर को इस सदन के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं और जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 जो पेश हुआ है उसके माध्यम से जिस तरह से अपराधों में बढ़ हुई है उसमें सद्भाग्य से पिछले वर्ष से इस वर्ष में ओवरऑल गुनहगारी में कमी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से महिला और बच्चों में जो जिस तरह से गुनहगारी बढ़ गई है वो भारी चिंता की बात हो चुकी है। सभापति महोदय, रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4,28,278 मामले सामने आए, क्योंकि पिछले वर्ष में उससे बहुत कम थे और इसमें 4% बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ऐसी है, महिलाओं का अपहरण, शील भंग करने के इरादे में हमला और बलात्कार इस घटना ज्यादा तौर पे हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा स्टेट जो आगे है उस स्टेट का नाम है, अधिकतर बलात्कार के मामले में दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 5 राज्यों में महिला और बालिकाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो चुके। सभापति महोदय, 2021 की तुलना में 2022 में करीबन 9% अत्याचारों में वृद्धि हो चुकी है और इनमें अधिकांश मामले अपहरण 45% से संबंधित ज्यादा है। यौन अपराध में कम से कम 39% हो चुके हैं और इसी तरह से अगर देखें तो पूरे देश में महिला और यौन का यानी पीड़ित बच्चियों इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बलात्कार करने की दुर्घटना भारी संख्या से हो रही है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के विनंती करना चाहता हूं कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की यह बढ़ती दर न केवल हमारी आबादी के लिए बड़े हिस्से की आकांक्षाओं
और कल्याण की संभावनाओं को सीमित करती है। इसीलिए मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण करें और संबंधित जो पुलिस यंत्रणा है उसे ज्यादा अलर्ट करें, ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। संतोष कुमार। आपने शून्यकाल में मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं पूर्णिया जिला जो भारत के प्राचीनतम जिले में शामिल है, लेकिन ये साथ ही उत्तर बिहार जो व्यापारिक मंडी है, व्यापारिक केंद्र है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी के मामले में यह काफी पीछे है और लगातार इस इलाके की उपेक्षा हो रही है। मैं पूर्णिया के रेल यात्रियों के आवागमन हेतु सरकार से मांग करता हूं कि 13,205 और 6 जनहित एक्सप्रेस और 14,617 और 18 जनसेवा एक्सप्रेस जो पूर्णिया कोट तक विस्तारित करने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड में लंबित है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको स्वीकृति दे और रेल परिचालन यहाँ तक जो दोनों गाड़ियां हैं वो पूर्णिया कोट तक इसका परिचालन हो सके। साथ ही मैं पूर्णिया कोट और जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और हाटे बाजारे ठहराव की मांग करता हूं। इसको लेकर कई बार जन आंदोलन उस इलाके में हो चुका है, इसलिए रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ये ट्रेनों का ठहराव हो। साथ ही जो पूर्णिया कोट हमारा रेलवे स्टेशन है, पूर्णिया कोट जंक्शन पे वॉशिंग पिट का निर्माण हो। यह प्रपोजल काफी समय से पड़ा हुआ है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो पिछड़ा इलाका है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसको आगे लाना है, लेकिन रेल के क्षेत्र में हम लोग दर्जनों बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से रेल मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं, सदन के माध्यम से भी आग्रह किए हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशनल इलाका है उस पर रेल के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है। खास करके जो उत्तर बिहार का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, अररिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, ये रेल के मामले में महरूम है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस इलाके पे रेल के मानचित्र पे इसको आगे लाया जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you, sir. Sir, Odisha farmers have been hit by non-payment of their claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Even after several pleas from them, the insurance companies are yet to settle dues of the farmers, which is more than 600 crore. The objections raised by the insurance companies have been duly complied, yet the claims have not been settled, which has led to farmers' unrest in many places and likely to affect the enrollment process for next season. Odisha government was one of the first states to implement the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and has been continuing with the program since Kharif 2016. The insurance companies have made a hefty profit of more than 40,000 crore in the country since the implementation of the same scheme in 2015 and 16. But they are not settling the dues of the farmers. Through you, sir, I would request the government to look into the matter and issue the suitable directive by the Department of Agriculture and Farmer Welfare, the Government of India, to the insurance companies for settlement of the claims at the earliest for safeguarding the interest of the farmers. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री सुरेश। Thank you, Chairman, sir. Sir, in Kerala, the regular train service, including Wayanad Express, Parashuram Express, Malabar Express, Shabari Express, are running packed to the fullest, and the railway authorities are denying giving the state extra train service, extension of trains, extra bogies, and new bogies, and more stoppages, various trains, and the worst part is that trains that were cancelled due to the lockdown are yet to be restored, even after years past the pandemic. Sir, I would request more coaches are
provided in passenger and memo and express trains in Kerala. All railway divisions operating in the state. Further, the Nilambur-Kottayam express train to be extended to Kollam and Punalur, so that passengers who are unable to avail any train after Venad and Palarvi express departs would be able to avail train service and the train running Kollam-Shengotai section. Sir, the Kollam-Shengotai section running trains are having only 14 bogies. That is, the rush of the train, these 14 bogies not sufficient. Therefore, I demand before the railways, sir, instead of 14, 20 bogies should be provided Kollam-Shengotai line, sir. Sir, I would like to point out the Vande Bharat trains have begun. Almost all other trains are being held at various stops for giving a right to way to the express train to pass on priority. This situation is causing daily passengers who are mostly employees and traders, students lose precious time, and the railway must find a way to address this issue at the earliest. I would like to ask state government, state that the passengers trains that are lifeline or regular commuting are converted into express trains, and this scenario has also impacted the regular commuters. I request that more passengers train to be provided Kerala state and more coaches in current passengers trains to be allotted as well. The festival season already started, and also the vacation season also there. The train passengers number is increasing day by day, but the sufficient train service not available in Kerala. That's why I would like to request through you, sir, to government to address this important issue immediately. Thank you. Honorable Chairman, sir, the widening project of National Highway 66 Kerala is progressing. It is one of the largest national highway projects in Kerala state. But the people living in both sides of National Highway have many concerns as they feel divided and separated in their villages and towns by this NH66. People have been requesting for the construction of small vehicle underpass in various places to ensure connectivity and access between two sides. In my constituency, Trichur, small vehicle underpass should be constructed in Mamnalangundu Junction, in Punnayur and Punnayur-Kolam Panchayats, in Chetuva of Angandur Panchayats, in Pulambuda and Puliyamduruth of Talikolam Panchayats, in Natiga Center of Natiga Panchayat, and in Edamuttam Center of Valapad Panchayat. I had conveyed these demands of people of the Minister of Road and National Highways, Nitin Gadkari and NHAI officials. But there is no proper step taken by the ministry of solve the issue and the concerns of people. So they are agitating. I once again request to the Honorable Minister of Road, Transport and National Highways to consider this and approve this demand of people. This is an important and serious issue in my constituency, Trichur, Kerala. Thank you, sir. Shri Dileshwar Kamath. धन्यवाद सर, आपने शून्यकाल के अवसर पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आदेश दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सुपौल संसदीय क्षेत्र के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत प्रतापगंज से भीमनगर नई रेल लाइन के लिए प्रो इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण RET सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली थी और कार्य प्रगति पर था। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। महोदय, 1934 के भूकंप में उक्त खंड पर रेल लाइन ध्वस्त हो गया था, किंतु अभी तक रेस्टोरेशन नहीं हुआ है तथा रेल का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं बराबर यह मांग सरकार से करते आ रहा हूं। मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह है
कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त रेल खंड को पुनः चालू कर रेल यातायात का परिचालन शीघ्र किया जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। रमेश बिदुरी जी। धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे एक बहुत ही सामाजिक व्यवस्था के मामले को लेकर एक विषय पर बोलने का मौका दिया। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनकी दूरदृष्टि से समाज के सभी जातियों के वर्गों के, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, सभी जातियों की तरफ उनके उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन रेलवे के अंदर एक जो वरिष्ठ नागरिक की सीट्स होती है, उनके आवागमन के लिए वो आरक्षित हैं, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड हैं। आज के इस भागदौड़ में परिवार छोटे हैं और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन रेलवे में सफर करते हैं, तो कुछ लोगों को उस आरक्षित सीटें होने के कारण लिमिटेड हैं। ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, जब जाते हैं तो उनको ऊपर नीचे की बर्थ में उनकी सीट मिलती है, जिससे उनको बड़ी गंभीर समस्या को फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा है कि परिवार भी छोटे हो गए हैं, लोग भागदौड़ की जीवन में समय भी नहीं दे पाते हैं कि अपने पेरेंट्स को, बुजुर्ग को ट्रेन में छोड़ के चले गए और उस अगले स्टेशन पे लेने आ जाएगा, तो रास्ते में ट्रेन के लिए मेरा माननीय मंत्री जी रेल मंत्रालय से आपके माध्यम से निवेदन है कि सीनियर सिटीजन की जो बर्थ है उसको कंपलसरी ग्राउंड लेवल पर, निजी लेवल पर करने का माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें, जिससे ऐसे सीनियर सिटीजन को आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोअर बर्थ, नीचे नहीं, लोअर बर्थ। शिरोमणि राम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जी, राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जनपद बलरामपुर अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि चंदनपुर, पचपड़वा, भारत नेपाल सीमा से पचपड़वा, गणेशपुर, जैतापुर, उतरौला, मनकापुर, नवाबगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व संगम नगरी प्रयागराज तक मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH में सम्मिलित स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए एवं देश की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल जो चंदनपुर भारत नेपाल सीमा पर आने जाने के लिए एवं धर्मनगरी, रामनगरी, अयोध्या एवं संगम नगरी प्रयागराज को जाने के लिए यह एकमात्र सड़क है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष मांग करता हूं, इस मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH के अंतर्गत निर्माण कार्य कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राघवन जी। Chairman, sir, I would like to rise before you to bring about some burning issues being faced by railways in north part of Kerala. Sir, Shornur-Mangalore segment of Palakkad division of Southern Railways faces brutal disparity in comparison with the rest of the division of Southern Railways. Sir, Bangalore is the nearest metropolitan city to North Kerala, nearer than that of its own state capital, Trivandrum. Sir, however, when South Kerala under Trivandrum division has 11 trains to Bangalore, North Kerala under Palakkad division has just 2 trains to Bangalore. Sir, train number 16511 and 16512, which commutes between Bangalore and Kannur via Mangalore, is kept idle at Kannur for 6 hours, sir. If it is extended to Kozhikode as demanded many times by utilizing the idle time, so we will get 1 train to Bangalore with elevation of rush in evening trains to the north. Sir, besides introduction of a new train, Vande Bharat, in between Bangalore and Calicut via Palakkad is a must for this part of the country, as waiting list in all classes goes for weeks. So secondly, urgent measures be taken, introduce more memos to North Kerala to reduce
brutal rush in office school-going hours. Sir, here also, South Kerala has 13 memos, sir, while North Kerala has just one. So I would like to request Honorable Minister, please consider these suggestions and sort out these issues. Thank you, sir. Thank you. Shri Pradyut Bardoloi. But sir, I would like to draw the attention of the Government of India of the alarming rise of the cancer patients in our country. Sir, as per the figure of National Cancer Registry Program, in 2018, the figure was 13,25,232. The figure has risen in 2022 to 14,61,427. Sir, but this figure is not exhaustive. And we also know the incidence of cancer is not uniform in all over the country. In certain parts of the country, the incidence of cancer is more than other parts of the country. Sir, unfortunately, the northeastern region has become the cancer capital of India. So you'd be surprised to know that in 2018, the Cancer Registry of India warned of the Northeast becoming India's cancer capital of India. By 2023, the situation worsened, with Manipur experiencing a 6.48% cancer diagnosis, far above national average of 2.45%. According to the National Cancer Registry Program, through the varying degrees of escalation, the incidence of cancer is prevalent all over the Northeast. And not only the cancer patients, so the sufferings of the common people as we have it. So I would like to draw your attention and would also like to request the Government of India to take up very specific programs. It is high time for the central government to acknowledge the gravity of the situation and take concrete steps to address this emerging crisis. Suggestions to the government are given, including the Cancer Society of India. These suggestions should be very, very sincerely implemented, sir. Number one, HPV vaccination to be included in the national immunization program for both boys and girls in the age group of 9 to 14 and should be given at free of cost. Number two, cancer to be made notifiable disease so that we have more accurate data for research and policy making, etc. Number three, sir, the central government should also support the education and placement of more medical specialists in the northeastern states with an emphasis on early cancer identification and basic care. Number, sir, make policy for tobacco-free India by 2033, more strict rules for banning tobacco products near schools inaccessible to school children. Dedicated 24/7 national helpline for all cancer-related queries. Research for the Indian ethnicity to provide affordable care. Control of phenomenal prices of cancer drugs. And sir, as Northeast is becoming the cancer capital of India, the Government of India, the Health Ministry should pay special emphasis to bring up the cancer treatment to the affordable level to all over the northeastern states. Thank you, sir. धन्यवाद. राजन विचारे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, भारत में 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी. थाने रेलवे स्टेशन एक ऐसा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के रूप में माना जाता है. इस स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 2014 से जनता के प्रतिनिधि के तौर पर कई बार संसद में आवाज उठाते आ रहा हूँ, जिसके बाद इस योजना में अड़चन लाने वाले जर्जर इमारत को रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिया. यहाँ स्थित स्टेशन मास्टर के कार्यालय अन्य कार्यालय स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन ठाणे स्टेशन पर यात्रियों का पर्याप्त प्लेटफॉर्म
और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस संज्ञान में लेते हुए रेलवे ने लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के साथ दादर, ठाणे, कल्याण और ठाकुरली इन 5 स्टेशनों के विकास के लिए कुल 3,600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया है, जिसमें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के लिए 2,500 करोड़ और थाने रेलवे स्टेशन के लिए 983 करोड़ रुपए की स्वीकृति का समावेश है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक ये ठाणे रेलवे स्टेशन की पहल के लिए मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ, लेकिन मेरे साथ रेलवे अधिकारियों के बैठक में रेल अधिकारियों ने कहा था कि ठाणे रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित करने जनवरी 2024 में प्रत्यक्ष रूप से कामों की शुरुआत की जाएगी, लेकिन अब तक इस संबंध में गति मिलना नजर नहीं आ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस ठाणे रेलवे स्टेशन में हर दिन 7.5 से 8 लाख यात्रियों की भीड़ रहती है और इस यात्रियों के बढ़ते भार के कारण अपर्याप्त पैदल यात्री पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई अन्य सुविधा उपलब्ध करने के लिए जल्द से जल्द ठाणे रेलवे स्टेशन की भूमि पर एक मल्टी मॉडल हब स्टेशन परिवर्तित करके रेलवे की जगह पर पीपीपी पद्धति द्वारा बनाने वाले 3 कमर्शियल टावरों में कॉलोनी मकान और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। राजीव रंजन सिंह। अल्कोहल महोदय, कोरोना काल के दौरान पूरे देश में रेल सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद जब रेल सेवा बहाल हुई तो रेल सेवा बहाल होने के बाद कोरोना काल के पहले जितने ठहराव महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का था उन सभी को समाप्त कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन हॉल्ट जहां पैसेंजर गाड़ी रुकती थी, ईएमयू ट्रेन रुकती थी, उन सब को भी बंद कर दिया गया और जो मेरी जानकारी है लगभग 10,000 ठहराव ट्रेनों का एक आदेश से रद्द कर दिया गया, जो उचित नहीं था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, बढ़िया, बाढ़, अथमल गोला, इन सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव थे उसको बंद कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट, इसमें ईएमयू ट्रेन पैसेंजर ट्रेनें रुकती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके विरोध में वहां स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हो रहा है, लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे लाइन पर धरना दे रहे हैं। 3-3 दिन तक मेन लाइन की पूरी रेल सेवा ठप रही, उसका रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये सारी परिस्थिति जो है आम लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। जो सुदूर हॉल्ट में या पैसेंजर ट्रेनों से आते हैं वो गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, जिनके आवागमन का कोई और दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि बढ़िया में, बाढ़ में, अथमल गोला में जो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल के पहले था, या जो छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट में जो ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव था, उसको पुनः बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। 1 दर्जन से ज्यादा पत्र मैंने रेल मंत्रालय को और रेल मंत्री जी को लिखा है, आज तक एक भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि बढ़िया, बाढ़ और अथमल गोला के सभी ट्रेनों का और जो छोटे हॉल्ट और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को पुनः बहाल किया जाए, यह मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी। Sir, I would like to flag the attention of the House that we all have witnessed with bated breath the rescue operation on NH 134 and the Silkiara Bend Barket Tunnel. Sir,
41 workers were trapped for 17 days in the tunnel. So the horrible episode still has been haunting us. But sir, what I would like to highlight before you, that it is not an isolated incident. I would like to refer that recent incidents of collapse in Himalayas also taken place. Number 1, Subansiri Lower Hydroelectric Power Project. 2, Tista River flash flood. 3, Kiratpur Nedchok Tunnel collapse in Himachal Pradesh 2015. 4, Tehri Hydro Project Tunnel collapse 2004. Sir, the reasons that have been cited by the experts are also, I feel, to be included over here. First, fractured or fragile rock. 2, water seepage. 3, landslide prone Himalayan rock system. 4, lack of geological and geotechnical studies. 5, improper study of CR zone. 6, failure to design on escape tunnel. Sir, in the last moment, sir, rat hole miners, they have been engaged to rescue those ill-fated laborers who were trapped. Sir, what I feel that this kind of situation which took place in the Uttarkasi could have been averted, provided the government took a little patience to those geologists who have earlier red flagged that this kind of tunnel could be disastrous. But sir, also the government still not responding to such incident. Even there is an ambiguity, there is a contradiction between the statement of the media and the statement made by concerned minister. There was the escape route, it was stated by the expert, but minister stating that yes, there was an escape route. I want to clarify the issue from the government side. Thank you. Sumalata Ambarish ji. 1 minute. Thank you, sir. Sir, according to the Global Climate Report You were published by the disturbing your UN leader also. this year, Don't do 2023 has been the hottest ever year on record. And the impact of this has been felt in all corners of the world. Sir, my state of Karnataka has received a very weak monsoon, and 223 out of 236 taluks have been affected by the drought, resulting in an estimated loss of about 30,000 crores. Sir, my constituency of Mandya is amongst the worst affected, where all the taluks have been declared drought hit and farmers are in extreme distress. Sir, about 50 to 75% of the standing crop has been lost. My farmers are primarily sugarcane growers and hence do not receive the insurance benefits available under the PM Fasal Bima Yojana also. And furthermore, we are facing crisis in several areas without water to drink, wash or cook. Sir, at this critical juncture, we look to the government of India and my heartfelt appeal to the Honorable Prime Minister of India to come to the aid of our farmers and provide a suitable financial package to help them out of this situation. And also, we want your concurrence for better utilization of waters from our rivers to Thank you. support the basic needs of our farmers and Thank my you. state. Thank you, sir. Thank you. Before I call Mr. Premchandran, I would like to make an announcement. The Bharatiya Nyay Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and Bharatiya Sakshya Bill 2023 these three bills have been uploaded. Now, Mr. Premchandran. Thank you very much, Mr. Chairman. Sir, I would like to draw the attention of the Union government regarding a very serious situation which is prevailing. One of the most important pilgrimage in India, that is Sabarimala in the state of Kerala. So the hardships and sufferings of the pilgrim in Sabarimala is too much because lakhs and lakhs of people are coming to Sabarimala for darshan during the Magara Vilak and Mandala Vilak season.
Now this is the Mandalavilak season. Lakhs of people are there. See, the quite unfortunate thing to be noted is that the state police as well as the Devasam authorities has not made proper arrangements and facilities for having a better darshan to Sabarimala. Because of the lack of proper facilities and arrangements, people are suffering like anything. See, these pilgrims have to stand in the queue for 18 to 20 hours. Sir, 18 to 20 hours, they have to stand in the queue and to have the darshan, and one girl pilgrim has died in the queue. That has also happened. So far, no facilities, arrangement, nothing is being done. Normal case, so many meetings by the Chief Minister will be done, but it is quite unfortunate to note that the situation is very, very serious. So what the demand, which we all MPs from Kerala, we are making a demand that what is the role of the union government? That is, chairman is asking. I know it very well. So my suggestion is we are seeking the intervention of union government by giving support and aid by means of the National Disaster Management Authority has to give support and aid to the state of Kerala so as to make the situation in a good condition. Otherwise, it will be becoming a big casualty. It's a very serious issue that used to be responded by the government. Sir, we are seeking a response from the government. Well remember, I had met you at Sabarimala on the Makar Sankranti day some years ago. Yes. Now, Mr. Anthony. Thank you, Chairman. Are you associating with? Just 1 minute. Sabarimala is in my constituency. I know that. Yeah. I know that. That's why I called your name. You associate yourself. All the members from Kerala. Yeah, I associate with this. Please send your slip. The serious issue taken by the MP Premendran. Sir, the current situation in Sabarimala. सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने एक महत्वपूर्ण एक मिनट राम कृपाल, just one. To maintain law and order and to ensure safe passage to pilgrims, there are only 650 policemen are present for the pilgrim, whereas the Chief Minister has taken 2,500 policemen and officers for his royal chariot called Navakerala Sadas. What? ठीक है, हो गया. माननीय सभापति महोदय, राम कृपाल जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने की इजाजत दी है. मैं बहुत ही पीड़ा के साथ आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर. मेरे संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में कल सुबह 9 से 10 के बीच में एक अनामिका नाम की बेटी जो नाबालिग थी, मात्र 17 साल की थी, दलित बेटी थी, अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी. थाने के ठीक सामने क्लोज रेंज से गोली से मार दिया गया. क्या कसूर था? कमलेश पासवान की बेटी नहीं, बल्कि हम सब लोगों के देश की बेटी थी जो दलित समाज से आती थी. क्या कसूर था उसका? कैसे सुरक्षित रहेगा बिहार में आम आवाम? अब से कुछ एक महीना पहले दूसरी घटना की जानकारी दे रहा हूं सर. ठीक सामने, थाना के सामने, रानी तालाब विक्रम के अंतर्गत आता है सर, देवराज नाम का. सर मैं डिमांड करिए. मैं डिमांड करता हूं. देवराज यादव नाम के व्यक्ति को, जो व्यवसायी था, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा. बिहार में अराजकता की स्थिति है. हर दिन गोली गोली. यही नहीं, पुलिस भी असहाय हो गया है. पुलिस के सामने डकैती होता है, रोज हत्या होता है. पटना राजधानी में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हत्या नहीं होता है. पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है सर. कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, दलित बेटी के साथ न्याय कीजिए, गिरफ्तार कीजिए तुरंत अपराधी को, स्पीडी ट्रायल कीजिए. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
the special session of Parliament commenced with a very important message from Chairman of Rajya Sabha. Honorable members, use of wit, humor, sarcasm, and even acerbic comments inside Parliament are important, inalienable facet of a vigorous democracy. These days, we don't get to hear such light-hearted exchanges. Hopefully, we'll see the revival of wit, humor, and scholarly debates. Lighter moments were witnessed during the special session as Chairman sought to use laughter as the best medicine in the House. If you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second. Leader of the question. Honorable leader of the question. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूंगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है. आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है. वो बात मैंने बातों के लिए कही थी. मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा. मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे. ये उम्मीद से मैं आया था. यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है. It is 261st session, special session. Then came the much-awaited historic move of shifting the entire parliamentary system from Samvidhan Sadan to the Parliament House of India. माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं. Parliament House of India. This iconic building is a cradle of empowerment, igniting dreams and nurturing them into reality. The treasured and iconic legislative debates in this temple of democracy are replete with wit and humor. Humor is an enlivening force capable of
जनहित एक्सप्रेस और 14,617 और 18 जनसेवा एक्सप्रेस जो पूर्णिया कोर्ट तक विस्तारित करने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड में लंबित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको स्वीकृति दे और रेल परिचालन यहां तक जो दोनों गाड़ियां हैं वो पूर्णिया कोर्ट तक इसका परिचालन हो सके। साथ ही मैं पूर्णिया कोर्ट और जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और हाटे बाजारे ठहराव की मांग करता हूं। इसको लेकर कई बार जन आंदोलन उस इलाके में हो चुका है, इसलिए रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ये ट्रेनों का ठहराव हो। साथ ही जो पूर्णिया कोर्ट हमारा रेलवे स्टेशन है, पूर्णिया कोर्ट जंक्शन पे वॉशिंग पिट का निर्माण हो। यह प्रपोजल काफी समय से पड़ा हुआ है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो पिछड़ा इलाका है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसको आगे लाना है, लेकिन रेल के क्षेत्र में हम लोग दर्जनों बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से रेल मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं, सदन के माध्यम से भी आग्रह किए हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशनल इलाका है उस पर रेल के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है। खास करके जो उत्तर बिहार का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, अररिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, ये रेल के मामले में महरूम है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस इलाके पे रेल के मानचित्र पे इसको आगे लाया जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you, sir. Sir, Odisha farmers have been hit by non-payment of their claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Even after several pleas from them, the insurance companies are yet to settle dues of the farmers, which is more than 600 crore. The objections raised by the insurance companies have been duly complied, yet the claims have not been settled, which has led to farmers' unrest in many places and likely to affect the enrollment process for next season. Odisha government was one of the first states to implement the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and has been continuing with the program since Kharif 2016. The insurance companies have made a hefty profit of more than 40,000 crore in the country since the implementation of the same scheme in 2015 and 16. But they are not settling the dues of the farmers. Through you, sir, I would request the government to look into the matter and issue the suitable directive by the Department of Agriculture and Farmer Welfare, the Government of India, to the insurance companies for settlement of the claims at the earliest for safeguarding the interest of the farmers. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री सुरेश। Thank you, Chairman, sir. Sir, in Kerala, the regular train service, including Wayanad Express, Parashuram Express, Malabar Express, Shabari Express, are running packed to the fullest, and the railway authorities are denying giving the state extra train service, extension of trains, extra bogies, and new bogies, and more stoppages, various trains, and the worst part is that trains that were cancelled due to the lockdown are yet to be restored, even after years past the pandemic. Sir, I would request I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee, in its meeting held today on the 12th of December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the following bills. After these are introduced, considered and passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyay Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023,
the Bharatiya Sakshya Second Bill 2023. All these three will be taken together, and allocation of time is 15 hours. The Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Bill 2023, 2 hours. The Government of Union Territories Amendment Bill 2023, 2 hours. The National Capital Territory of Delhi Laws, Special Provisions Second Amendment Bill 2023, 3 hours. Shri Arjun Ram Meghwal to move a motion for consideration of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service, and term of office bill 2023. Honorable Chairman, sir, I move that the bill to regulate the appointment, condition of service, and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners
ऑब्जर्वेशन थे, 3-4 ऑब्जर्वेशन थे और 3242 के तहत हमने ये बिल लेकर के आए हैं। इसमें एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी है, क्योंकि अब तक तो जो प्रक्रिया थी सरकार तय करती थी नाम और हो जाते थे। अब सर्च कमेटी भी इसकी बनी है, सिलेक्शन कमेटी भी बनी है, इसमें सैलरी का विषय भी आया है, इसमें प्रोटेक्शन भी है। जो अभी हम ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिल हमने 10 अगस्त को पेश किया था, इसमें सर्च कमेटी में भी एक क्लॉज 6 में अमेंडमेंट है, ऑफिशियल अमेंडमेंट बाद में मैं मूव करूंगा, और एक सैलरी को लेकर के भी एक अमेंडमेंट है क्लॉज 10 में, और एक कंडीशन ऑफ सर्विस इसमें क्लॉज 15 में एक अमेंडमेंट है, और फिर क्लॉज 15A हमने इंसर्ट किया है, प्रोटेक्शन से संबंधित है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपने ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे तो उनके खिलाफ ऐसे प्रकरणों में कोई कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती। ये प्रोटेक्शन से संबंधित है। ये इस तरह के इसमें प्रावधान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन इस पर चर्चा करे और उसके बाद जो सुझाव आएंगे उसके आधार में जवाब देने के लिए, जैसे आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जवाब देने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन साहब। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उनकी चर्चा वो बाद में करेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग का आधार प्रजातंत्र की शुचिता है, प्रजातंत्र की निष्पक्षता है। संविधान और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जिसको हम कहते हैं, उसका आधार ही निष्पक्ष चुनाव है, और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली एजेंसी चुनाव आयोग है। 4 शब्द जब भी आप चुनाव आयोग की बात करेंगे, निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वायत्तता और शुचिता, ये 4 शब्द एक काबिल कानूनविद के तौर पर, आप सभापति जी भी हैं पर आप एक काबिल वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी व्यक्ति के जहन में भी 140 करोड़ लोगों के देश में आएगा। ये जो कानून आज माननीय मंत्री जी और सरकार लेकर आई है, ये इन चारों शब्दों को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाला कानून है। मेरा ये विनम्र आग्रह है। और इससे पहले कि मैं बिल के प्रावधानों की चर्चा करूं, सभापति जी, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एंड अवॉइडेंस ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये इलेक्शन मशीनरी इन दोनों बातों से प्रेरित होगी। ये हमारे संविधान के संविधान निर्माताओं ने कहा। काश आदरणीय कानून मंत्री जी, मेरी और आपकी और इस देश के लोगों की नहीं, तो जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था और जो संविधान सभा में चर्चा हुई थी, अगर एक नजर उस पर डाल लेते तो शायद ये इस कानून को अभी वापस ले लेते या बनाते ही, लेकर ही नहीं आते। सभापति जी, बाबा साहब ने क्या कहा था इलेक्टोरल मशीनरी के बारे में, मैं उसके कुछ शब्द आपकी अनुमति से यहां पढ़कर बताना चाहूंगा। 15 जून 1949 को संविधान सभा के अंदर इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल मशीनरी, चुनाव आयोग, प्रजातंत्र की शुचिता और स्वायत्तता, उस पर चर्चा हुई। 2 और सदस्यों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पर बाबा साहब ने क्या कहा मैं वो पढ़कर बताना चाहूंगा। एंड आई कोट, इन ए वेरी अर्ली स्टेज इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, a committee was appointed to deal with what are called fundamental rights. This is what Baba Sahib is saying. That committee made a report that it should be recognized that the independence of the elections and the avoidance of any interference by the executive in the elections to the legislature should be regarded as a fundamental right and provided for in the chapter dealing with fundamental rights.
When the matter came up before the House, it was the wish of the House that while there was no objection to regard this matter as of fundamental importance, it should be provided for in some other part of the Constitution and not in the chapter dealing with fundamental rights. But the House affirmed, without any kind of dissent, that in the interest of purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of the utmost importance that they should be freed from any kind of interference from the executive of the day. This is what Baba Sahib said. And I quote Baba Sahib Ambedkar further, sir. Therefore, so far as the fundamental question is concerned, that the election machinery should be outside the control of the executive government, there has been no dispute. What Article 289, which today is commensurate to 324, what Article 289 does is to carry out that part of the decision of the Constituent Assembly. It transfers the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls and of all elections to Parliament and the legislatures of the states to a body outside the executive. That's what Baba Sahib says, to be called the Election Commission. And sir, not only Baba Sahib Ambedkar, he was reacting to what two other members were saying, and I like to quote two lines from what was said by two members of the Constituent Assembly. One was Professor Shibban Lal Saxena, and I quote him, sir. It is quite possible that some party in power who wants to win next elections may appoint a staunch party man as chief commissioner. Unquote. I also quote, sir, Pandit Hridaynath Kunzuru. Quote, we are going in for democracy based on adult franchise. It is necessary, therefore, that every possible step should be taken to ensure the fair working of the electoral machinery. If the electoral machinery is defective or is not efficient or is worked by people whose integrity cannot be dependent upon, the democracy will be poisoned at the source, nay people. Instead of learning from elections how they should exercise their vote, how by judicious use of their vote they can bring about changes in the constitutions and reforms in the administration, will learn only how parties based on intrigues can be formed and what unfair methods they can adopt to secure what they want. In this context, Baba Sahib said that electoral machinery has to be necessarily independent and it has to be necessarily outside the interference of the executive. These were two fundamentals that the Constituent Assembly was unanimous. Constituent Assembly was also unanimous, sir, that a fair and free election bereft of the interference of the ruling executive is a fundamental right, though not included, but the entire spirit of the Constituent Assembly was this. I asked myself, मैं इस माननीय सभापति जी खुद से भी, इस सदन से भी, और हर वो व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है उनसे पूछता हूं, और स्वयं से जब मैं सवाल पूछता हूं कि क्या वो कानून जो आप लेकर आए हैं, वो क्या बाबा साहब, संविधान सभा और संविधान सभा ने जो एक वॉइस से, एक मत से कहा था, बगैर लाग लपेट, बगैर राजनीतिक द्वेष के, क्या ये उस मापदंड पर खरे उतरता है? तो मुझे ये कहना पड़ेगा, ये उस पर औंधे मुंह गिरता है. Let me now bring your kind attention to the provisions of the bill, as also the fact that Honorable Minister said that there are just some observations of the Supreme Court. सर, अगर आप इस कानून को देखें, इस बिल को देखें जो वो लेकर आए हैं, तो उसकी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और मेरे एक माननीय साथी ने उस पर अमेंडमेंट भी दी है, क्लॉज 7 पर. अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियां कौन करेगा? माननीय मंत्री जी जो कानून का मसौदा लाए हैं उसके मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होंगे उस समिति के, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो मेंबर होंगे,
और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको भी प्रधानमंत्री जी चिन्हित करेंगे वो सदस्य होगा। यानी प्रधानमंत्री जी और एक उनके मंत्री जो उनकी मर्जी से चिन्हित किए जाएंगे, उन दो लोगों का बहुमत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर इसके बारे में क्या कहा था, मैं पहले उसकी तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 मार्च 2023 को लगभग 130 सफ़े के निर्णय में अनूप बरनवाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उसकी 8 या 9 लाइन इस सदन में पढ़कर बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा पैरा 9 में, the executive alone being involved, and I quote, the executive alone being involved in the appointment ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. Para 165. The election commissioners, including the chief election commissioner, blessed with nearly infinite powers and who are to abide by the fundamental rights, must be chosen not by the executive exclusively and particularly without any objective yardstick. So sir, दो बातें कही गई। पहला कि एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं कर सकता। दूसरा, किसी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक के बगैर यह नहीं किया जा सकता। और इसी पैराग्राफ में कोर्ट ने एक कॉशन भी किया, एन इलेक्शन कमीशन which does not ensure free and fair polls as per the rules of the game guarantees the breakdown of the foundations of the rule of law. यानी रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को खत्म कर देगा एक ऐसा चुनाव आयोग जो निष्पक्ष नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है या फिर वो एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से परे नहीं। Equally, the sterling qualities which we have described, which must be possessed by us, by an election commission, is indispensable for an unquestionable adherence to the guarantee of equality in Article 14. लगभग 230 सफ़े का ये जो जजमेंट है, उसमें दो बातें साफ हैं। Number 1, the CEC and the EC, they must be arm's length from the government. Number 2, the process has to be beyond influence or under the diktat of the executive of the day. Exactly what Baba Sahib had said, exactly what the Constituent Assembly had said was reiterated, was reaffirmed by none less than the Supreme Court judgment to which the learned minister is referring to. May I say, sir, that clause 7 militates against, I'm deliberately using that word, I hope it's not unparliamentary, sir. And I'm subject to correction. Surely there could be another word. Yeah, it violates, negates the rigors and the affirmation by the Constituent Assembly, by Baba Sahib Ambedkar, by other individuals and honorable members of the Constituent Assembly. It militates against the very spirit of the Constitution that is enshrined in Article 14. It completely negates and subjugates Election Commission to the authority of the executive, and it does away with, may I respectfully say, it does away with willingly, if I may say maliciously, the judgment of the Supreme Court in toto. And that's why this law is per se like a stillborn child. Thirdly, sir, I also want to point out, sir, जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, आर्टिकल 14 जो हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है और जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के बेलगाम कार्यों पर अंकुश लगाने का सबसे बड़ा तरीका है, ये पूरा कानून उस आर्टिकल 14 के लेटर और स्पिरिट के विरुद्ध है।
और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा। सर, सभापति जी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है वो अब एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड सर, क्योंकि अपॉइंटमेंट कमेटी है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत किए गए उनके एक और मंत्री। तो एक कहावत है गांव की, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, आप भी, कि अंधा बाटे सीरड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे। If Prime Minister and his minister is going to be the majority in the committee, why have the committee? Let the Prime Minister appoint everybody. Why even have this law? It's an empty formality. Secondly, sir, Supreme Court said, Constituent Assembly said, the first law minister of the country, Baba Sahib Ambedkar, said that ruling regimes to nominees make the entire process ineffective and negatory and redundant. And this is what the Supreme Court also said. I want to quote from those 4 lines in para 8 of that judgment, and I quote, sir, like the judiciary. In fact, वो एक कदम आगे गए और उन्होंने कहा चुनाव आयोग में और न्यायपालिका में कोई अंतर नहीं. And I quote, sir, para 8, like the judiciary, the Election Commission must display fearless independence in the absence of norms regarding the appointment. A central norm, that is institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. Sir, this is what the Supreme Court said. This is what the framers of the Constitution said. This is what this government is afraid of. I'm saying it with a sense of responsibility, for they don't want an independent election commission and CEC and EC. They want a pocket borough. उन्हें एक जेबी चुनाव आयोग की आवश्यकता है. ये कानून एक जेबी चुनाव आयोग का गठन करेगा. आप जेब से चुनाव आयोग निकालेंगे और जो आप चाहेंगे फिर वो प्रजातंत्र के साथ वो करेगा. इस कानून का फाइनल मतलब यही है सर. यू पिक और चूज का एक फॉर्मूला होगा. सर, मे आई रिस्पेक्टफुली ऑल्सो से सर that it does not pass any kind of constitutional muster. We have to be aware, this is an august house. After all, we have to be aware as to what we are doing and saying and what we are passing. This is manifestly arbitrary. These are ill-conceived attempts. This law is an ill-conceived attempt at consolidating undue executive control, total executive control over the electoral body, that is the Election Commission. It also, the process is arbitrary, the intent is malicious, and the result is disastrous, if I may say. That is what is going to happen, sir. And sir, I again take the liberty of last time quoting the Supreme Court, where they said in para 119. Before that, let me remind the honorable member. Yes, sir. With highest respect to everyone, the Parliament is the sole repository of lawmaking. And this is wisdom of the Parliament. Neither the executive, nor the judiciary, nor any other body. My time may be stopped. No, I'm aware of that. Since majorly you are focused on Supreme Court judgment, as if the reflections therein have to bind us. I would expect the debate to rise to a very high level because, because this House, this Parliament, to the exclusion of any other entity, be it executive or judiciary, is supreme when it comes to lawmaking, and you are part of it. Extra 30 seconds. Thank you. You both are. I'm really surprised. I'm really surprised, both of you. Sir, it is time we rise to some level at least.
सभापति महोदय, you represent a party that has a great history. क्या बोले? Let the honorable member rise and indicate what I spoke. Please rise. Take your seat. Indicate what I spoke. What did I say? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में आपने बोला जब कोई कोर्ट कर रहा था. Would you be good enough to quote me? Sir, Do it during course of the day. sir, I'm doing, sir. You allow me, you're not allowing me. Mr. Nasir Hussain, during course of the day, go to the proceedings of the House yesterday and put it on the table that you rely on that. It is not a good habit. I am only making a plea to the members that we are Parliament of 1/6 of humanity. We are supreme when it comes to lawmaking. We cannot suffer intervention from any other organ, be it executive or judiciary. That's what I'm saying. Honorable member may continue. One sir, please take your seat. If there is a number, if your time comes, take your seat. Yes. सभापति जी, let me begin by thanking you for your words of wisdom. You are much seasoned, both in age and experience, both in law as also perhaps in parliamentary practices. You have held many offices. But with all humility may I say, sir, you are 100% right that Parliament is the august body and is the overarching body. It is the fountainhead of democracy. But even the fountainhead of democracy, sir, will have its sanctity when it does not commit arbitrary acts and passes arbitrary law. The fountainhead of democracy must adhere to the very tenets of democracy out of which it is born. There is a power higher than us, and that is democracy itself and the constitution itself. We may not be the interpreters of constitution, we are framers of law. It is the Constituent Assembly and the Parliament which continues to amend that constitution which enacted by the Constituent Assembly. But there is something called a higher spirit of democracy and an accountability to the constitutional norms. So as I stand today here, sir, and as I say what I say to my esteemed minister, who is very experienced, and I place before you, with you all your wisdom and experience, I must say I'm conscious, I'm duty bound, and I'm answerable to that highest spirit of democracy and the constitution which was enacted by this very parliament. And that spirit of the constitution and that spirit of democracy today tells me, sir, that a law is being brought which will tarnish, bulldoze, and sabotage that very democracy and undermine the very constitutional practice that you and me and each one of us swear by. And that is my anguish today, which I seek to place through you before this august house and also place before the Honorable Minister. Supreme Court only interprets the Constitution. They are also defender and protector of the Constitution. Many times we have said that. And I did not quote the Supreme Court in the beginning, may I remind you, sir. I'm only responding to what the Honorable Chair said to me. I began by the words of and the wisdom of Baba Sahib Ambedkar. I began by the wisdom of Constituent Assembly. And this was the only issue. Independence of Election Commission, lack of interference from the political executive, and an electoral machinery which is only and only answerable to the tenets of democracy and fairness and equity was all that the Constituent Assembly was saying. We have seen, we have read through, sir, you've read through, I've read through many times the debates of the Constituent Assembly on many, many facets. Rarely I've found, rarely I may say, and please correct me because you've read perhaps Constituent Assembly debates far more times than I have, but I have also. Rarely I've found that not a single member of the Constituent Assembly disagreed that the fountainhead of democracy
is fairness of the electoral process and independence of the election machinery. This was the only issue where the entire election constituent assembly, irrespective of caste, color, creed, religion, political differences, ideological differentiation, they were unanimous. And that's all that I pointed out to the Honorable Minister. That's why, sir, I did not begin with the judgment of the Supreme Court. And I said, Supreme Court has only affirmed what was said by the Constituent Assembly. May I, sir, also point out? Conclude, please conclude. Yes, sir. I also want to point out that the law and what the Honorable Minister has brought, he negates and ignores not one, not two, but the 3 committees on the subject, 2 of which were appointed by your government. And may I just quote, sir? There was the Dinesh Goswami Committee on Electoral Reforms. Perhaps the chair was also a minister at that time in that government, sir. You were a minister. And that government was supported by the Bharatiya Janata Party, sir. Then it said, and I quote It the was report. supported by nearly the entire house except your party. Yes, sir. And what did that report say? So I am only saying, कम से कम जो खुद कहा है भैया उसको तो मान लीजिए. हाथ जोड़कर इतना ही कह रहा हूं, हमारी ना मानिए. Para 1.2 on page 9 of the report says, for CEC appointed by the President in consultation with the Chief Justice, Leader of Opposition of Lok Sabha, and of course the largest leader of the largest opposition group. For EC, Chief Justice, Leader of Opposition, and the CEC. This was the recommendation made, ignored by the Honorable Minister. Again, their own Law Commission report number 255 on electoral reforms 2015, headed by Justice AP Shah. May I remind the Minister? What did that report say? Para 6 point, I'll just take 3 minutes by the watch. You are eating into the time of your party only. Okay. Go ahead. I don't think so. My party has an objection. Go ahead. And I'm sure the chair has none either. The total time allocation to your party is 41 minutes. Yes, You sir. have taken 24. Yes. Can continue up to 41 if they agree. Okay, sir. Para 6.12.5, sir, of the Law Commission report number 255 of 2015, headed by Justice AP Shah. I want to remind the Minister, and I quote, the appointment of all the election commissioners, including the CEC, should be made by the President in consultation with a 3-member collegium or selection committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition in the Lok Sabha or the Leader of the largest opposition party in Lok Sabha, and the Chief Justice of India. जब वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट मानने की बारी आई मंत्री जी, तो आप इस दोनों बातों को खा गए. जो आपके लॉ कमीशन की रिपोर्ट है और आपके use some other word. खा गए नहीं को. आप उसको ओमिट कर गए सर. ओके सर, आई स्टैंड करेक्टेड सर. Because he has unimpeachable credentials. Very well, sir. I concede. Sir, my next short point is, अगर आप क्लॉज 5 ऑफ द बिल को भी ध्यान से देखें तो एक बड़ी यूनिक बात है. पहली बार ये निर्णय कर दिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अब हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं हो सकता except one category. There is complete reservation now on who can be CEC and EC. Either a serving secretary government of India or a retired secretary government. मतलब complete 100% reservation forever आपने कर दी. मैं केवल माननीय मंत्री जी से खुद से भी ये पूछता हूं. Sir, if you were not the speaker, could you not as a jurist be a CEC or a EC? I believe एक ऐसा व्यक्ति, और मैं ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं कह रहा, पर ब्यूरोक्रेट ने तो कभी ना सरपंच का चुनाव लड़ा, ना पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, ना जिला परिषद का चुनाव लड़ा, ना एमएलए का चुनाव लड़ा, ना एमपी का चुनाव लड़ा, ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ा. तो इलेक्शन की लिस्ट और इलेक्शन की मैनेजमेंट वो करेंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा. ये 100% आपने उनके लिए रिजर्व किया. क्या इस पर आप पुनर्विचार करेंगे? एक शॉर्ट पॉइंट ये था. सर, एक शॉर्ट पॉइंट और मैं आई वांट टू मेक.
जो एक सर्च कमेटी है जिसके माननीय मंत्री जी अब अमेंडमेंट भी ले आए हैं क्लॉज 6 में, ये सर्च कमेटी जो है ये बड़ी यूनिक है सर, और हिंदुस्तान में जितने और ऐसे कानून हैं उनके बिल्कुल अलग है। अगर आप इस पे देखें, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड थे, माननीय मंत्री जी खुद इसके हेड बन गए। So it is now headed by the law minister. We have no problems. But the search committee is now actually a steering committee. This steering committee will now eliminate candidates. Say, sir, I also apply as a former secretary, hypothetically I'm saying, or a serving secretary. They can eliminate any number of inconvenient people that they want. They will only select 5 people. For CVC, for CBI directors, it is not so. The search committee puts up all the names. पर यहां तो ये स्टीयरिंग कमेटी है, और वो एक कहावत है गांव की कि घर की बही काका लिखड़ियां, राजस्थान हरियाणा में कहते हैं। तो सर्च कमेटी कानून मंत्री है और सिलेक्शन कमेटी प्रधानमंत्री है और उसके नॉमिनी उनके मंत्री हैं, तो घर की बही काका लिखड़ियां, अपनी मर्जी है जो करेंगे। Sir, it cannot be steering committee that they have to restrict it to 5 people only. Why? Why not place everybody? I don't know why they want to do so. One more thing, sir. Clause 17 of this bill runs contrary to Article 324(3). If you see Article 324(3), the CEC, the Chief Election Commissioner, is the chairperson of the commission. The Constitution framers categorically recognized. So may I just read, it's only 2 lines. Go ahead. When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as chairman of the election commission. Sir, वो chief justice हों, वो prime minister हों, वो chief election commissioner हों, उन्हें election commission को regulate करना है। पर अब आपने बोल दिया कि कोई निर्णय हो, quasi judicial function हो, administrative function हो, डेली फंक्शंस हो, वो मेजॉरिटी से डिसाइड होंगे। यानी कल को सभापति जी, हाइपोथेटिकली मंत्री जी अगर सीसी हैं और मुझे इनको नेगेट करना है, तो मैं 3 और मेंबर्स अपॉइंट कर दूंगा और फिर कहूंगा कि आप दफ्तर में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, या आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, या आप किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के मेंबर ही नहीं बन सकते जब सिंबल का निर्णय मेरे पास आएगा। I find this strange. The procedure and conduct is always done. If I was to say I'm going to regulate procedure of this house, you will say no. Even deputy speaker can't do it. I am the chairperson. Deputy chairperson cannot do it. So chairperson inherently has powers to regulate, but this bill does not say so. In the end, sir, I only want to say to the honorable minister through your good offices, sir, there is an old saying of law, and I want to reiterate it today. Mantri ji, however high you may be, however powerful your government may be, whatever may be the brute majority you may enjoy, the democracy and the constitution is above you, and you cannot subjugate, bulldoze and trample over it. I also want to say, we, whatever may be our numbers as joint opposition of the India Alliance, we are defenders of Constitution of India. We are defenders of people of India. We are champions of the voice of the voiceless, and we will continue to do so. एक समय था सर जब EC, जो ये वर्ड है ना EC, इसका मतलब था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी। दुर्भाग्य से अब आपने इसको बनाने का निर्णय किया है EC, इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड। सर, डोंट डू दैट। आपको इस देश में जेबी चुनाव आयोग नहीं चलेगा। जेबी चुनाव आयोग अगर आप इस कानून के माध्यम से बनाएंगे तो इस संसद, प्रजातंत्र और संविधान तीनों की शुचिता, निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वायत्तता, आप उन सब का हनन करेंगे। थैंक यू सर। So, in the course of my colleague's speech, we referred to the government that prevailed in 1990. You, in good spirit and good wit and good humor, you said that was a government supported by all parties except your party. I correct myself. Yes, sir.
Your Because I want party to did remind not you, support us. I want to remind you that your party also became your party 3 years later. No. I told this house, I have been a member of this party, have good connections there. They need to reciprocate. I have been this side also, and I have been in NCP also. But Jairam Ramesh will not change himself. He knows I made this statement earlier. All I need to indicate to the House that when he said we'll defend, in togetherness, this Parliament is the ultimate defender of Constitution, ultimate architect of Constitution, and if anyone seeks to change the architecture of this Constitution, the Parliament is custodian of it. No incursion whatsoever can emanate from any other source except this Parliament. And that is why we are debating it. What shape the law will take will be determined by Parliament. Executive has come with a bill. That's the ultimate authority. Shri Ghanshyam Tiwari. माननीय Tiwari ji, जी you have 15 minutes. साहब एक 21 तो करो ये तो अपनी पार्टी को कहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रारंभ करूं उसके पहले ये करना चाहूंगा कि मेरे सामने एक समस्या आ गई। जैसे उन्होंने गांव की 2 कहावतें बताई थी, हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। One second. घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी। हालात बदल गए हैं। ये लागू हो रही है। तो सभापति प्रोफेसर, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ पेंट ऑफ फीलिंग। ये सभापति महोदय, तिवारी जी पर इस बात का ध्यान रखिए, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सभापति महोदय, मैं जब माननीय सुरजेवाला जी बोल रहे थे और उनके मुंह से लोकतंत्र की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा रस आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि एक बार नवीन चावला जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी थे उनको ही चुनाव आयुक्त बना दिया था और वो आज ये कह रहे हैं कि सरकार नियुक्त करने जा रही है। तो साहब इतना ये बात कर रहे हैं, फिर वो पार्टी लोकतंत्र की बात करे जो इमरजेंसी लगाई, सारा काम किया, तो मैं वो लोकतंत्र की बात नहीं करूंगा, उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस बिल की ओर जा रहा हूं और माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने 2 बातों की चर्चा की, उन्होंने संविधान सभा की चर्चा की, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा की। पहले तो मैं संविधान सभा के बारे में बताना चाहूंगा कि संविधान सभा ने ईसीआई की नियुक्ति व्यवस्था को संसद के विवेक पर छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव का सारा सिस्टम वो कार्यपालिका के हाथ में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद इसके लिए कानून बनाए। अरे संसद के विवेक पर है, इसलिए मैं आपकी उस बात की तायद करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो कहा कि संसद ही सर्वोपरि है, न तो कोई न्यायालय न कोई और, इसलिए सर्वोपरि संसद के रूप में ये कानून लेकर हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल लेकर आए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। अब वो पुराने वो हमारे पूज्य हैं और फाउंडर मेंबर हैं, और अब उनके बाद में साहब अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी
कानून मंत्री बना है तो वो अर्जुन राम मेघवाल है। तो साहब अब जब आप उनकी चर्चा करते हो तो अर्जुन राम जी मेघवाल की भी चर्चा करो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो विधेयक है उसका कारण क्या है। साहब हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदत पड़ गई है विपक्ष की, और इसके कारण से जिस सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्णय कर रहे थे, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सरकार की हर बात को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये अराजकता की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न वो कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब बरनाला अजीत के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की समिति बना दी कि भारत का प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये मिलकर तय करेंगे जब तक कानून नहीं बन जाता। तो उस परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने के लिए ये कानून लेकर हमारे विधि मंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं विधि मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून में क्या है सभापति महोदय, इस कानून में चयन समिति की संरचना की व्यवस्था की गई कि चयन समिति कैसी होगी, उसकी संरचना की व्यवस्था की गई है। चुनाव समिति में, चयन समिति में कौन लोग शामिल होंगे इस बात की व्याख्या की गई है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री रहेंगे, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और साहब इसमें और भी इनके लिए बहुत रियायत दी गई है। आगे चलकर इसमें कहा गया है कि विपक्ष के नेता, जितनी विपक्ष का मान्यता प्राप्त दल नेता नहीं हो संख्या, तो उससे भी कम संख्या हो और सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो, उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इतना कंसेशन दे दिया क्योंकि हमें पता है कि परमानेंट रूप से वो कभी भी इस बात पर नहीं आएंगे कि उनको मान्यता प्राप्त विपक्ष की भूमिका रहे। इसलिए सरकार ने सारी देता से ये प्रावधान कर दिया कि वो संख्या न भी हो तो भी इनका प्रतिनिधि चयन में रहेगा और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हो। माननीय सभापति महोदय, 70 साल तक जो आदमी इस बात को कभी चयन समिति की बात ही नहीं की, अपनी इच्छा उसको बनाते रहे, वो आज इस प्रकार की बात करें, मैं समझ में नहीं आता। ये चुनाव आयोग क्या है, ये लोगों के ध्यान में कब आया? मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, जब सबसे पहले TN शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तब लोगों को पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। वरना तो पहले तो राज्य चुनाव आयोग था। अभी चर्चा कर रही थी कि ये जो सदस्य बनेंगे उनका ये कैडर होगा, ये इनका ये कैडर होगा। शक्ति सिंह जी सुने 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 एक आपको एक राय दे रहा हूँ राय दे रहा हूँ। मैं विधानसभा में एक सेकंड, मैं विधानसभा में माननीय घनश्याम तिवारी जी के खिलाफ रहा हूं। मैं प्रतिपक्ष में था, माननीय घनश्याम तिवारी जी मंत्री भी थे। इनको जितना टोकोगे उतनी ऊर्जा आएगी इनको, ये मत कीजिए, ये मेरी आपको राय है। और नीरज डांगी जी के पिताजी भी हमारे साथ थे। मैं आपको राय दे रहा हूं घनश्याम जी, अब आपको इंटरप्शन नहीं होगा तो आप समय में अपना बात कह पाएंगे। डांगी साहब तो मेरे पड़ोस में रहते हैं साहब, जयपुर में मेरे पड़ोस में रहते हैं डांगी साहब। और मैं निवेदन कर रहा था कि ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो जिन लोगों का कैडर बनाया है, जो चुनाव आयुक्त बनेंगे या मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, इनमें से कभी कोई पंचायत का चुनाव लड़ा हुआ आदमी नहीं होगा। ये माननीय सुरजेवाला ने कहा। माननीय सुरजेवाला जी, जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो कब चुनाव लड़ा हुआ होता है? विधानसभा का चुनाव का अधिकारी SDM होता है, वो चुनाव कब लड़ा हुआ होता है? एक भी आदमी चुनाव लड़ा हुआ नहीं होता, और चुनाव लड़े हुए आदमी को बनाते तो फिर चुनाव आयोग ही नहीं होता। इसलिए सबसे बढ़िया व्यवस्था ये की गई है।
ये बात आप जब करते हैं उस समय कुछ बात करनी चाहिए थी, वो तो नहीं की। मुख्य बात जो आपको करनी थी वो ये करनी थी कि भारतीय लोकतंत्र में और इसमें समस्या क्या है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रजातांत्रिक पारिवारिक सामंतवाद। गोस्वामी समिति की सिफारिश करी, उसकी बात करी, उस पर बोल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भारतीय लोकतंत्र के सामने है पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवाद। और वो जो कह रहे थे कि ये ईडी का नाम नहीं लेते, इंडिया जो बोल रहे थे, ये इंडिया इसके खिलाफ खड़ा होगा। ये इंडिया पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतशाही प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक भी मैं आज बताना चाहता हूं, यहाँ पर 7 लोग एक परिवार के मेंबर और मंत्री हैं। वो है प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा। उस लोकतंत्र की बात नहीं करते। चुनाव आयोग की जो व्यवस्था की गई है सभापति महोदय, ये निष्पक्षता के लिए की गई और केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डायरेक्शन है, लेकिन एक व्यवस्था करनी थी कि 1991 के कानून में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 324 के अंतर्गत और 191 कानून की व्यवस्था के नहीं होने के कारण से ये एक व्यवस्था की गई। और ये व्यवस्था उन व्यवस्थाओं से बेहतर है जो व्यवस्था आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्तियां होती है, वो नियुक्तियां कैसे होती है, उनसे बेहतर स्थिति की इसमें व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति आयोग, उससे बेहतर समिति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उससे बढ़िया व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उससे बढ़िया व्यवस्था की गई है। और अन्य निकायों में जो नियुक्तियां होती है, उससे भी बढ़िया और व्यापक व्यवस्था की गई है कि उनमें तो प्रतिपक्ष का नेता होता ही नहीं है। तो वो सारे जब संवैधानिक रूप से ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तो फिर ये नियुक्तियां और ये आयोग ठीक ढंग से काम क्यों नहीं करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की 2 चीजों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते। पहला है भारत का चुनाव। भारत के जैसा चुनाव विश्व के किसी देश में नहीं है, विश्व के किसी देश में नहीं है। आज आचार संहिता लगने से पहले जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ थे, जिस दिन आचार संहिता लगती है वे चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं और चुनाव आयोग का अधीन होकर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उसी हम का भी चुनाव करते हैं, हमको शपथ भी दिलाते हैं। माननीय तिवारी जी प्लीज इधर। मैं आपसे कर रहा हूँ साहब। जी जी, आपस में बात ना करें। आपस में नहीं करें साहब जी। तो मैं ये बात कर रहा था। दूसरी बात कर रहा था कि जब मैंने कहा था कि टीएन शेषन साहब से आने से पहले, मैं भुक्तभोगी हूं सर। मैं 1972 से इन चुनावों से जुड़ा हुआ हूं, स्वतंत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, लड़ा रहा हूं और अब तक यहाँ पर पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जब चुनाव होते थे तो सरकार की चलती थी, तब चुनाव के पहले दिन तक ट्रांसफर के लेटर कांग्रेस के नेता लेकर आते थे। वोट दो, ये ट्रांसफर का लेटर लो, वोट दो, ये ट्रांसफर का लेटर लो, तब तक काम करते थे। ये तो आचार संहिता क्या होती है तब पता लगा। और जब टीएन शेषन ने इतना काम किया तो उन्होंने देखा ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो उसकी संख्या बढ़ा दी, 2 कर दिए, अब 3 हो गए हैं। तो जजमेंट के आधार पर निर्णय होगा। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव सुधारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है साहब। अभी गोस्वामी समिति की सिफारिश की बात की, प्रकाश वीर समिति की सिफारिश भी आई हुई थी। उन चुनाव सुधारों के बारे में कुछ नहीं किया गया। अगर किया गया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 1951 में इन्होंने कानून बनाया और खुद नियुक्तियां कर देते। तो कमेटी भी नहीं थी, तब तो सर्च भी नहीं था, तब तो रिसर्च भी नहीं था, ये बना देते थे, ये कर लेते थे। लेकिन अब जब ये कमेटियां बनने लगी और जब विपक्ष में बैठे
और जब इसका थोड़ा टेस्ट आने लगा तब इनके दिमाग में इस प्रकार की तकलीफ हो गई। इसलिए इस प्रकार का काम ये बार बार करते हैं। अगर आपको चुनाव सुधार करना है तो चुनाव में धन का जो प्रयोग है उस धन के प्रयोग को कम करना पड़ेगा। वो आपको मौका मिलेगा झा जी, प्लीज। अच्छा चलिए। तो चुनाव सुधार के लिए पैसे का, अब पैसा कहां से आएगा? तब पैसा आता है चुनाव में ब्लैक मनी का, और ब्लैक मनी जब पकड़ी जाती है तो समस्या होती है। तो कहीं 58 करोड़ पकड़े जाते हैं बंगाल में, तो कभी 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसी व्यवस्था की कि आज तक जितना पैसा नहीं पकड़ा गया उतना करोड़ों रुपए का पैसा इस चुनाव के आचार संहिता के काल में पकड़ा गया। ये इतनी शुद्धता, इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता हमने इस चुनाव की कायम की। तो एक तो मैं करना चाहता हूँ। दूसरा, सभापति महोदय, हमारी तरफ से आप बता दें कि पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, जब तक सुधार लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। अटल जी से लेकर, आडवाणी जी से लेकर, मुरली मनोहर से लेकर, वेंकैया जी से लेकर, अमित शाह जी से लेकर, हिंदुस्तान के सारे प्रांतों से लोग आए। प्लीज आप बैठ जाए प्लीज। हाँ बोले। और राजनाथ सिंह जी से लेकर सारे प्रांतों के लोग आए, और एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंच गया। लेकिन उधर जो पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियां हैं, उनकी क्या हालत है साहब? कोई बन भी जाए तो चलता उनके कहने से है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये टिकट वितरण की व्यवस्था परिवारवादी को के हाथ में रहेगी, तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। इसलिए चुनाव की व्यवस्था को और ठीक करने के लिए पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को, मंत्री महोदय, पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को सुधारने की बात भी होनी चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय के इस मत से पूर्ण सहमत हूं कि कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः संसद का है। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती, वो निर्देश कर सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है वो ही कानून में आए ये जरूरी नहीं है। कानून को हम लोकतंत्र की भावनाओं के अनुसार और जनोपयोगी बनाने का काम इस संसद को करना है, और वो काम हम कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में 4 बातें प्रमुख रूप से हैं। पहला, आप प्रक्रिया पार्टी ने जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। आप बोले अपनी पार्टी का समय लेंगे। नहीं, मैं समाप्ति कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। तो मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि वो दल जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, वो दल जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने अपने सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, उनके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है, और देश के लोकतंत्र को भी पवित्र रखने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। नाउ ऑनरेबल श्री जवाहर सरकार जी, 18 मिनट्स। Sir, I thank you for this opportunity. I thank my fellow members for giving me this opportunity. I thank my party, my chairman of my party, the National General Secretary, for giving me this opportunity. This opportunity is not the discussion of one more bill. Please try to understand that today we are dealing rather innocuously on the amendment of a bill which actually seeks to touch, to shake the very foundations of our democracy. Our democracy rests on free and fair elections. And today we are discussing the key, the structure and the mechanics of that election under the guise of a simple law.
Now, why do we need to bother about Indian elections? Why do we need? Just a few examples, sir, just a few statistics. We claim to be the mother of democracy. Maybe we can expand on this some other time, but we have the largest electorate in the world, 92 crores at the last count. We have the largest democracy, functioning democracy. We have 4 million EVMs. The management of 4 million EVMs crisscrossing the country calls for supreme efforts. Sir, I have had the honor of conducting the 1998 and 1999 parliament elections as the chief electoral officer. I know the extreme difficulties under which officers function. The same officer, the same personnel who may be slovenly in his daily work rises to new heights. Rises to new heights because a surge of national duty overtakes them. It is time to salute their efforts. It's not a question of whether they went through an election process or not. Sir, for a simple election, for a national election, we have 20 lakh policemen drafted from here and there and posted outside their houses. We have 3 lakh paramilitary. I'm just mentioning the statistics. I had 78,000 polling stations, and I know what it was. We must salute the machinery that was created by the first founder, Sukumar Sen, who was drafted from Chief Secretary West Bengal to become the first election commissioner, and he laid down the path so that India's democracy may continue uninterrupted. Now, having said that, I would recommend to both friends on both sides that they read some of the information with pride, the amount of elections we have gone through, the amount of troubles. I remember, sir, in 1999 elections of Atal Bihari Ji, there were floods in Bengal, and my chief election commissioner asked me, "Tum kar paoge?" I said, "Sir, flood हुए थे ये तो बंगाल में तो होते ही रहते." We held elections on boats. On boats. That's all. People went and voted. We have to go through this. Now, coming to the new bill, and why we stand to oppose. First thing that we need to note in the new bill is the status of the CEC and EC is being deliberately lowered from that of a judge to that of a cabinet secretary. तो इसमें क्या असर है मैं बता रहा हूं इसमें क्या है it is level 17 now under the order of preference a Supreme Court judge is at number 9 of the warrant of precedence. An election commissioner was also there. Now it has been relegated to 9A. छोटी-छोटी बात लगती है. But sir, on it depends the parity, on it depends the level at which one can call the other. If the cabinet secretary is equal to the election commissioner, tomorrow the cabinet secretary will not listen to the election commissioner. He said, "Hum barabar hai." You see, don't put danger through innocuous English words into the act. Who can summon whom? So there is a deliberate demeaning of the position of the chief election commissioner and the election commissioner being done deliberately under guise of a few words. Second thing, appointment really boils down to that of PM and his minister. ये 3-1, 2-1 खेल के क्या फायदा? आप बैठ के फाइल पे ही दे दीजिए ना, जिसको मर्जी. Why are we going through the charade? I would submit, sir, after 71 years of conducting elections, God and Parliament has given us an opportunity to rethink. This is not the time to say that Navin Chawla was this and B was this, or Sunil with Arora was this. This is not the time to discuss. We have had good and bad on both sides, and Mr. Qureshi's book is of immense importance. Now, why I find this bill so dangerous, let me explain. In clause 6, it is given that a search committee will be conducted by the cabinet secretary. Fair enough. A search committee, theek hai, in all good spirit. And then in clause 7, they say, after the search committee has given names, it will be decided by a selection committee consisting of Prime Minister, his own minister, and the leader of the opposition. The results are known. Why go through this? The Supreme Court's order gave a strong hint
that the Chief Justice of India is perhaps willing to join a body and bring in a certain degree of legitimacy, sacrosanctity, and fairness. That order, that innuendo has been refused. Now, it doesn't matter who the leader of the opposition is at that point of time. I would submit we have two leaders of opposition. Dono ko de dijiye na. At least there'll be some amount of intelligent discourse before you can run through. The more dangerous clause, sir, is clause 8. Clause 8 actually says, after all this election and search committee and all that, says that any person can be appointed as Chief Election Commissioner and Election Commissioner. Now, what a dangerous precedent you are opening. This is a job where I have mentioned some of the dimensions, where I've said we have 10 lakh polling stations. It's an administrative job. And we know what administration is in this. And I've also mentioned the degree of fairness that overcomes. Even Tiwari ji, I think, also mentioned about it. Ki jab wo kartavya aa jate na, tab things become different. We are not clerks and officers at that point of time. Now, having said that, we would insist that you choose the best. Now, there is a subclause here saying that who can be shortlisted? Secretary to the Government of India, somebody who has held the post. I would submit, sir, Secretary to the Government of India is determined by pay scale. Seedhi baat. And tomorrow, a chairman of a cooperative society who has been given that scale and who has conducted elections would fit into the bill. Are you going to bring in someone? Do you think that a huge machinery in every village, in every tehsil, in every block, in every subdivision, in every taluk, in every district of India would be able to run the elections? You are leaving gaping holes. You are leaving gaping holes, and I would submit it is being done deliberately. Now, again, I repeat, in clause 10, the downgrading of the rank takes place. This downgrading is not a question of what shoulder ranks we have, and that's for armed forces. This downgrading is on the power to instruct during elections कि आपको ये करना ही है. That power is getting diluted by diluting the rank, and this is extremely dangerous. I would submit, sir, that clause 8 or article 8 is very, very dangerous. I'll read out to you. The selection committee of the Prime Minister may also consider any other person. Please, let. Sir, he's not yielding. Modi ji, later, you are eating into my time. Yes, please. Please. Okay, so if you have brought in an amendment, we shall take a new look at it. Now, taking it in clause 10, I have mentioned clause 10, and I shall wait for the amendment to see what comes up. Now, coming to the Constitution, this is a thing that reflects on Article 324 of the Constitution, which gives, after all the debate that has been held, the power of conducting the elections upon this election commission. And it also makes a subtle difference. And this is where I plead to my fellow legislators to have a look at this. It makes a difference between the CEC and the EC, where the removal is concerned. In other words, an EC can be removed, election commissioner can be removed practically at will without protection. Now you may say, ये theoretical बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ क्यों theoretical बात कर रहा हूँ. This is practical. Do you remember the episode of Ashok Chawla when Sunil Arora was Chief Election Commissioner and was issuing orders that Ashok Chawla as member refused or had doubts? Oh, sorry, Ashok Lavasa, my mistake. Ashok Lavasa was issuing order that was going in for conscientious objections. We all know about it. The going on within the Election Commission is secret, and that is what it should be. But we know from certain acts that Ashok Lavasa was not on the same page with the CEC at that time, and the CEC at that time has set new standards that Naveen Chawla never raised.
could never sit. That's easy. We have enough material to talk about it. Now, what happened is the removal here is equated to Supreme Court judge. That is impeachment, which is very difficult. But the ECs remain unprotected. And I thought that this government would have the largeness of heart and the depth of vision to include this protection to them, because an election commission means 3 persons, not only one who is in the better books of the government. When Ashok Lavasa raised these conscientious questions, he was promoted. He was kicked upstairs, if I may use the word. He was just removed. His family was raided. His son was raided. His wife was called in for question. My humble submission is that if this gentleman had certain, you know what I mean, then why did you make him? Or did you make him after knowing all this and keeping this information in a pocket? कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, कभी गड़बड़ करें? No, this is not playing fair. I now come to the judgment that has also been mentioned in great detail. But this judgment is very, very pointed. It says that he points out to the whatever I mentioned about the election commissioner being at the mercy of the CEC. It refers to various steps taken to amend the present electoral law, and then uses a word. It becomes the Supreme Court. It becomes imperative to shield the election commissioners and to insulate them from executive interference. A word like this being mentioned by the Supreme Court is indication enough that we should be more judicious with the post. We should be more judicious with the post. Now, coming to the 1991 Act that it seeks to replace, the 1991 Act actually gives them that status that this Act is taking away. So in a way, the 1991 Act was good enough. So the 1991 Act was concentrated mainly on salaries. This one does on the demeaning of status. So my humble submission to all the members. Let him complete. Sir, I need those extra seconds, sir. Am I only? Please pause it. Please pause it. Sir, let me carry on. And if it is relevant or not, you can. अगर आपके पास कुछ है पहले बताना था. Not when I'm debating. Just point of order. Point of order. Destroy Mr. Jawahar Sarkar, please point of order. Point of order. Then sir, pause कीजिए. Rule 240. उसवती महोदय, इन्होंने amendment जो सरकार ने move किया है, I think he has not gone through the amended part of the bill. Otherwise, you are saying the whole thing. वो उसी पुरानी बात को repeat कर रहे हैं. और जो amendment move हुआ है, उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं है. अगर उसको पढ़ लेते तो उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती. सती मैं ये करो कि जो सरकार ने amendment move किया है, उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं. अब पुरानी बात को बोल रहे हो. Please, sir, let me continue. Point of disruption. Please. हाँ, सुखेंदु सेगरा जी. Has referred to Rule 240 while seeking the point of order. 240. What does it say? 240. 240. Yes, he mentioned about 240. He mentioned 240. What does it say? I quote, the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech. How come? How come this rule as a point of order to stop my member from delivering speech? Please. And the Parliamentary Affairs Minister was supporting. Manya Sadasyagana, I had to listen what he has to say. The government has already brought amendment. Please. Sir, please. Sir, wo. बैठिए, please. Sir, may I continue? Yes, please. थोड़ा बहुत timing भी देखिए. Please. अच्छा. Now, my submission was the honorable member had mentioned, Mr. Tiwari had mentioned about Naveen Chawla, the secretary of a very powerful person being made
the CEC. I refer to the secretary of the current Prime Minister being made to hold the most neutral post in the Constitution of India after the Election Commission, and that is the CAG. Do not destroy every institution. The man who was his right-hand man is today as CAG, and we don't get any reports. Thoda bahut bhi do char report aa gaye, ab band kiya gaya. Now, Come on the not subject, only this, please. when I talk of the Yes. destruction of institutions, Yes. I go before him when we had, what shall I say, a hero CAG, none of whose presumptive losses could be proved. We have had a hero who got 2 to 3 crores from the BCCI because of whatever. Please He was speak on the followed- subject. Sir, I am Yes. talking the destruction of institution. He Yes. was followed by a CAG who was charge sheeted by CAG, who was brought into a CBI charge sheet. Mr. A Jawahar CAG Sarkar being ji, you are brought- not discussing Sir, the CAG. destruction of Please. institutions. Look at the way they We are are not destroying discussing institutions. CAG, please. I look You are a upon the senior member. UPSC. Please. Sir, मुझे कहने दीजिए. I talk about the destruction or the demeaning of the UPSC, where you have got a monk Please, today. please come on the subject. Sir, It's it is on the election- subject, the wider Election Commission. scope. Please, the ED, confine yourself to the misuse Election of Commission, ED please. and the CBI for absolutely. Please. Okay, sir. I will now come to the last point in this regard, where I would say that the Act had spoken about a fixed tenure. This one also speaks about a fixed tenure, but brings it back at 65. Sir, when I mentioned about the destruction of institutions, all I meant is that among the three constitutional institutions, the UPSC, the CAG, and the Election Commission, they are suffering through the same fate. I just wanted to draw the attention of the ministry and provide empirical proof to prove that they are being hollowed out. Do not touch the Election Commission, sir. Wo CAG on a skate we can tolerate. But the Election Commission will determine the fate of democracy that is coming up. We are all going to be part of its thinking process. There's a leadership that is called for, a huge number of members from the officers and staff of government and para-government officers come up. And when they see somebody they can't respect, sir, I've been there again and again. अगर इज्जत न दे पाए, कुछ ना बनेगी. आप जिसको मर्जी अपॉइंट कीजिए. Sir, this will lead to what we call legalization of rigging. Legalization of rigging. We have already found the erosion of the office where EVM is suspect. VVPATs are not stamped. VVPAT are shown to you for a few jhaki darshan and then it goes into the pot. It does not validate my vote. Where you see electoral bonds take over. So there have been many things in the function of the Election Commission that would warrant a fuller discussion. But today we concentrate only on the appointment and the consequential disappointment that this side of the House has to the process by which the entire foundation of fairness are sought to be shaken. Sir, I would still submit that with all these operational faults, the Election Commission is still managing. I would submit that please let it function. Please let the army of election personnel function. Let them not feel that they're led by an obviously political boss for obvious reasons. Do not destroy the institution and withdraw those sections that militate against fairness, that actually embed unfairness into the system. Do not legalize rigging. Thank you. Mani Tiruchi Siva, 7 minutes. 7 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I stand to oppose this bill. For it is undemocratic, unethical. Please, Sivaji. Mic is not working. Its mic is functioning. You see, please, your mic. It's already functioning. Sir, I stand to oppose this bill. Please, speak.
Tiruchi ji, please speak. For it is undemocratic, unethical, unjustifiable, unacceptable, and Shawl is obstructing. I don't know. You please speak. You are losing your time. For it, sir, undermines the very purpose, sir. Sir, any nation will have a head, even it may be ruled by a dictator. But only in a democracy, the people decide who will be the ruler to administer the country. And the unique and supreme indicator or identity of a democratic country is fair and free elections. And for the undercurrent of it is the ballot. Sir, ballot is not a fickle choice. It is the soul of the country. It brings poor and the rich equal. The educated and the uneducated, everyone are equal when they stand in the polling booth. Moreover, sir, it's we, the Indians, gained it after 200 years of subjugation. It keeps the hope alive in hearts of 140 crore of people. It is a decision. It is a lifeline. And of course, it is a responsibility of the people. Sir, why? Yeah, I'm telling much about the ballot paper. It's a hope for a better future, better life, and better India. And the Election Commission is the entity which takes care of the elections, which gives power to the people of this country. And this bill, the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service, and term of office, geopoliticize this sacred principle of the ballot and values that are part of the constitutional basic structure, such as the rule of law, the right to equality, and fair election. It's yet another nail in the coffin for the EC's autonomy by paving the path for appointment of a yes man as the Chief Election Commissioner to decide the fate of our electoral democracy. Sir, the objection reasons very clearly say the Honorable Supreme Court in writ petition civil number 104 of 2015, Anup Banerwal versus Union of India, declared that the appointment of CEC and ECs shall be made by the President on the basis of advice tendered by a committee consisting of the Prime Minister, the leader of opposition in the Lok Sabha, and in case there is no such leader, the leader of the largest party in the opposition in Lok Sabha, having the largest numerical strength, and the Chief Justice of India. This is very important, sir. It has been clarified that in the aforesaid judgment that the said norm provided by Supreme Court will continue to hold till a law is made by the Parliament. Now, an attempt is made here. We have brought a bill to enact a law. But that bill does not serve the purpose what the Supreme Court has directed. Supreme Court has said there must be a committee comprising of the Prime Minister, the leader of the opposition in the Lok Sabha, and the Chief Justice of India. Whereas this bill provides a search committee and a select committee. And the search committee consists of only bureaucrats. The secretary in the government, who may be in office, they will comprise the search committee and they will give a panel of members. And the select committee, the bill provides the Prime Minister, the leader of opposition, or the leader who is the major party in the opposition side, if at all there is no leader of opposition, and a union minister appointed by the Prime Minister. Then everything is over. And further it says that to select an election commissioner or the CEC, there need not be a unanimous decision. A majority will be enough. Means very clear. Why this bill? You can very well, jolly well say that whatever the government wishes can be done. Sir, Madam, I would like to say one thing. This government has brought all the bills and legislative laws which have repeatedly said that don't forget, one day or other you will be in the opposition and you will face the wrath of all the legislation you have done. They think that they will be forever in the ruling party and the treasury benches.
So the Prime Minister and the Union Minister appointed by him along with the leader of opposition, what will be the decision? What the Prime Minister and the Union Minister will decide. So their choice will be there. And otherwise, one more thing, other than the members suggested by the search committee, the select committee can appoint anyone else. Then what is the use of the search committee? See, there is a search committee consisting of only bureaucrats, and the select committee has the majority of the government, that is the Prime Minister and the Union Minister. And moreover, the search committee's recommendations will be thrown off, and they will appoint any other person whom they wish. All are really a farce. So what is the purpose of a bill which is going to become a law? The Chief Justice of India, why not he be a member is a very big question, and why you are bypassing it, only you have to say. What is wrong, or what prevents you or objects you by having the Chief Justice of India as a member of the Select Committee? So I would like to quote Dr. Ambedkar, very, very pertinent. Everyone has to repeat it, no wonder, because he is the architect of our Constitution. The episode reminds us, on June 16th, 1949, during the debates in the Constituent Assembly on the draft Article 289, now Article 324 of the Constitution, dealing with the Election Commission, he precisely said, I quote Dr. Ambedkar, quote, there is no provision in the Constitution to prevent the appointing of either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the executive. Said by none other than Dr. Ambedkar. A day earlier, unquote, a day earlier on June 15, 1949, while moving the draft Article 289 in the Constituent Assembly for setting up an election commission, Ambedkar had observed, quote, without any kind of dissent, that in the interest of the purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of utmost importance that they should be freed from any kind of interference from the executive of the day. But now the executive is having the entire control. The select committee can ignore those members, Mike, can ignore the recommendation of the search committee and it can, excuse me, I can just, I don't know, in the winter, we cannot wear the shawl because of the mic. This has to be taken note of by the Parliament of Minister. Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction, and control of elections to Parliament, state legislatures, the office of the President of India, and the office of Vice President of India shall be vested in the Election Commission. So, Election Commission is not just another entity in the country. This is the foremost. That's why it is chosen to be autonomous, without the intrusion of the government or any other forces from outside. Tambi. So we expect a lot. Tambi. Make a pardon? Yes, Solunka. Yes, ma'am. I think I have time. 5 minutes. 7 minutes. Yeah, I know. I've given the remaining time only. If I can, The I'll give you contravention all of the Supreme Court judgment in this bill, in the absence of a parliamentary legislation guiding the selection of ECI members, the 5 judgment I told earlier, the Supreme Court laid down interim guidelines. The case challenged the constitutional validity, and now that the recommendations have totally been overlooked by this government through this bill. In 1990, the Dinesh Goswami Committee had made suggestions to ensure independence of the ECI. Number 1, the removal process of CEC and administrative independence of the ECI. So also it has been repeatedly, even in the Supreme Court in 1995, ECs are considered to be at par with the CEC in hierarchy. But now what is happening? The CEC can remove the EC, whereas the CEC can be removed only by an impeachment.
along with all other things. The CEC was earlier on par with the Supreme Court judge. By way of this bill, he has been reduced to on par with Cabinet Secretary. Okay. Election Commission is a quasi-judicial body. It has a very big authority. So that's a very big question. An amendment has been moved. I think if it is taken up, it will be very well appreciated. So also the global practices can also be adhered. UK has a panel of members of parliament headed by the speaker, not from one party only, invariably from all the other parties. So also South Africa has got a new another one. So we can follow those things even in America, but whereas this has been done. And I would like to conclude with only one word, ma'am. According to the Mr. S.K. Qureshi, the former CEC, to tackle the major downside of the proposed bill, which is the lopsided selection committee, was to make all its decisions unanimous. That will resolve. But now it says that the majority of the select committee means it's very, very clear. Only the Prime Minister and the Union Minister who is that will be taking the decision. So forming that select committee becomes meaningless, and the search committee's recommendations, if it is ignored, that becomes redundant. So this bill, when it becomes a law, paves way for constituting a search committee and a select committee. Search committee's recommendations become nothing, and the select committee's decision will be unilateral. So the purpose is not solved. So I would suggest to the government, I would urge, what this bill you have brought does not serve the purpose. Better send it to a select committee for a better scrutiny. Stakeholders will come and bring it back with suitable amendments and make it democratic, make it ethical, make it justifiable, and that the selection of the CEC and the election commissioners are transparent and appreciable. Thank you very much. Mr. Chadha. Mr. Chadha. क्या बीजेपी भारत देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है? क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? ये कुछ सवाल हैं जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए, और वो इसलिए आए क्योंकि इस बिल के माध्यम से ये सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानी कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है। मैम, चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी चयन और नियुक्ति इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हाथों में आ जाएगी, और वे जिसको चाहें, चाहे वो पार्टी का शख्स हो, यस मैन हो, पार्टी मैन हो, जिस मर्जी को चाहें वे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। चुनाव आयोग की हमारे देश के चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस तारीख पे चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां-कहां भेजी जाएंगी, उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट, उसका योग, उसका प्रयोग, सारी चीजें चुनाव आयोग तय करता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है इस देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। Ma'am, I will mince no words. This bill is going to destroy one of the few remaining independent institutions in India, that is the Election Commission, and thereby dislodge free and fair elections from India. ये बिल 3 व्यक्ति या संस्था का अपमान है। पहला अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च 2 को 2 मार्च 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया, और वो फैसला ये था कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का कोई भी दखल चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए। ये खत्म करने के लिए हम एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति के गठन से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें जो शख्स ये चाहे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिए गए संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के 2 फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया। पहला था दिल्ली सेवा बिल, जो
8 दिन के भीतर ऑर्डिनेंस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया, और एक ये बिल जो 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दे रही है कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस फैसले को पलट देंगे। दूसरा इंसल्ट या अपमान इस बिल के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि चयन समिति के 3 सदस्य होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 मेंबरी समिति में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और एक कैबिनेट मंत्री को उनकी जगह बिठा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इतना परहेज कि साफ तौर पे उन्हें इस समिति से हटाने के लिए इस बिल को लाया गया। मैं सरकार को याद कराना चाहूंगा कि समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इस देश में कमेटियां बनी और अधिकांश कमेटियों ने यह फैसला दिया, ये रिपोर्ट दी, ये सजेशन दिया कि समिति के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि इस देश की न्यायमूर्ति को जरूर होना चाहिए, चाहे वो तारकुंडे कमेटी हो, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो, वोरा कमेटी हो, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, जीवन रेड्डी कमेटी हो, या फिर इसी सरकार की लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो। तीसरी इंसल्ट इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार एक ऐसे शख्स की कर रही है जो व्यक्ति भाजपा का संस्थापक थे, जो व्यक्ति आज भी भाजपा के मार्गदर्शक हैं, जो व्यक्ति भाजपा के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति जो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। मैम 2 जून 2012 को, और मैं राज्यसभा के पटल पे इस लेटर को रखूंगा, 2 जून 2012 को माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण है, उसकी नियुक्ति पर एक बहुत बड़ा संदेह, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और उसकी नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और वो लिखते हैं, द प्रेजेंट सिस्टम वेयर बाय मेंबर्स टू द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड solely on the advice of the Prime Minister does not evoke confidence in the people. Keeping these important decisions as the exclusive preserve of the ruling party renders the entire selection process vulnerable and open to manipulation and partisanship. और वो कहते हैं कि समिति 5 सदस्यों की हो जो सीईसी की चयन करे, उनकी नियुक्ति करे, जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हो, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा हो, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और कानून मंत्री हो, यानी कि 2 सदस्य सरकार के, 2 सदस्य ऑपोजिशन के और 1 न्यायपालिका के। ये समिति बड़ी अच्छी है। यानी कि आडवाणी जी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्वतंत्रता के लिए, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, लेकिन इन लोगों ने आडवाणी जी को भी उनके हक की, उनके अधिकार की बात नहीं दी। आज मैं सदन में दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी के हक की, उनके अधिकार की बात मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहला जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और आज जब उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति स्वतंत्रता से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। आगे मैं 3 महत्वपूर्ण कारण बताना चाहूंगा मैडम, जिसके चलते ये बिल को आज मैं और मुझे लगता है समस्त विपक्ष अपोज करता है। पहला कि ये बिल पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, और वो इसलिए है क्योंकि यू कैन नॉट रिवर्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विदाउट चेंजिंग द वेरी बेसिस ऑफ इट। यानी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना है तो सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को देते हुए जिस आधार को रेफर करता है, आपको उस आधार को बदलना पड़ेगा। आप सीधा फैसला नहीं पलट सकते। लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूलभूत भावना को इस बिल के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करी है और निष्पक्षता को चुनाव आयोग की भंग किया है। दूसरी कारण क्यों ये बिल गैर का मेरा माइक चला गया, क्योंकि ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है निष्पक्ष चुनाव और डेमोक्रेसी। अगर बायस्ड इलेक्शन कमीशन होगा तो चुनाव भी बायस्ड होगा। अगर गैर निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुना जाएगा तो हिंदुस्तान में चुनाव भी गैर निष्पक्ष तरीके से होंगे। इसीलिए यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरी तरीके से वायलेट करता है। मैं आगे बताना चाहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों यह बिल एक प्रकार से सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। Why is the selection committee biased in the favor of the government? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर
पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना, सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है। यानी कि सारा नियंत्रण, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। पैरा 9 इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कहता है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन becomes and remains a partisan body and the branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चयन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री होंगे कि फेयर होंगे, वो तय करता है। मैं आगे चलता हूं, 14 मिनट है मैडम, अभी तो 6 मिनट बाकी है। सुप्रीम कोर्ट आगे अपने पैरा 186 में हाईलाइट करते हुए कहता है, अ पर्सन who is weak-kneed before the powers that be cannot be appointed as the election commissioner. A person who is in a state of obligation or feels indebted to the person who has appointed him fails the nation and can have no place in the conduct of elections, forming the very foundation of our democracy. An independent person cannot be biased. It is important that the appointment must be overshadowed even by a perception that a yes man will decide the fate of the democracy and all its promises. यानी कि केवल निष्पक्ष चयन ही होना जरूरी नहीं है, निष्पक्ष चयन जनता को नजर आना भी जरूरी है। इट मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये सुप्रीम कोर्ट बात कहता है। मैं आगे चलता हूं। तीसरा कारण कि क्यों हम इस बिल को अपोज कर रहे हैं वो है कि ये जो प्रपोज्ड सिलेक्शन कमिटी है इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे, 2 मंत्री सरकार के उसमें बैठे हैं, एलओपी को मात्र फॉर्मेलिटी के लिए इसमें बिठाया गया है, तो एक प्रकार का फिक्स्ड मैच इसमें नजर आता है। अब आप भी सोचिए, 3 मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और 3rd मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं वो हैं। अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश, मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। हमने बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और 3rd भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है। मैं आगे चलता हूं मैडम, मुझे बोलने दीजिए। इसका माध्यम, मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये बिल 3 की टेस्ट पे फेल होता है, द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, द टेस्ट ऑफ न्यूट्रलिटी एंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है कि देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटना चाहती है, अगर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस समिति से हटाने के लिए इतनी बेकरार है, तो मैं आज सुझाव लाया हूं कानून मंत्री जी, 3 सुझाव मेरे, इनमें से अगर आप कोई सुझाव स्वीकार कर लें तो मुझे लगता है सारा हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा। पहला सुझाव यह है, ये 3 ऑप्शन लाया हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन यह है कि
चुनाव आयोग का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इसका गठन 2 मेंबरी समिति करे, जिसमें 2 लोग हों, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये विपक्ष के नेता। ये 2 मेंबर्स सर्वसम्मति से फैसला ले, यूनानिमिटी से, क्योंकि 2 लोगों में मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो 2 लोग सर्वसम्मति से फैसला ले, जो भी नाम तय करेंगे हम सब मान जाएंगे। ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मैं देना चाहूंगा सरकार को, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात मान लीजिए, मेरी मत मानिए, आपको आम आदमी पार्टी तो पसंद नहीं, पर अपने पेट्रियार्क फाउंडिंग फादर, आपके पितामह भीष्म लाल कृष्ण आडवाणी जी का फॉर्मूला ले लीजिए। 5 मेंबरी समिति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 मेंबरी समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का चयन कर लेगी। और तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं, तो मैं आपको वो ऑप्शन बताना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना ने दिया था। वो था कि जो भी नाम ये चयन समिति तय करे, वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं और 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा से नाम पास हो जाए, वो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। मैं सकारात्मक बहस कर रहा हूं, मैं ऑप्शन लाया हूं। ये इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए, सारे विपक्ष को मनाने की, एकजुट करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से इतना बस कहना चाहूंगा मैडम, कि ये बिल एक डे लाइट रॉबरी है हमारे देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है। एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द आम आदमी पार्टी oppose this bill, vehemently oppose this bill, because this bill will ensure that India, which is today known as the mother of democracy, will tomorrow unfortunately be known as for mockery of democracy. मदर ऑफ डेमोक्रेसी से मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी तक का सफर आप इस बिल के माध्यम से तय करने जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा, इस बिल को वापस लीजिए। लोगों की देश के लोकतंत्र में बहुत आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ करने का काम मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Chairman. Thank you, Chairperson, ma'am. Ma'am, I'll start with the statement of objects and reasons which is mentioned in the bill, and that would probably settle a lot of the apprehensions that have been expressed by members on my right. The Honorable Supreme Court in writ petition number 104 of 2015, Anup Barnawal versus Union of India, declared that the appointment of CEC and EC shall be made by the president, so and so. Everyone has talked about it, but it has clarified in the judgment very clearly. I want to reiterate, and which the Honorable Minister also mentioned it while introducing the bill, that this particular composition of the Prime Minister and the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India shall continue until and unless a law is made by Parliament. And unfortunately, a law was not made in Parliament. If you know that I belong to an organization which is the Comptroller and Auditor General of India. I used to belong to that organization, which had a law in place, duties and powers and conditions of service of the CAG of India, 1971. So I must congratulate the government that at least a law has been made, and that law is succinctly, and in law it has now been mentioned what will be the appointment, what will be the conditions of service, and what will be the salary of the chief election commissioner and the election commissioners. That having said that, I will come to the second point, and that is relating. A lot of mention has been made about the independence. There are basically 4 issues: independence, interference, democracy being trampled upon. Basically, these 3 arguments were made. Ma'am, the point is, there is something called a doctrine, which is a doctrine of fallacy of causation. That if this happens, this will happen. If this happens, that will happen. And this false causality is the main issue out here. The bill talks about the appointments, conditions of service, as I mentioned. Whereas the transaction of business in the Election Commission has been mentioned at Section 16, Chapter 4, Transaction of Business of Election Commission. The transaction of business of an election commission is to conduct elections. The appointment process is a completely separate issue altogether.
People who have, after being appointed only, they will conduct the election, and 17.1 says that the allocation of work will be done by majority. 17.2 says how the business decision will be done by majority. The other one was unanimity. Some people say that everything should be unanimous. If that is so, will the Election Commission not function if there is no unanimous decision during an election process? I think that has to be thought about. There is this situation which says that you completely jeopardize the system just because there is no unanimity among the 3 members or 4 members or 5 members. So I think it is absolutely an unacceptable proposition which has been put forward by some of my colleagues. I'll come to the point relating to, ma'am, the issue that the process outlined in the bill would inevitably lead to a loss of independence for the Election Commission is a fallacy. If such an assertion is held true, it would raise doubts about the efficacy of all election commissioners over the past 76 years, given the appointment of ECs has been within the purview of the executive. Despite this, they have consistently operated independently. Ma'am, the Election Commission has overseen completion of 17 national and 317 state elections since independence in 1947. Even under pressure from the executive branch and governing parties to bow to the demands fed by their desire for electoral success, the ECI has managed to strengthen its autonomy from year to year, election to election. Let us not forget 1977, the post-emergency elections in 1977, the opposition was apprehensive about the election process itself. Let me quote Charan Singh wrote to Jai Prakash Narayan, both opposition stalwarts, in January 1977. Mrs. Gandhi is thinking of staging an election. I call it staging because conditions for a real election, free and fair, will be lacking. Raghavan 2017, I can lay it on the table of the House. As it turned out, Congress was voted out of national office for the first time during these elections. And this was in 1977, when there was a single chief election commissioner. The elaborate process was not there. Now, when a process is being brought in now through a regular act of parliament, I think it is laudable, extremely praiseworthy to the government that such a particular process is being brought in. Now, I'll come to the second point, ma'am, relating to a judge being a part of the process. Now, if the judge was a part of the selection process, what would happen? If the CJI is in the committee to recommend appointments and raises questions of violation of, it raises basically questions of violation of the doctrine of separation of power, but I would like to refer to my colleague, Honorable Jawahar Sarkar said that what would happen, that in the appointment of the CAG, some particular CAG turned out to have a CBI case against him. Now, if this was the situation here, wouldn't the CJI be a party to a decision on which he may be probably required to take a decision in the judicial capacity? Would it not be a travesty of justice then? The CJI, being a part of the judiciary, cannot be a part of any selection process in this country. Now, let me also remind you that under the RTI Act, in which most of the states who are represented here have elected the chief information commissioners and information commissioners, what is the selection process? The selection process is the chief minister, another senior minister, and the leader of the opposition. All of them have done. All of us have done. Is it all which has been done is absolutely trash? Is it something which has been mired in subjectivity, in bias? Absolutely not. So I think the process is fine. An element or a person from the judiciary cannot be a part of the process. Now I'll come to, ma'am, a point relating to, which has been raised quite a bit, which is relating to the issue of conduct of elections. After 1989, no party in a position to win a majority, the ECI faced few structural constraints on its autonomy. I had mentioned, ma'am, that right from the beginning, all election commissioners
whether it was a single member or a three-member committee, have always upheld the process, upheld democracy by conducting free and fair elections. The motive has been to decrease money power, to increase transparency, to increase more number of people to access to the electronic voting machines, access to the booths. And in that process, the model code of conduct was brought out. Model code of conduct doesn't have any legislative backing. It is an unanimous decision between parties. And that is being enforced by the Election Commission. So the Election Commission, even after 1989 onwards, has been holding this model code of conduct as the beacon of democracy and has been holding the elections freely and fairly. Of course, there are always allegations and counter-allegations, but I can tell you that in the recent survey, in a countrywide survey conducted by the Center for the Study of Developing Societies, Delhi, in 1996, after the 11th general election, the EC stood as the institution that was trusted the most by people, followed by the judiciary, the state government, local self-government, so on and in that order. And this, despite not having the advantage or not having the backing of a law to determine their conditions of service and appointments and salaries. Yes. So 96, this was the opinion this was the opinion way back in 96. And when I said, since Manoj Jha said, 1977 is the one which was the watermark in Indian democracy. Democracy was under threat. Even during that time, the elections were held and Mrs. Indira Gandhi's government was thrown out. And that shows that the Election Commission's transaction of business, which is covered under section 16 and 17 in chapter 4, is not affected by the appointment process that is followed. And the appointment process that is followed is something on which I said the references to the RTI Act. And also, let me also inform the House that insofar as the appointment of the Comptroller and Auditor General of India is concerned, there is not even a search committee, not even a selection committee. And the Supreme Court in the this Constituent Assembly, Mr. Ambedkar held that the CAG is a functionary which is even more important than the judiciary. Still, it is being done without a selection committee system, and still it is performing to the best of its abilities for the service of the nation. Ma'am, there is one point which I wanted to make in addition, which is by way of suggestion. The point which is mentioned about Election Commission's conditions of service of election commissioners, transaction of business 91 is hereby repealed. Now, what happens to the existing commissioners and the existing chief election commissioner who have been appointed by the previous act? If this is repealed immediately, what happens to their conditions of service? I must thank the Honorable Minister that by way of amendment at number 37, I had a lot of things to say on that. Fortunately, this amendment has been brought, and that is a sense of the House that his status should have been kept at the level of the Supreme Court of India. This has been restored. Only one correction here, Honorable Minister. At page 2, it is written, it should be page 3, and 43 to 45, whatever has been mentioned, is well made. The other suggestion, the other query that I have is the election, this has already been mentioned, the removal of the election commissioners has not been made at par with the removal of the chief election commissioner. In this amendment 2, at number 2, the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a judge of the Supreme Court. The other election commissioners shall not be removed from office except on the recommendation of the chief election commissioner. Does it mean that they would also follow the same procedure and also an additional recommendation from the chief election commissioner? Or only the chief election commissioner can remove? I think this clarity has to be brought into this particular amendment. The Supreme Court and the 1991 Act have already made it very clear that the election commissioners and the chief election commissioners should be put on the same footing, except that the chief election commissioner is first among the equals. Now, if that is so, I think the removal procedure should also be ensured.
One more point, and this is a very significant point. This is relating to the independence. The independence of an organization like the Chief Election Commission is more linked to the way their conditions of service are governed. If the conditions of the service can be changed after their appointment, if their appointment tenure can be reduced, if their salaries can be reduced, if the removal procedure can be changed, then it is an affront to their independence, not at the appointment process. And therefore, in the appointment and conditions of service of the CAG also, it says that none of these can be altered to the detriment of the Election Commission after the appointment has been made. And since that has also been maintained in the bill, I have no hesitation in saying that there is no affront to the independence and interference in the election process that has been argued by many of my colleagues before me. The last point is relating to the Election Commission in the process. The Election Commission is not just a three-member body. It has already been stated eloquently by my colleague, Mr. Jawahar Sarkar. The point here, the election machinery in India, the largest democracy, which when the whole world observes and is absolutely, they are completely taken aback, surprised that such an election is held without any kind of a problem and transfer of power takes place. Now, this is happening by the support of the machinery right till the municipality level, right till the panchayat level. So if that happens, if that is the case, then how come only 3 members are, their independence is important? Do you mean to say the judges of our Lord Judiciary are not independent? Do you mean to say our district magistrates, who actually are the returning officers during the elections, are not independent? Only these 3 people should be independent? I think this entire argument is fallacious, is based on absolutely an argument which is non-est in law, I would say. I would therefore end by saying that I support the bill. I would request the Honorable Minister to bring in these clarifications. I would thank him again for bringing him on par with the Supreme Court judge, and also would request that their removal procedure should be made equal, in which case their independence would actually and truly be preserved. Thank you so much, ma'am. It's not your turn. Subhash Chandra Bose. Oh, okay. Yeah, there are some offensive expressions which have been used in the speech by some members. I didn't want to interject in between. Particularly, my reference is to. Can you mention the rule, please? Yeah, this is rule number 238, point number sub-point 7, madam. Okay. So this is some use. Oh, sorry, 261. Let me take up 261 first. 261 first. Offensive expressions. Use of offensive expressions. I would like them to be expunged. Terms like Katputli was used for a constitutional body. Kabja on a Chunav Ayog. These are highly objectionable words. And also daylight robbery of democracy. We are here. You're a bit late. You Sorry? should have objected before Mr. Patnaik started. No, because sir, he no, never used such words. No, Whoever not did him. before Raghav, him, Mr. you should have member- objected at that No, time. member Mr. Raghav Bose, Chedda please. has used Mr. these Bose, expressions. please. I would like them to be Mr. Bose, please. Mr. Bose, please. No, why? Thank you, Madam. Adhyaksha, Yes. Pradhana Enikal Commissioner, ఎన్నికల కమిషనర్ నియామకానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లుపై మాట్లాడే అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు ముందుగా తమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానమ్మా. Excuse me. Respected Madam, Speaking in Telugu. on behalf of my party, YSR Congress Party, I raise to support this bill. మనది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశం. ఈ దేశంలో స్వేచ్ఛగా
న్యాయబద్ధంగా నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించే ప్రక్రియ మనం రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ఈ వ్యవస్థలో ఒక అంతర్భాగం. ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో దేశంలో స్వేచ్ఛగా న్యాయబద్ధంగా నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరిపించడానికి మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు విజ్ఞతతో ఆలోచించి ఆ బాధ్యతను అంటే ఆ కర్తవ్య నిర్వహణను ఎన్నికల సంఘం మీద ఎన్నికల సంఘానికి అప్పగించారు. ఈ ఎన్నికల సంఘానికి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎన్నికల కమిషనర్లు నియమించే విధి విధానాలు రూపకల్పన చేసి ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించి ఈ బిల్లుపై ఈరోజు మనం ఈ సభలో చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత అంటే మెజారిటీ కలిగినటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు మరియు ప్రధాన మంత్రి గారు నియమించే ఆయన మంత్రివర్గంలో సహచరులు ఒకరిని ఈ సెలక్షన్ కమిటీలో ఎన్నికల సంఘం నియమించడానికి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎన్నికల కమిషనర్లను రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు చేసింది ఈ కమిటీ. సెలక్షన్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎన్నికల కమిషనర్ నియమిస్తూ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. ఈ బిల్లు యొక్క లక్ష్యం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నియమించడానికి అర్హులను ఎంపిక చేయడానికి ఒక సెలక్షన్ కమిటీని కూడా అంటే సెర్చ్ కమిటీని కూడా నియమించి వెసులుబాటుని బిల్లు కల్పిస్తూ ఉంది. ఈ ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడేందుకు వీలుగా ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రశాంతంగా, నిష్పక్షపాతంగా, న్యాయబద్ధంగా నిర్వహించడం ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క బాధ్యత. రెస్పెక్టెడ్ మేడం, ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రజల్లో మరింత విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి ప్రజలు ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థను పరిరక్షించడం ఈ బిల్లు యొక్క ఉద్దేశాల్లో ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. విత్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఐ సపోర్ట్ దిస్ మేడం. That the quality of translation was not good. Yes. For instance, a search committee was being referred to as research committee. I just thought I should share that. Even I realize that. You're right. Mr. Singh, Mr. A.D. Singh. How much time do I have, ma'am? Huh? हम शुरू करते हैं. Thank you, chairpersons, for giving me the opportunity to speak. But I am a little surprised by the election results which happened recently. Karnataka election was on 10th and the result was 13th. That is just after 3 days. Telangana on 30th November and result on 3rd December. Both the places, the ruling party lost. And wherever there was a gap of a month, 1 month, half month, then the results were different. So I am quite confused and perplexed by this. And so far as the independence of the election commission is concerned with vis-a-vis the executive, I know how in recent times, no, there are two things. At least I'm happy that a particular member complimented Congress for the 1977 free and fair elections. But we have seen recently that one of the election commissioner, the way he was hounded, and he had no option but to resign and go to Manila or somewhere. The Constituent Assembly members were concerned over the need to ensure the independence of the commission. B.R. Ambedkar said, in order that election may be free in the real sense of the word, they shall be taken out of the hands of the government of the day and conducted by the independent body called the Election Commission.
The need of an independent body to hold elections was emphasized in courts in number of cases. In TN session versus UOI and others, it was observed that there can be no two options that free and fair elections to our legislative body alone would guarantee the growth of a healthy democracy in the country. The proposed bill jeopardizes this fundamental principle. And the proposal of this bill in today's political context, where issues are being raised and allegations revealed about the EC like never before, will be another nail in the coffin of the election authority, EC authority. And if the government is just reversing the decision of the Supreme Court in this matter after the judgment, that 5-judge bench, I don't want to go and repeat what other members have said. I think it is it will be a very sad day in the history of the democracy of India. And so far as other colleagues are saying that, talking of emergency, today we have a undeclared emergency, which is worse than the one which was done by Madam Gandhi. And the way the selection committee is supposed to select the election commission, then there's no point we should have a 3-member committee. Let the Honorable Prime Minister select a person. And so far as my colleague from the Biju Janata Dal talked about the CAG and other organization, I can personally tell him how it works. So fortunately, I don't want to put things in the house because it will be not very good. So I vehemently oppose this bill. And when our forefathers have given a constitution which really balanced between the judiciary, legislature, and executive, and the way we are going, most of the institutions are being taken out of their powers, and whatever the ruling government says, they behave like this. So I vehemently oppose this bill. Yes. Yes. First of all, congratulations. It's wonderful to see you on the chair. It's a temporary arrangement. Yes, but when I saw it on the television in my room, it's coming across very, very elegant, very distinguished. Thank you. And very privileged to see you, Thank you. holding the chair today. Thank you. I just want to share with my good friend and esteemed colleague, Mr. Singh, that he made a sweeping comment that there's an emergency and it's worse than the emergency of that time. Coming from a person from Bihar, coming from the land of Loknayak Jayaprakash Narayan, coming from the land which fought to maintain the unity and integrity of India, which is the repository of knowledge in this country, which stood up for high principles and values and fought against the emergency, so much so that thousands of political workers, for no fault of theirs, except that they opposed the then government, with no allegations of corruption, no allegations of misdemeanor or any other sort, were put behind bars indiscriminately across the country. Probably thousands from Bihar also. Many who today are in the JDU, are in the RJD and all the various offshoots, as there are so many, it's difficult to remember their names also. But all of those were a part of the struggle against the emergency. It was totally unconstitutional, unwarranted, and an attack on democracy in the country. To make such a comment, where today we are all with great freedom able to speak in this house, where today there's freedom of democracy, freedom of speech, the media is vibrant, the judiciary is protecting the interests of the people of India. There's complete freedom across the country. And the only people behind bars are criminals, are people in whose houses you find 353 crores and counting cash, illegals, stashed away money,
where the only people behind bars are murderers and criminals and land mafia and sand mafia and liquor mafia and arms dealers and defense dealers. Respected In leader this day and age, of the House. to compare Excuse me, those leader days of the of House. emergency with today is a blot on the very thinking of your party and the esteemed member of parliament. Thank you, leader of the House. But if you are talking about freedom, I think he used his freedom. आप बैठ जाइए. Let's Minute. नहीं, अब उन्होंने कह दिया, आपने कह दिया, बैठ. What I wish to convey, that we have seen enough of freedom yesterday. That was on display by the gesticulation, by the body language. What reference he made was metaphorically. Our metaphorical statement, if it is not made, what kind of democracy? I mean, you make new buildings, but there is no idea of democratic discourse. Democracy is never, ma'am. If JP was alive today, counterfactually speaking, he would have stitched an alliance of all progressive forces against their kind of politics. Thank you, ma'am. Long list of freedom struggle leaders. There's not a single leader from Pandit Nehru to Sardar Patel to Gandhi who did not stay in my house in Patna and Muzaffarpur. So let them not teach me what democracy is. And let me tell you, one of the Russian big oligarchs had come to meet me a month back. While having dinner in my house, he said, Mr. Singh, you are more unsafe than me in Russia. So let not anybody teach me what democracy is. And I have already been to jail for not being a criminal. I should have also taken 10,000 crores from the bank and stayed in London. But I decided I will fight here. Whether you put me in jail again, I'm not bothered. Mr. Brita. There's a tragic paradox that is in full display. Ma'am, you were not here yesterday. Yesterday, the government was praising the Supreme Court for upholding the abrogation of 370. If at all an alien had come from some other planet, that person would have been completely taken aback the way in which the government is paying respects to the Supreme Court. Thank you, ma'am. Thank you, sir. If at all that alien continued for a day more, he would have been shocked to see that there is no relevance for the Supreme Court judgment, a 5-judge judgment. Sir, this is the classic somersault that is happening in the House. So the PM has been exhorting everybody, including my dear friend Agarwal ji, to make sure that the weddings are done in India. So there is a marriage of convenience that is happening here now. You want it to be a convenient proposition to make sure that the election commission is being controlled fully by Government of India. Sir, it's an absolute fact that the intention of the government is to circumvent the Supreme Court verdict. What was the spirit and letter of the Supreme Court verdict? It was to make election commission independent, impartial, and neutral. But the bill which you have brought forward is contrary to the spirit of independence and fairness. Sir, I thought that the government would be willing and yielding for comprehensive electoral reforms. Sir, I'm afraid that we are not seeing the elephants that are roaming around in our drawing room. John Bitas. Sir, the two pillars of the electoral practice now, one is money power and muscle power. Yes. I would have wished the government, if at all there was a comprehensive electoral reforms that was being brought forward, so that it would have cleansed the political arena. Sir, now with this bill that is being passed, I would say that let us close down Nirvadan Sadan
Let an outhouse of the ministry is being used for accommodating the election commission. Why do you want to waste time, sir, and energy, money? That is not required, sir. Sir, the Supreme Court had said that if at all there is no independence for the election commission, Mahesh Technology, I invite your attention. The Supreme Court said, if at all there is no independence, it would lead to disastrous consequences. What does it mean? This bill is inviting disastrous consequences because you are making the election commission dependent, an appendix of the executive. Precisely that is your intention. Sir, even the search committee, the Honorable Ministry is going to head it. Even if the search committee decide on 5 people or 6 people, the selection committee can pick up somebody outside the search committee. They should have been a little more magnanimous towards the screening committee. They should at least respect the screening committee. Why is it that even the screening committee has been treated like that without any courtesy? Sir, clause 8.2 says that selection committee may also consider any other person than those included in the panel by the search committee. So it defeats the purpose of the search committee, sir. Sir, electoral bonds, that is another contentious issue. It is with the Supreme Court. I don't want to comment about it. Yes. But the Home Minister had said that era of clean politics, and claims were made that it will lead to transparency and accountability in political funding while preventing future generation of black money. Sir, the same electoral bonds is opaque. That is a contention of the general public, according to me too. So the scheme at very behest is opaque, undemocratic, and legitimizes corruption by the ruling dispensation. So the former finance minister, I would quote him, Subhash Chandra Garg, he was there when the electoral bond was being brought in. He said that, why do business or companies donate bonds? Because they are hoping for some favor or seeking to protect their businesses. This is what the former finance secretary, who was instrumental, who was part of that team which brought the electoral bonds, said it. So what does it mean, sir? Sir, money power and muscle power, how to curb it? Sir, according to a study of CMS, the money spent in Lok Sabha election in 2019, so a growth of 7 times from 1998 Lok Sabha polls. At that time, it was deemed to be 9,000 crore. Sir, 2019, the study says that at least 60,000 crore has been dumped for electioneering by the political parties, and major chunk would have been spent by Piyush Goyal's party. So now, 224, it is going to double, sir. So any legislation that is being brought forward should be to cleanse the political system, electoral system. Instead of that, you want to make it more opaque rather than cleansing the system, sir. Sir, we all know the story of Mr. Ashok Lavasa. What was his fault, sir? Sir, everybody got 2, 3 means, 4 means, extra. Conclude. Yes, sir, I concluding, sir. You have made significant points. An honorable person, election commissioner, why was he ejected from his post, sir? So your election department, that is ED, was very active. There were raids conducted at his house, at his wife's house, son's house. He was ejected. And sir, it's a fact that even the big tech companies are being used to invade into the privacy, which has got cascading effect on the election, sir. Sir, one more thing, sir. What does it vitiate the electoral arena, sir? It's hate and hatred. So, in fact, though we go down in manufacturing, the manufacturing of fake news is very robust in this country, sir. So, these are the serious questions. Ramnath. Sir, I'm rounding up, sir. I'm rounding up. You made your point. These are the questions which... Okay. You have made good points. Sri Ramnath Thakur, honorable members, I have got इस बिल पर input बोलने from का various मौका आपने members. दिया. One second.
we will have voting at 6 o'clock. That is the sense of the House. 6. We have, and to have it at 6 o'clock, the Honorable Minister will give him the floor at 5:30. Please, Thakur Sahab. सभापति महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल जिस खुशी के साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर सत्ताधारी दल के लोग खुशी मना रहे थे, बोल रहे थे, आज क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, उसके आदेश को, उसके निर्देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं। मुझको आश्चर्य हो रहा है। सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता ने कहा जनता दल यू आरजेडी के बारे में कि ये लोग पारिवारिक गठबंधन के हैं, परिवार के लोग चलाते हैं। मैं जनता दल यू के एक साधारण सदस्य होने के नाते मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का कोई परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं। सभापति महोदय, आप सीनियर मेंबर हैं। ठाकुर साहब, मैं नहीं बोला। ठाकुर साहब, आप बहुत अनुभवी हैं। दो अनुभवी लोग जब बात करते हैं तो बस जवाब नहीं देते हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत चिंतित हूं। मेरा 58 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। मैं देखता हूं स्कूलों में हेडमास्टर की क्या स्थिति हो गई, वाइस चांसलर की क्या स्थिति हो गई, और वही चीज मैं आज देख रहा हूं कि एक भरोसा था पॉलिटिकल लोगों के बीच में, इलेक्शन कमीशन के बारे में आस्था था, उसके बारे में हम अब क्या सोच रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। मैं किसी दलगत भावना के से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी के नाते मैं बोल रहा हूं कि इस पर आप सोचिए, विचारिए, शोध कीजिए और तब बिल लाने का कृपा कीजिए। पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जो अंबेडकर का निर्देश था, अंबेडकर की जो सोच थी, उनका जो सोच था, उन्होंने जो विचारों से प्रकाशित करने का काम किया था, उस पर हम क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? उस पर हम विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? शोध क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर हम अमल करके उस पर चलने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हम पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारी सोच है और हमारा ये है। आपको याद होगा सभापति महोदय, एनटी रामाराव की सरकार गिर गई थी, राष्ट्रपति ने उनको, गवर्नर ने उनको हटा दिया था। विश्वास के साथ सभी एमएलओ के साथ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो आए थे दिल्ली में और राष्ट्रपति से मिले थे। एक आस्था था, राष्ट्रपति हमको न्याय देंगे, विचार देंगे और उस पर चलने का काम हम करेंगे। एनटी रामाराव को न्याय मिला और उस पर उन्होंने काम करने का काम। कंक्लूड। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं
कि चयन समिति का जो हमने देखा है क्या है। कोई भी आदमी कहता है चयन समिति में हम घर के गार्जियन हैं और हम जो कहेंगे वही ना हमारे परिवार के सदस्य कहेंगे, और वो अगर एक आदमी विरोध में चले गए तो उसको समझाएंगे कि हम हेड हैं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। एक कहानी करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 20 वर्ष पहले हम में और हमारी पत्नी में कुछ विचारों पर मतभेद हो गया और वो गुस्सा में कह दी कि मैं मैके चली जाऊंगी। कब? 20 साल पहले? 20 साल पहले। वो मर गई 20 मार्च 20 को। मैं मैके चली जाऊंगी। तो परिवार हमको चलाना था। अब वो गुस्सा में कह दी कि हम मैके चली जाऊंगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम मैके चली जाओ और बाल बच्चों को मैं ननिहाल भेज देता हूं और मैं अब ससुराल चला जाता हूं। फिर वही स्थिति हो जाएगी, फिर वही स्थिति हो जाएगी। आप जो ये कर रहे हैं, मान्यवर, क्या कर रहे हैं? प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, आप ये जो कर रहे हैं, ठाकुर साहब, क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब, इससे ऑनरेबल मेंबर प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं ये घर घर की कहानी है। मैं प्रमोद तिवारी जी से असहमत हूं। मेरे को आज तक ऐसी धमकी नहीं मिली है। आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं कि आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिली। आप भगवान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आप कहें, सरकार सोचे। सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए, वापस ले लीजिए। कहे हमारे हम तो अभी शुरू किए हैं। हो गया, 7 मिनट से हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के संचालन में निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव का कोई भी कथित प्रभाव बिना पक्षपात के अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की चुनाव आयोग की क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा कर सकता है। ये है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसको आप ऐसे हल्के में नहीं लें। थैंक यू सर। हल्के में नहीं लें। प्रोफेसर निवेदन करना चाहते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव सेलेक्ट कर। प्रोफेसर राम गोपाल यादव सर, 5 minutes, but since time has been limited to 5:30, 4 minutes. धन्यवाद श्रीमान। सर, Ziaji knows the difficulty of this chair. मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूँ। एक तो ये कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता की बात की थी और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब को उनकी अपनी सीमाओं में रहने के लिए कहा था। न्यायपालिका उस स्थिति में जब कोई चैलेंज करे संसद से बनाए हुए कानून को, तो जुडिशियल रिव्यू के अधिकार का प्रयोग करके उस पर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन न्यायपालिका थर्ड चैम्बर का रूप नहीं ले सकती, जैसे कभी अमेरिका की संसद को कहा गया था। राष्ट्रपति ने कुछ बनाया, उन्होंने रद्द कर दिया। संसद ने कानून बनाया,
तो झमेला वहां हुआ था, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अपनी बात पर आने से पहले मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा न्यायपालिका पर रिलाई न करें। अभी सिसोदिया के जमानत के वक्त सबने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। माननीय राम गोपाल जी, राम गोपाल, अब मुझे एक मिनट बोल नहीं नहीं, एक सेकंड। न्यायपालिका के न्यायिक आचरण पर न्यायपालिका के खिलाफ नहीं जा न्यायपालिका संसद के खिलाफ जा सकती, तो संसद के अंदर क्या कि मैं सही बात नहीं कह सकता हूँ अपना, वो नहीं तो रहने दीजिए। आपने पहले मौलिक बात कही, दमदार बात है। हम सब न्यायपालिका की भी इज्जत करते हैं, कार्यपालिका की भी करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सशक्त रूप से अपने क्षेत्र में काम करेंगे। पर एक विशेष मामले को लेकर अगर करे तब तो ठीक है। नहीं, एक विशेष मामले को लेकर किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बिल संसद ने सर्वसम्मत से पारित नहीं किया था, वो मौलिक मुद्दा है, तो उस पर बोलिए। न्यायपालिका ने जनता की इच्छा का, संसद का की परवाह की, जब उनके ऊपर आया तो परवाह नहीं की, औरों के ऊपर चाहे हस्तक्षेप करने लगेंगे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। टीएन सेशन के जमाने टीएन सेशन का सब व्यक्तित्व था कि उन्होंने लोगों को बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि सामने लोग टीवी पर देख रहे हैं कि पुलिस वोट नहीं दे रही है, पुलिस लोगों को मार रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हुए। तो अगर इस तरह के आपने देखा होगा, हम हर जगह देखा है सबने। मैं मिला जाके कमीशन से, कमीशन आंखें बंद किए रहे। इलेक्शन कमीशन की यही ड्यूटी नहीं होती सर। अभी वोट बढ़ रहा है, वोट कट रहा है, बूथ चेंज हो रहे हैं, आधा मोहल्ला यहाँ लगा है, आधा 3 किलोमीटर दूर लगा है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको पहचान लिया जाता है, जाति और धर्म से लाइन खींचते चले जाओ, लाइन खींचते चले जाओ। 50,000 वोट काट दिया, सुनने वाला नहीं कोई मुरादाबाद में, क्योंकि नाम से मुसलमान वोट पहचान लिया जाता है, जिसको चाहे उसको काट दो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो अगर इलेक्शन कमीशन में निष्पक्ष लोग नहीं होंगे, अगर वो बात नहीं सुनेंगे किसी की, तो डेमोक्रेसी क्या मतलब रह जाता है। डेमोक्रेसी का अर्थ ही यह है कि लोग अपनी इच्छा से, ईमानदारी से, फ्री और फेयर इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अपने ऊपर शासन करने के लिए सरकार को चुन सकें। थैंक यू। लेकिन हो कहाँ रहा है ये? इसलिए मैं शासन से कहना चाहता हूं, शासन में बैठे हुए लोगों से, कानून तो आप जैसा ला रहे हैं बनेगा ही वैसा। थैंक यू प्रोफेसर। आपकी नियत पे भी लोगों को संदेह है, लेकिन ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना इलेक्शन कमीशन में जिनके अपनी अंतरात्मा नाम की कोई चीज हो, जो अन्याय न होने दें, जो सिर्फ आपके सारे के लक्ष्मण, डॉक्टर के लक्ष्मण, थैंक यू। मैम, you have been here. Thank you, Chairman sir. I have given him for giving this extra opportunity to speak on this Yes, amendment of this you have been very kind to everyone. appointment of election commission. No, you have been very kind. Everyone has Sir, appreciated I it. stand here So your sitting here has been a in great support challenge to of me. this bill. Bharat supposed to be the largest democratic country in the world and mother of democracy. Sir, this appointment of election commissioner, the matter has been brought under the purview of Supreme Court. The Supreme Court has made it very clear. A temporary committee constituting Prime Minister, LOP, and CJI until a law is enacted in the Parliament. But unfortunately, our friends, colleagues started saying that CJI has been removed from this 3-member committee. मैं बधाई देता हूं हमारे लॉ मिनिस्टर को. Apart from Prime Minister, LOP, leader of opposition and a union minister. Subject to correction,
LOP, I don't think there is a opposition status even for this present Congress party in the Lok Sabha. In spite of that, our Honorable Minister is liberal enough to include as the largest party's leader also been included in the three-member committee. And sensing that even in future also it may happen. भविष्यवाणी भी जानते हैं हमारे मंत्रिपद इसलिए the leader of the party which has got highest number. So ठीक है आपको भी समय आएगा. So there is no way in violation of the judgment, sir. They should introspect first. It's a purely a meritless criticism against this government on the appointment of these election commissioners. You all should introspect what has happened all these years. What was the methodology adopted in appointing the election commission at national level, even at state level? And how these election commissioners are functioning. I really appreciate one of our colleagues from BJD. If they start now suspicious on even returning officers, this democracy would have not survived. I ask the appointment of the chairperson and staff of the tribunals, national green tribunals. Who is the authority in appointing this? The same central government for the last many decades. And even the National Human Rights Commission, supposed to be the Prime Minister is the chairperson and the ministers concerned. And these people never brought a holistic law for regulating the appointment of CEC and election commissioners. The policy paralysis, though they were in power for more than 6 decades. So when the matter is brought to the Supreme Court, the government has tried its best to make it fulfilled. One of the comments made by former Chief Election Commissioner, sir, by name O.P. Rawat, I quote, sir, the issue before the Supreme Court was not who will be on the selection committee. It was why did you, the earlier government, not enact a law as promised or laid down in the Constitution? So you make a law until then our suggested panel will select CEC and ECs. In the Constitution, Parliament is the supreme law-making body and Supreme Court has the power to judicially review the Constitution. So I don't think there is any issue in this. This is the statement given by O.P. Rawat, the former and Chief Election Commissioner. Sir, people have started and shown much respect and regards towards Supreme Court judgments. I fail to understand what happened when there was a judgment by Supreme Court on Shabanu case. What made the government to bring an ordinance? Was it not a political motive and superseding the Supreme Court judgment? And even then, when Session was a Chief Election Commissioner, he was the man instrumental in bringing electoral reforms, right from implementing strictly the model conduct, code of conduct. And the same, the Congress government in 93, they have added 2 more persons to belittle T.N. Session. Mr. Gill and G.V.G. Krishnamurthy were being added to just belittle the powers of T.N. Session. And this is the attitude of the then government, Congress government, and they'll speak of democracy and they speak of internal democracy. And even 2009, the Chief Election Commissioner N. Gopalaswamy was recommended the removal of the person called Naveen Chawla. Earlier, our member has told that who is the secretary for former Prime Minister. So, sensing that he is in a partisan attitude, working as a member in the Election Commission, Gopal Swamy recommended for his removal. But unfortunately, the then government rejected the request of this Chief Election. This is the democracy which they adopted. Sir, apart from this, now our government has brought a
3-member committee, apart from Prime Minister, LOP, and Union Minister. So, before these so-called members of the opposition parties opposing this bill, they should not only introspect, they should also know what measures have you taken during the ensuration of the constitutional norms of separation of powers. What were they have the methodology followed. More extensive, even the quasi-judicial constitutional bodies like CAG, yes sir, UPSC, NCSC, NCBC, NCST, and so on. They never bothered. And in practice, it was the government alone they have decided. So finally, Please conclude. by supporting this bill, I would like to make some recommendation, because the black money which is playing a dominant role in the present day politics, we have been witnessing how hundreds of crores of rupees now, the black money is now coming out. Sir, to eradicate black money from the politics, the government is also Dr. to Amit take some Shah. time. And also, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I get up to speak on this very important bill. But having listened to all the speakers, and especially the Honorable Law Minister, I wish that they'd gone back to 1949 June Constituent Assembly debates and seen the extent of the debate that had taken place on this particular issue of election commission. And the only statement that came out of the whole debate was that election politics, election machinery, and election should be completely out of the hands of the executive. There should be no executive interference, and this should be an independent, autonomous body. Having said that, sir, I come back to the Law Commission report of 2015, where exactly 2 lines were said by the Law Commission in the report, and that was that the Law Commission said that there should not be any breakdown of rule of law. Now, rule of law, which is meant in the democratic setup today, is that there should be strong institutions, a vibrant democracy, and all institutions should be independently working for the people of this country post-independence. Now, coming to the Supreme Court and the Apex Court judgment of 2000 in the matter of 2015, which has been raked up by many. And I've also heard that some of them have said that there have been selective liking to the Honorable Apex Court judgments and selective not liking of the Honorable Apex Court judgments. Sir, the Honorable Apex Court in a matter of 2015 said that there was a constitutional vacuum because there was no procedure which was shown in a particular bill by Parliament, no law. So there should be the vacuum, that vacuum should be sorted out. And hence this bill has come today, the 2023 B3, which says that the Chief Election Commissioner and other election commissioners bill 2023. So why the necessity for this bill? I would like to make some observations which I have seen in the public domain, that there have been instances where enlightened citizens have written to the Honorable President of our country, pointing out that there seems to be a crisis of credibility with this particular institution. We have seen that there have been instances where intelligent people and intellectuals and academicians have written very strongly that this institution needs a robust mechanism of transparency, a mechanism that is responsible to the people of this country. And hence, you again come to a question, what does the Election Commission of this country do? So you can start from electoral bonds, you can start from electoral voters, electoral voter IDs, electoral rolls, and you can talk about all the dates and the schedules which are set by the Election Commission for every election, whether it's a Lok Sabha, Raj Sabha, President, Vice President, or state legislative assembly elections. But the most important part is the silent period of the election, where the Election Commission plays kind of a supervisory role, where the code of conduct comes into picture. That is where the transparent working of the Election Commission becomes completely open to the people of this country.
And the elections are meant for the people of this country. And this voting system is meant for the people of this country. And so when we are talking about the Election Commission of India's setting up under this particular bill, the moot question comes that there is not a set of laws whereby the Election Commission functions. There are some certain kind of procedures which can be said that they are replacing the the strict law or the wordings of the law. And these procedures need to be transparent. These procedures, if they are done transparently, then the accountability is seen, very visible. Now for this, the main and the thrust of the bill should be that the composition of the Election Commission should be such that whatever I've said should be seen to be implemented. And thence, when we come to the composition, we come to the part where the Honorable Apex Court had put the word Chief Justice of India, where the committee should be of the Honorable Prime Minister, the leader of opposition, and the Chief Justice of India. In this bill, you find that the composition of this is the Honorable Prime Minister, a cabinet minister, and the leader of opposition. So sometimes you start wondering why there is a question or an iota of doubt, because the cabinet minister, if it's of the ruling party, where would the transparency or accountability go? And where would this be seen to have been exercised under this bill? Why should there not be an independent and an accountable component in this kind of compositions? Sir, when you talk about the Election Commission of India, the people of this country and also the world, they're watching that it's a vibrant democracy. When I went to 1949, the Constituent Assembly debates, it was just a country that had become independent after a long rule of subjugation. And at that time, the framers of the Constitution wanted a very, very robust and independent and accountable election commission, which would decide the fate of the voters, the liking of the voters, the intent of the voters to bring in a democracy, bring in some kind of a ruling dispensation that would only cater to the democracy of this country and build democratic institutions and see that this democracy becomes a vibrant democracy. Sir, the institutions are meant to be for the people of the country and not for ruling parties. The institutions are meant to deliver fairness. And if an election commission will not be able to see that the elections are conducted in a free and fair manner, in a transparent manner, then where is the component of democracy and where is the way in which the governance model is being shown or projected to the world? And that brings us to the moot question, whether this bill needs some rectification, whether the bill needs to be looked into on several other aspects. It has been functioning for a long while, but as I have said, that there have been instances, I do not want to pinpoint instances, because suddenly a huge group of people will get up and start shouting, but will not understand what is the backbone of bringing an Election Commission of India in a way where it caters to the need of the people of this country, and that is the transparent mechanism, the rule of law. Books and books have been written on the rule of law of this country. That depends on the independent institutions. If a bill weakens the institutions, and we have weak institutions in place where anything can be distorted, then the functioning of the democracy cannot be said to be a vibrant functioning. And that is why when the Election Commission of India, which is the highest body, and the Central Election Commissioner, who will, I'm not going into the tenure and the salary and the period of the tenure. That happens in every other institutions. But the composition makes a difference, because that composition will decide the accountability and transparency factor and the performance factor, which will tell on the elections. Sir, when I talked about the silent period, nobody has touched upon that. But when there's a silent period, that is the time where the Election Commission has to function very strictly and has to be very vigilant, because if that code of conduct is breached, and when the voters are given that silent period to make up their mind where they want to vote, and at that particular time, when a particular ruling dispensation comes up with some kinds of statements that we would be doing this, we would be doing that, we have done that, and tries to influence the voters,
This falls in the arena of the Election Commission. And as there is not a stringent procedure or rule or law, it is governed by its actions, and these actions are dependent on who is sitting in that particular Election Commission's body. Hence, sir, coming back to the Election Commission's regulation procedures and how this model code of conduct and parties is being governed, I think that is the main crux of the whole matter. So the Honorable Apex Court saw that there is a constitutional vacuum, and this has to go in the arena of the Parliament, and the Parliament can only make a bill or pass a bill and make a law. Hence, the Apex Court's order was that this should be the composition. But when the framers, the parliamentarians sitting here and bringing a bill thinks that this can be changed, it can be brought in a way where it is not seen as independent composition, where it raises some kind of doubt, and hence this debate, and everyone comes out with some point or the other. I think it's time that the Honorable Law Minister looks at this particular point of the composition aspect, because anyway, the duty is going to be performed. You are in public eye, and I do not want to show what has happened in the past. I just mentioned a couple of them issues. Some of them are already pending before the Honorable Apex Court, where the Election Commission has been asked a question, and that depends, that pertains to several factors. Parties' money, parties' intentions, the way the party collects all the money, and how it is not transparent. All these are issues with the Election Commission. It's an administrative function, but yet these matters have gone to the Honorable Apex Court. We should not forget that. Of course, the functions of the legislative, the executive, and the judiciary are all different. And the judiciary only interprets what is made by the Parliament, and it is implemented by the executive. But here we have a body which also functions in a way where it interprets and executes both. So we have to understand that it's a unique body, and how this unique body has to be answerable to the people. In order to see that we become a robust democracy, we need to set an example by shouting, Please by conclude. making sermons, by talking about that we are becoming the world leader. That's not going to matter. What you are doing on the ground is the matter before the people of this country. Thank you. Thank you very much. Shri R. Girirajan. Shri R. Girirajan ji. Thank you, Chairman, sir. I thanks to our party floor leader, Trichy Siva. Whenever the Honorable Supreme Court intervened to save the democracy, this union government shows its strength through this house and destroy the vicious views of the Supreme Court. Sir, earlier, the National Capital Territory Amendment Bill, it has been amended by this house with a brutal majority. Now, the union government wants to make easy like puppet. The bill seeking to exclude the Chief Justice of India from the panel to select the Chief Election Commissioner and Election Commissioners is deeply flawed. Sir, this bill will undermine the very democratic foundation of the picking very important executives to oversee the election process in autonomous and neutral roles. This will provide the worst possible optics to the appointment of the election officials from among a set of the chosen bureaucrats or others by a panel of government officials. Soviet Premier Joseph Stalin once said, "It is not the people who vote the count, it is the people who count the votes." I think the present bill reflects the minds of the ruling dispensation execution of the ideas of the Joseph Stalin. In eroding the process of holding elections and counting votes that has been largely done in a favor way to satisfy a large working electoral democracy like India. The present rulers are opening a Pandora's box, may let loose horses that may come back to the bite. Sir, this bill, rather than strengthening the democratic fabric of our nation, poses a risk to the independence and authority of the Election Commission. The proposed legislation undermines the crucial role of the Election Commission plays in upholding the democratic principles of our country. I strongly urge every member of this House to vote against this bill and instead supporting a fully functioning democracy that India represents. Sir, now
you are in treasury bench. Before 1990, you were having a few members in this parliament. Now you are in a brutal strength. It will not continue tomorrow. One day will come. Your acts will be amended. Mind it, my friends. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Kanak Medla Ravindra Kumar. Sir, I'm very thankful to you, sir, for giving this opportunity to participate in the discussion and the bill pertaining to appointment, service conditions, and term of the Chief Election Commissioner of India and other election commissioners. Sir, this bill has been brought before this House to replace the already existing Act, which lacks certain aspects pertaining to the office of the Chief Election Commissioner and the election commissioners. The lacuna has been pointed out by the Honorable Supreme Court of India, and it observed until proper legislative mechanism is put in place, the order will prevail in the appointment, service conditions, and tenure of the election commissions, chief election commissioners. This bill provides a search committee and a select committee. The functions of the search committee is to form a panel of eligible candidates to the post of the chief election commissioner and other election commissioners. After forming the panel, it will forward the list of names to the list of persons to the select committee. The select committee will be headed by cabinet secretary. The two officers not below the rank of the secretary to the government of India will also to the members of the select committee. The select committee will recommend to the president the name of the persons to be appointed with the chief election commission. Accordingly, they will be appointed by at a glance, the provision seems to be fine, but one goes to the provisions contained in section 8(2) of the bill. The selection committee shall may also consider any other person than those included in the panel of the search committee. So therefore, the provision relating to appointment of such committee become infructuous. So in the other aspect, the powers conferred, such power is already conferred under Article 324 of the Constitution of India. Kindly conclude, sir. Kindly conclude. Sir, I have time is 2 minutes. Time. I have 6 minutes time, sir. 2 minutes. So I am sure that's 6 minutes time. No, sir. Sir, coming to I thought I have 6 minutes, I prepared like that. I may be permitted. So, with regard to the section 6, section 8, it has to be amended. Coming to the other provision with regard to the section is concerned, there is no mention with regard to the appointing authority of the search committee members. Please conclude, sir. Please conclude. The conducting of elections in a free and fair manner is very most important. And criminality in electoral, representations of People's Act is another important. These two has to be looked into in connection with the Andhra Pradesh. That's the criminality, the criminal there, from Lok Sabha. And voters also. 1 minute, sir. Please conclude. Please conclude. And deleted by the behest of the state government. That is to be condemned. The bills has to be. It requires recent reforms has to be looked into. Representation of People's Act to change the voters list, interference of the state government, and also dispose of criminal cases against the people's representatives, including the Chief Minister of Andhra Pradesh. Thank you. Message from Lok Sabha. Secretary General. So, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 12th December 2023 passed 1. The Appropriation Number 3 Bill 2023 and 2. The Appropriation Number 4 Bill 2023. The Speaker has certified that these bills are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy each of the said bills on the table. Dr. Dinesh Sharma, 2 minutes. जो लिखा उसी पे चलना 2 मिनट. मानवर
मैं बधाई देना चाहूंगा सम्मानित कानून मंत्री जी को कि उन्होंने एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संविधान के संरक्षण में लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए एक जो बिल ये लाए हैं, मैं समझता हूँ उसने सभी पक्षों को छुआ है। पहले जो बिल था उसमें मैं कहूंगा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो अनुच्छेद 324 के अधीन अस्थायी चयन समिति का गठन किया गया था, उक्त अस्थायी समिति माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनती है और इस संबंध में विधि बनाए जाने तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया यह अस्थायी प्रबंध है। अब एक स्थायी प्रबंध दिए जाने का दायित्व एक लोकतांत्रिक परंपराओं को अनुरक्षित करने वाला, मैं समझता हूं सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पर जिन लोगों ने कभी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पूर्णतः सम्मान नहीं किया और आज इमरजेंसी ऐसी स्थितियां आई, साहबानों के प्रकरण में विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय के निर्णय थे उनको बदला गया, लेकिन आज जो दिए गए तथ्यों के आधार पर पारदर्शिता के साथ में जो तमाम संशोधनों के साथ एक पूर्ण व्यवस्था को देने का काम इस विधेयक में किया गया है, उसके बारे में तमाम आपत्ति उठाई। मुझे आश्चर्य होता है इस बात को जानकर कि विपक्ष और खासतौर से मैं सामने बैठे हुए ऐसे लोगों को जो काफी समय तक सत्ता में रहे, उनके डर को मैं नहीं समझ पाया कि उनको डर किस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष रहेंगे चयन समिति में और उनके रहते हुए गलत कैसे हो जाएगा। क्या वो अपने नेता को जो प्रतिपक्ष नेता के रूप में कमजोर मानते हैं या वो ये मानते हैं कि अगले बार हमारा नेता प्लीज कंक्लूड, टाइम इज ओवर, allotted by your party। 5 मिनट का समय मान्यवर मुझे दिया गया था पार्टी की तरफ से। 5:30 मैं मंत्री ये जी कह को बोलना सकता है। हूं कि आज ये विधेयक एक लोकतांत्रिक परंपराओं की एक निष्पक्ष प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए तमाम प्रकार के प्रावधानों को करते हुए इसमें इसको लाया गया है और जो लोग ये समझते हैं कि ये सार्वभौमिक नहीं है, जो ये समझते हैं कि इसमें पक्षपात हो सकता है, मैं समझता हूं भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग आपस में बेमेल गठबंधन में रहे उनका भी ये कहना है कि अगर आज जेपी होते तो आज निश्चित रूप में जेपी होते तो आज वो कांग्रेस की जो उन मनोवृत्तियां थी, जो संविधान के विरुद्ध जो इमरजेंसी लगाने के उसका विरोध करते। मैं ये मानता हूं कि आज का श्री विनय विश्वम जी है पूर्णतः न्याय संगत और लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुरक्षण करने वाला ये बिल है। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। Sir, how many minutes? 2 minutes। 2 minutes। No, sir. The total time allotted was 6 hours for this bill. In that way, we have a right to have 6 minutes. But it is written here for 2 minutes. No. Tell me the reason. Please start. Your time is started. In 2 minutes, how can I talk on the important bill? It is given to everyone 2 minutes. No, sir. Total time 6 hours. Your time is running, sir. Please start. So from now onwards, I start for 5 minutes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, yesterday, this house saw a scene. Our friends of the BJP, all of them are very vocal in support of the Supreme Court. In high esteem, they placed the Supreme Court yesterday. And today, what you see, after 24 hours, they say that nothing is Supreme Court. They forgot their words yesterday. Sir, this is the BJP, sir. This is the BJP, sir. Sir, Ambedkar was quoted here very much. Our friend Shiva quoted him. And we all remember that words. That debate in the assembly, which was meant for the framing of the constitution, was very clear, sir. The categorical time is that election commission should be free from the executive interference, control. But they want to make it under the control of the executive, the Prime Minister. But for them, Ambedkar is only for certain hours, certain needs. Normally, they are following the footsteps of Hitler, sir. Hitler,
Hitler has total disregard for the parliaments. In the 1930s, Hitler even burned the Reichstag, the German parliament. And these people are trying to sabotage the parliamentary democracy. The election, the free and fair elections are not important for them. That's why they want to make... Please conclude, sir. Sir, no, sir. Election commission made by the bureaucrats, controlled by the Prime Minister, avoiding the dictates of the Prime Minister, is going to see that the one nation, one election theory of the BJP is going to make big damage to the country. And they want to make sure that only one party should do everything here. Sir, in 2018, Amit Shah made a statement for the workers of the BJP. Conclude, sir, conclude. Sir, last sentence. Amit Shah told, if we win the election in 2019, then for the next 50 years, we will control India. Sir, for that purpose, they bring this bill, sir. They want to make the election commission as a goat in their farmhouse. Thank you, sir. Thank you. In that way, Shrimati Mahua Maji. And the objective, sir. सर, इस बिल के पारित होते ही जो सबसे बड़ा धक्का हमारे देश को लगेगा वो ये है कि विश्व दरबार में जो 140 करोड़ जनसंख्या वाले जिस भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और सबसे बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ चुनावी प्रक्रिया के लिए सम्मान की नजर से देखा जाता था, उस देश के लोकतंत्र की शुचिता संदेह के घेरे में आ जाएगी। मैं अपने पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। यह अनैतिक है, असंवैधानिक है और बाबा साहब अम्बेडकर तथा संविधान सभा के सदस्यों की उपेक्षा है, अवहेलना है, असम्मान है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है, जो इस बिल के पारित होते ही असंभव हो जाएगा। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सत्ता पक्ष बहुमत में होगी, तो वह चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव कैसे कराएगी? जनता उस पर कैसे यकीन करेगी कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी नहीं हो रही है? हो भी सकता है। आधुनिक दुनिया के बहुत बड़े चिंतक है फ्रांस के फूको और इटली के अगम्बेन। उन्होंने भी कहा था कि जनतंत्र की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि ताजी जनतांत्रिक हवाएं अंदर आ सके। इससे देश मजबूत होता है। मगर लगता है कि इन दिनों आजकल मुसोलिनी और हिटलर ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। अभी जो चुनाव आयोग है वह देश का चुनाव आयोग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो बिल है वो चुनाव आयोग को भारत सरकार का चुनाव आयोग बनाना चाहता है। क्योंकि अगर आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटा देंगे और उस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को शामिल करना चाहते हैं, तो आयोग ठीक वही करेगा जो सरकार चाहेगी। आखिर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर क्यों करना चाहती है? बिल के अनुसार सरकार उनकी सैलरी भी इस तरह तय करना चाहती है कि वो सरकारी आदमी लगे। अभी उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी मिलती है, जबकि सरकार नए बिल में उसे मुख्य सचिव के बराबर रखना चाहती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और एजेंसियों के दुरुपयोग का इन दिनों सरकार पर लगातार इल्जाम लग रहा है। चुनाव आयोग को भी क्या वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? आखिर इस बिल की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों नहीं होना चाहिए? और इस कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, तो उसमें अगर वोट होगा तो उनके पक्ष में होगा, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की क्या जरूरत है? और सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है या कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने अनंत काल तक शासन किया। सत्ता परिवर्तन यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि हमारे साथियों के पास इसका कोई दृष्टांत है तो बताए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं सत्ता पक्ष से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ महोदय कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये तख्तो ताज का दौर नहीं, ये मुस्कुराहटों का दौर नहीं, ये जनशक्ति का दौर है, इंदु बाला गोस्वामी, सब कुछ 2 मिनट। हमारा यह प्यारा सा देश, मगर लोकतंत्र पर प्रहार नहीं। धन्यवाद। सुश्री इंदु बाला गोस्वामी 2 मिनट नहीं है। अब्दुल बहाव जी नहीं है। नीरज शेखर जी 2 मिनट। नीचे से संशोधित सूची मंगा लीजिए, संशोधित सूची आ चुकी है। मंगाओ जी मंगाओ। अजीत कुमार भुयान जी 2 मिनट। बोलिए सर।
democracy and the fundamental rights are the soul of the Indian Constitution, and the Election Commission has been a very strong instrument to utilize the confidence among people that their democratic right will be saved by getting elected representatives in a free and fair election process. Sir, there has been an amendment in the process and the manner of appointment of the Election Commission way back in 1991, when one-member commission was converted into three-member commission to avoid monopoly of one individual, and that amendment was supported by all political parties, including BJP. But now the amendment that has been put for consideration in the Parliament has no consensus component and rather a bulldozing act. Sir, the Election Commission must be perceived and honored as independent. Then democracy will flourish. I am sorry to say the election of an election commissioner will be compromised if the government of the day has a majority monopoly. The removal of the Chief Justice of India from the selection process will certainly create a strong doubt in the minds of the people of opposition that the incumbent government has malicious intent. Sir, my sincere suggestion will be, if the government of the day seems to be seen as judicious in amendment of ECI Act, Prime Minister and leader of two major political parties should be made members of the selection process. Sir, two members from the government and a third member from the opposition cannot be a fair and unbiased selection committee of the ECI appointment process. In the wisdom of every layman, the proposed bill is nothing but a majority bullet to the soul of the Constitution. However, the bill that has been put for consideration is not going to create confidence when already several political parties and individual constitutional experts have expressed doubt about the partiality of the ESI. Why not two major opposition party leaders in Lok Sabha and the Prime Minister constitute a panel of the selection process to appoint the Election Commission of India? I will conclude, करो सब कुछ, लेकिन ऐसा ना करो कि लोगों का विश्वास ही टूट जाएगा लोकतंत्र से। लोकतंत्र रहेंगे तो आओगे जाओगे, लेकिन अगर नहीं रहेगा लोकतंत्र तो कैसे फिर आओगे? थैंक यू। सुश्री कविता पाटीदार 2 मिनट। माननीय सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूं। लेकिन अपनी बात की शुरुआत करने के पहले अभी एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राजा ऐसा नहीं रहा जो अनंत काल तक रहा है। मैं उसका जवाब देना चाहती हूं कि राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित, बिना किसी भेदभाव के लिए राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले लोगों को इस देश की जनता सिर माथे पर बिठाकर चलती है, और आने वाला अभी 3 राज्यों का जो परिणाम हुआ वो इसका समक्ष उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, भारत का चुनाव आयोग भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को रीढ़ प्रदान करता है। यह चुनावी अखंडता का संरक्षक है। यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और निष्कासन के प्रावधानों को एक रूपता प्रदान करता है। अभी मैं 2 बिंदुओं पर बोलना चाहूंगी माननीय महोदय। कुछ सदस्यों ने जो विपक्ष के हैं उन्होंने ये कहा कि ये बिल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यह विधेयक चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही लाया गया है। न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से केवल तब तक करने का प्रावधान किया था जब तक कि संसद एक कानून पारित नहीं कर देती। वर्तमान विधेयक केवल न्यायालय द्वारा फैसले में दिए गए निर्देशों को पूरा करता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार अंतिम संसद को होता है। और चूंकि न्यायालय ने एक तदर्भ समिति बनाई थी, न कि स्थायी, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था
कि यह मापदंड तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संसद इस मामले पर कानून नहीं बना देती, और ये कानून बनाने की प्रावधान आज इस संसद में शुरू हो गई है। महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना है, जिसमें विधेयक में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की परिभाषा, नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यताएं, खोज और चयन समिति की स्थापना, कार्यकाल की अवधि, वेतन, इस्तीफा, निष्कासन, पेंशन आदि शामिल है। एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में बोलना चाहूंगी माननीय आपके महोदय, आपकी अनुमति से, जो बहुत जरूरी है, कि वास्तव में इस विधेयक के साथ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की भूमिका भी होती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में विपक्ष के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या विपक्ष द्वारा शासित कोई भी राज्य अपने राज्य Chairman, sir. 2 minutes. Thank you. Sir, Judge. Thank you, Manya Kavita ji. Thank you. Sir, I was holding as a 2 minutes. election commission also when I was Minister of Law and Justice Company Affairs. During 98-99, I was the law minister, and also so many law ministers we have seen. 77 years. Why the bill has not come, I couldn't understand. Now, recently, because of the Supreme Court interference, the bill is coming. I don't know what is the necessity, this one part. Second, sir, as for 71 years, we are the election commission conduct the elections very fairly. Otherwise, we would not come here. What is that? Therefore, we cannot blame the election commission bringing this kind of bill, one thing. Second, regarding some of the members from that side, dynastic politics, they said. As far as the ADMK party is concerned, our party General Secretary Edapadi Palaniswamy made it clear in the ADMK party there cannot be any dynastic politics. That what followed by Anna and also MGR, Procedural Amma, all we never followed the dynastic politics. It is a democratic way our party is functioning. In that way, we follow that. Second, sir, regarding the when I was law minister at that time, Gill was the election commissioner. I know very well. I never interfered, and also you functioned independently. Sir, now you appointed me as chairman of the assurance committee. The election reform for that, we called the election commission to appear before the committee. The election commission said we cannot appear before the committee because we are the independent body. You can call the only ministry. Therefore, such a way, the election commission is still having independent functioning. Government is not interfering. Thank you. I don't think there is any necessity this kind of. Deepak Prakash, 2 minutes. मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हूं सर। यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया जो अमृत काल में है। ये गागर में सागर भरने वाला बिल है सर। और ये विधेयक 2015 की रीट के बारे में कांग्रेस के कई सदस्यों ने चर्चा की। वो आधा अधूरा निर्णय को सदन के पास ला रहे हैं, लेकिन सच में ये बिल, ये विधेयक जो है सो इससे निर्णय के अनुसरण में लाया गया है। उसी अनुबर्णमाल बनाम भारत संघ के जो निर्णय आए थे उसी के अनुसरण में लाया गया है, और उसके अनुसरण करते हुए सदन को अधिकार है कोई कानून बनाने का और कोई कानून को निरस्त करने का। और हमको फक्र है, हम सब लोगों को फक्र है कि हम उस सदन के सदस्य हैं जहां कानून बनता है और कानून को निरस्त किया जाता है। यह सदन, इसमें इस पूरे विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है सर, तथा लोकतांत्रिक ढंग से इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई गई। और मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में कांग्रेस के कालखंड में जब नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी तो पहले क्या सर्च कमेटी होती थी क्या? पहले कोई चयन समिति होती थी क्या? पहले कोई कांग्रेस के समय में न सर्च कमेटी होती थी, न चयन समिति होती थी, और खाता ना बही, जो एक परिवार कहे वही सही होता था दोस्तों, यही सही होता था। इसलिए मैं सामने बैठे हुए कांग्रेस के मित्रों, विपक्ष के मित्रों से इस चिंता को, बस 1989 में जब चुनाव आयोग में एक सदस्य होता था तो उस वक्त एक ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 लोगों को
जोड़ दिया था, उस वक्त नियुक्ति की प्रक्रिया कहां चली गई थी? 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उस वक्त फिर एक सदस्य, 1 मिनट सर, हमको संरक्षण दे दिए सर, 1 मिनट। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो फिर से एक आयुक्त की नियुक्ति हुई, लेकिन 1993 में जब सेशन के द्वारा चुनाव आयोग की सुधार की प्रक्रिया तेज हुई तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक और आयुक्त को बना करके Shri G.K. Vasan, sir, 2 minutes. Yeah. Sir, as a modern democracy, the mammoth onus of conducting election is on the CEC, sir. We have witnessed ballot boxes being carried through rough areas in this country, sir. As part of a successive exercise of voting for crores of people in the country, sir, my party feels that time to time it is necessary that we review the functioning of electoral system, streamline procedures, and also provide adequate resources for smooth and conduct of elections, sir. As part of this exercise, successive governments have brought amendments to electoral laws like the Representative of People's Act, sir. Today, the law is enacted with lot of riders, sir, to get the confidence of the voters, sir. Election committee, selection committee, search committee, qualification committee, so that free and fair election will take place in the country, sir. I am sure, sir, lot of members concerned, minister will address, sir. With this, I conclude, sir. Thank you, sir. Very effective. Shri Ajay Pratap Singh, 2 minutes, sir. आदरणीय सभापति महोदय, सदन में जो बिल प्रस्तुत हुआ है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे साथियों ने इस बिल के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं। हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, लेकिन मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस देश में चुनाव में कदाचरण के कारण अगर किसी का चुनाव निरस्त हुआ है, देश के ऐसे पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनके विरुद्ध फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप देश को एक इमरजेंसी भोगनी पड़ी थी। दूसरा, मैं इनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग की ताकत का एहसास टीएन शेषन साहब ने इस देशवासियों को कराया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता क्या होती है, चुनाव आयोग की निर्भीकता क्या होती है, तो चुनाव आयोग के पांव में बेड़ी डालने का अगर काम किया है तो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए आज जब ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात करते हैं तो इनकी बातें थोड़ी सी बनावटी लगती हैं। हमारे साथियों ने इस बहस में भाग लेते हुए कहा है कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान में जो चयन समिति बनाई गई है उसमें विपक्ष के नेता को रखा गया है, बहुमत सत्ता पक्ष का रखा गया है। और जो वोट की बात करते हैं, अगर विपक्ष के नेता को रखा गया है, सत्ता पक्ष के लोगों को रखा गया है, तो आपस में डिस्कस करके एक अच्छे निर्णय पे पहुंचने के लिए कहा गया है। हर समय हर जगह पर वोट की बात नहीं होती है। इस डेमोक्रेसी का अर्थ है चर्चा करना, चर्चा के पश्चात निष्कर्ष निकालना और इस देश की बेहतरी के लिए कुछ काम करना। तो जो चयन समिति बनाई गई है इस उद्देश्य से बनाई गई है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट प्रेजेंट श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, 2 minutes. Make most of it. इतनी लंबी स्पीच बनाकर आती हूँ, 2 मिनट की टाइमिंग की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है लिटरली, सर। The world record. The world record for 100 meters is 9 seconds. Thank you so much, honorable chairman, sir. सर, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना, इलेक्टोरल रोल्स करना, इलेक्टोरल रोल्स में जो अडल्ट्स हैं जो वोट करते हैं उनको एनरोल करना ही नहीं होता है। ये भी होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिस्प्यूट होती है या स्प्लिट अराइज करती है तो उसमें निर्णायक डिसीजन और निष्पक्ष डिसीजन लेने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। महाराष्ट्र में 2 पार्टीज का स्प्लिट हुआ, एक का अभी भी डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, एक का सुप्रीम कोर्ट में। मैं बस यही कहना चाहती हूँ सर, अगर इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस 2:1 होंगे तो ये निष्पक्ष कहीं से नहीं होंगे। हर बार एक डिसीजन में बायस ही होगा।
और सेक्शन 8 जो इसमें इंट्रोड्यूस किया है उसमें ये हो गया है 1 वर्सेस नन। अगर प्रधानमंत्री जी ये निर्णय ले लें कि ये जो सर्च कमेटी के चॉइसेस हैं, सिलेक्ट कमेटी के चॉइसेस हैं, उनको किसी का पालन नहीं करना है, उनका खुद का एक कोई डिसीजन होगा, उसको भी मान्य रखा गया एज पर सेक्शन 8। तो मेरा मानना बस ये है, और रिक्वेस्ट, क्योंकि 2 मिनट, अच्छा मेरे पास 50 सेकंड और है सर। मेरा मानना बस यही है सर कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोर्ट करूंगी तो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, थैंक यू। अरे सर 50 सेकंड है, अभी 40 सेकंड है सर। मैं बस बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो स्पिरिट में कहा था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से इसको दूर रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी स्पिरिट में अपना ये जो उनका वर्डिक्ट था दिया था। तो उसी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन हैज टू बी टोटली फ्री एंड फेयर ऑफ बायस, और वो मैं आपके माध्यम से श्रीमती वंदना चौहान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Sir, 2 minutes मैम। Sir, the Election Commission plays an exceptionally important role in upholding the democratic structure of our country, sir. Test of credibility of the Election Commission is not only in the efficiency and the fairness of election, but also in the neutrality, where Election Commission has to show that it does not bow down to the ruling party, sir. Lately, turning a blind eye by the Election Commission when the ruling party netas delivered hate speeches or resorted to indecent character assassination or quoting false facts and figures. And on the other side, sir, putting behind bars members of the opposition, even at the slightest slip of the word or seemed like a slightest slip, shows the changing role of the once extremely credible Election Commission, sir. Sir, in my limited time, I will just touch upon 3 points. Sir, first question I would like to ask the Honorable Minister: why has the government not included the Chief Justice of India in the selection committee in spite of a specific directive in the judgment, in the Supreme Court ruling? Second, sir, with so much executive control with the Election Commission, will it not become a yes man of the present dispensation? Third, sir, Clause 6 says that the search committee is supposed to submit 5 members on the panel. So why only 5? Why not all members? And that too, after submitting the 5 names, it's up to the selection committee whether they want to accept it or not, or just shun it totally. Sir, with elections around the corner in 2024, with the sudden introduction of the bill, that too bypassing the order of the Supreme Court, the move is suspect, sir. This bill in the present form, my submission, sir, is a mockery of the expectations of the people and the democracy as a whole. Thank you, sir. श्री अर्जुन मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। My point of order, sir, is Rule 35, which I want to place on record. Rule 35, we have allotted, Business Advisory Committee has allotted 6 hours for this discussion. You were not present. I know, sir, we've had a discussion at the back. The government has forfeited 2.5 hours of time, of its own time. Honorable member, yes, you were sir. not present in the House. Sir, Sense of the, I will place on record, yes. No, it will not go on record. Once again, nothing will go on record. I have not given the floor. I have taken sense of the House. Leaders had spoken to me. The House had authorized it. Anyone questioning the House, if you are not present, no one can help you. Sorry. No, how can you? You are putting on record something which the House has approved. Sense of the House was taken. House is supreme. We can't allow this. I have gone by the House sense, Honorable Minister, to reply the discussion. धन्यवाद सभापति महोदय। अभी थोड़ी बात रिप्लाई के बाद क्लेरिफिकेशन ठीक रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज जो चर्चा हुई है बिल पर,
मैं आभारी हूं 26 ऐसे मान्य सदस्य जिन्होंने भाग लिया। चर्चा शुरू की श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कांग्रेस से, और समाप्त की वंदना चौहान एनसीपी तक। 26 लोग बोले। कुछ लोग जल्दी में बोले होंगे, लेकिन सुझाव बहुत शानदार थे, इसलिए मैं सभी का ही आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से। चेयरमैन सर, एक 91 में एक एक्ट आया जिसमें एक कमी रह गई थी, अदरवाइज ये हाउस में अभी चर्चा में ही नहीं आता। अब 91 में कैसे कमी रह गई उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। एक एक्ट बनाया, क्योंकि आर्टिकल 3 to 4 में पार्लियामेंट एक्ट बनाए, ये संविधान निर्माताओं ने कहा था, लेकिन गलती रह गई, 91 तक नहीं बना। 91 में बनाया, उसका शीर्षक था द इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। तो जब कोई पीआईएल में गया तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट में तो आपने एक्ट ही नहीं बनाया। और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3242 में ये कहा था कि पार्लियामेंट के द्वारा इसके अपॉइंटमेंट को, प्रक्रिया को लेकर के कानून बनाएंगे। ये एक लिमिटेड पर्पज के लिए मैं आपके बीच में आज खड़ा हूं। अब जब 91 में इसमें कमी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कानून बनाओ। तो कानून बनाने के समय उन्होंने जब तक कानून नहीं बने तब तक उन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, और बार बार उसी का ही जिक्र कर रहे थे कि संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान का कहना, संविधान ने कहा उसको नहीं मानते हो। मैं, आप चूंकि संविधान के ज्ञाता हैं सर, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 3 to 4 भी संविधान निर्माताओं ने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा संसद कानून बनाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए। और आर्टिकल 50 भी, चेयरमैन सर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आर्टिकल 50 भी संविधान निर्माताओं ने ही बनाया, जिसका पर्पज है सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये सेपरेशन ऑफ पावर भी तो आर्टिकल 50 है। हम उसके तहत ये बिल लेके आए हैं। नहीं, लेजिस्लेचर में भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हाँ, लेजिस्लेचर में भी डिफरेंस नहीं करेगी, बिल्कुल। सब अपना अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, लेजिस्लेटर अपना काम करेंगे, और जुडिशरी अपना काम करेंगे। ये जो आर्टिकल 50 है, ये संविधान निर्माताओं ने तो डाला साहब, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं, हम भी मानते हैं। और हमें सुरजेवाला जी ज्ञान दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे, 1-2-3 उन्होंने कहावतें कही, तो एक कहावत मैं कहूंगा सर आप राजस्थानी है, मारवाड़ी जानते हैं, वो बैठे भी होंगे। आप सुरजेवाला जी, शायद आपने हिये में कांक्षी नहीं फेरी। हिये में कांक्षी, हिया का मतलब यहाँ हृदय होता है, और उसको आप ऐसे कबीर की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि आपने अंदर झांक करके नहीं देखा। और अगर अंग्रेजी में बोलूं तो आप जो बोल रहे थे सारी कहावतें, वो ठीक नहीं थी। आप those who have not introspected themselves, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। आपने नवीन चावला साहब को कैसे बनाया जी, पता है? MS गिल साहब को कैसे बनाया जी? आइडियोलॉजी सबको पता थी, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम आज एक लिमिटेड पर्पज के लिए आपके बीच में है। मैं 2-4 जो मौलिक प्रश्न आए, जैसे अमर पटनायक साहब ने बहुत मौलिक प्रश्न उठाए। नहीं, ये मैं कांक्षी नहीं फेरी, मैंने इतना ही कहा था। हिये मतलब मारवाड़ी में हिये का मतलब हृदय, और कांक्षी फेरने का मतलब उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो निकलती है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो, जैसे कबीर ने कहा अंदर झांक करके देखो। तो इन्होंने अंदर झांक के देखा ही नहीं, हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। संविधान को भी नहीं, उन्होंने कहा संविधान से ऊपर कोई नहीं। भाई कोई नहीं, हम भी मानते हैं। आप भी पढ़ लीजिए ना आर्टिकल 50, आप भी पढ़ लीजिए आर्टिकल 3 to 4। आपने 91 में कानून में कमी क्यों रखी? मैं फिर बाबा साहब को याद करते कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949, इन्होंने भी कोट किया, मैं भी कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में हैं और जिनके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती, जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद, उन बुराइयों को सुलझाने में विलंब नहीं करे। ये बुराई थी साहब, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस कोई भी कर जाता था। अब ये तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना साहब, सबको पता है। अच्छा, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? अब इस देश के जनता ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान का पहला वाक्य है।
और जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना, और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। साहब ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये कैसा आर्गुमेंट कर रहे थे, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है क्या? और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जो हमने इसमें सिलेक्शन कमेटी में दिया, उसका तो जिक्र ही नहीं किया जिसने भी बोला। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं साहब, ऑपोजिशन लीडर इतना कमजोर है, ऐसे करके क्यों मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहता हूं साहब। ये लिमिटेड पर्पज के लिए बिल है। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया था मैंने। 91 के एक्ट को हम रिप्लेस करके ये बिल लेके आए हैं। अपॉइंटमेंट का इसमें प्रावधान नहीं था, इसलिए अपॉइंटमेंट का प्रावधान इसमें जोड़ा है। और ये 2 मार्च 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मैंने उसमें यही कहा था। उन्होंने कहा कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनावे तब तक हम ये कमेटी बनाते हैं। तो कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ही लेकर के आ रहे हैं कानून। जो मैं अमर पटनायक साहब ने कहा रिमूवल, सर रिमूवल का प्रावधान जहां तक मैं समझता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके और उसी ग्राउंड के आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है, वही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में होगी। जहां तक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है सर, आर्टिकल 3 to 4 में लिखा हुआ है। जहां तक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात है, इसके विषय में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत क्लॉज 5 के तहत प्रावधान है कि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। ये दोनों चीजें क्लियर है जो आपने मुद्दा उठाया था, इसलिए मैंने इसको जिक्र किया। दूसरा, किसी ने कहा साहब ये जो चुनाव नहीं कराते हैं वो चुनाव को क्या जानते हैं साहब। अब साहब मैं भी जिले में जिला कलेक्टर रहा, उस समय तो हमने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, तो क्या हम चुनाव नहीं कराते थे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगी। सरकार भी निष्पक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में जो जितनी भी संस्थाएं वो निष्पक्ष तरीके से काम करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है ही साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। हाँ, आप तो मैंने अभी MS गिल साहब का नाम लिया, मैंने चावला साहब का नाम लिया। अच्छा, जिस समय अभी किसी ने जिक्र किया, ठाकुर साहब ने कहा या पता नहीं किसने कहा कि अभी JP होते तो हमारा विरोध करते। मैं स्पष्ट कहता हूं साहब, अगर जयप्रकाश नारायण जिंदा होते ना, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन 100% नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मनोज झा साहब नरेंद्र मोदी जी का ही समर्थन करते। सर एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी मैं लेकर के आया हूं। जब ये मूल बिल आया था उसमें काफी चीजें आई थी चर्चा में, तो एक सरकार संवेदनशील है इसलिए सोचती है। माननीय मंत्री जी, जी रणदीप सुरजेवाला जी ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, उन पर तो आप सहमति व्यक्त कर सकते हो। इन्होंने खास तौर से 4 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, मैं सहमति प्रकट करता हूं। मतलब ये नहीं, ये निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता, मुझे याद भी है सर, शुचिता। फिर इन्होंने अनुरोध किया था कि इनका संरक्षण कीजिए। बोलिए। इन्होंने हिये में काम से नहीं फेरी सर, वो विषय एक ही था। देखिए सर, जो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आया हूं, इसमें एक क्लॉज जो 6 था उसमें सर्च कमेटी, उसको थोड़ा हमने चेंज किया है। वो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी, अब वो लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में है और 2 सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं। सैलरी का विषय जो कई सदस्यों ने रखा, त्रिची सुहा साहब ने भी रखा सैलरी का विषय, लेकिन ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी का प्रावधान कर दिया गया है। कंडीशन ऑफ सर्विस, ये क्लॉज 15 में हमने एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है जिसमें राष्ट्रपति रूल्स को नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे, ये प्रावधान हमने कर दिया है। और एक हमने क्लॉज 15A जोड़ा है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महबूब नगर में तेलंगाना में एक विषय आ गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को किसी ट्रायल जज ने नोटिस भिजवा दिया था। तो
प्रोटेक्शन से संबंधित एक क्लॉज हमने जोड़ा है 15A में। सीसी या ईसी अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे, ड्यूटी करते समय सुनवाई या कोई भी आदेश देंगे, तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये प्रोटेक्शन की बात हमने कही है। मैं 2-3 चीजें और कह करके अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप भी 6 बजे तक कह रहे थे वोटिंग का विषय। एक आपने कहा कि आईएसी क्यों, माननीय साई सुरजेवाला जी ने कहा था, अब तक तो 47 से तो ये 51 और 2 से तो चुनाव हो ही रहे ना सर। चुनाव आयोग की शाख भी बढ़ी है देश में, तो अब तक तो कोई गड़बड़ हुई नहीं ऐसी। और ये कह रहे हैं कि एक हमारे चड्डा साहब कह रहे थे, बैठे हैं शायद, ये कह रहे हैं कि आप तो किसी को भी बना सकते हो। साहब क्वालिफिकेशन दिए हुए आप बिल तो पूरा पढ़ लो, इसमें क्वालिफिकेशन दिए, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार ही बनेगा, किसी को नहीं बना सकते। सेक्रेटरी रैंक क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो आपको बिल तो पढ़ ही लेना चाहिए था। जब आईएएस ज्वाइन करेंगे तब। दूसरा साहब, मैं ये जो जवाहर सरकार साहब ने कुछ मुद्दे उठाए, आपने अच्छी बात कही कि साहब बाढ़ आ गई थी, बोट पे भी नहीं, अच्छी बात है, बोट पे भी चुनाव की प्रक्रिया। मैं तो राजस्थान का रेगिस्तान का रहने वाला, सब धो रहे हैं मेरे यहाँ तो सैंड ड्यून से। मैंने देखा हम ऊंट पर बैठ करके वोट देने जाते थे। चुनाव आयोग की इतनी खासियत है कि हमारे जो दूर गांव था उसके लिए ऊंट गाड़ा रखते थे कि ऊंट पे बैठ करके वोट देने जाओ। तो ये सब प्रक्रियाएं होती रही है साहब चुनाव आयोग ने, और ऐसे हम ईयर टू ईयर, इलेक्शन टू इलेक्शन सीखते आए, और चुनाव आयोग ने अपनी साख भी कमाई है और निष्पक्षता भी बरकरार रखी है। एक विषय जो कहा चड्डा साहब ने, पता नहीं कांग्रेस पार्टी कैसे लेगी मुझे पता नहीं, इन्होंने कहा आप कुछ ऐसे अमेंडमेंट कर लो, मेरे सुझाव मान लो, मैं सारे अपोजिशन को एक कर दूंगा। तो ये क्या खड़गे साहब का रूप धारण करके बोल रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को हो गया था। मैंने कहा क्या विषय था है? No, Randeep Surjewala ji, no reflection has been made to you. No, not attributing to you. Not attributing to you. No. I've taken note of it. Attributing neither to you, कहा था सब, मैंने सुना not to Mr. Raghav आपने कहा था कि आप मेरे सुझाव मान लो, सारे अपोजिशन को मैं एक कर दूंगा। तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह बोल रहे थे, तो मैंने कहा आपने खड़गे साहब का स्थान ले लिया क्या? मैंने इतना ही कहा। This is a lighter moment. Go ahead. अच्छा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये कोई जो हम बिल लेकर के आए हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत ही हम लेके आए हैं। संविधान के आर्टिकल 3242 में जो प्रावधान है उसके तहत ही लेके आए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 में है, संविधान में लिखा हुआ है, उसके तहत ही लेके आए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें। ये बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है। थैंक यू सर। एक सेकंड तिरुजी, एक सेकंड। Sir, there is no provision for clarification. No. I shall now put the. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Okay. One second. Sukhendu Sekhar Ray. No, he had indicated earlier also. I have only one constitutional point. Okay, one second. Because according to my party, this bill suffers from unreasonableness and arbitrariness. Why I am saying so? Because there is no reasonable nexus between the objects and the provision of bill, in as much as nothing has spelled out in the bill as to why the Chief Justice has been replaced by a minister, although the norm set up by the Supreme Court continued for long 8 years and continued to be held good. So why this replacement? There is no clarification from the minister. I shall now put the amendment. 1 second. Okay, Honorable Minister.
I shall now put the amendment moved by Dr. John Brittas for reference of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, appointment, conditions of service and term of office bill 2023 to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill to regulate the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by Election Commission and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following: Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Brittas, Professor Manoj Kumar Jha, Shri Ilamaram Karim, Shri Jos K Mani, Shri A. Rahim, Shri Tiruchi Shiva, Dr. V. Shivdasan, with instructions to report by the last day of the first week of the next 263rd session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Didn't call me personally. You are reading all the names. No. I move the amendment. No. You are part of a committee. No. Each and every member should be called and Take your ask seat. whether you are moving or not. Take your seat. Take your seat. 1 second, take your seat. Honorable members, I am scrupulously following the procedure. It was already indicated. Do you want to move? That has been moved. Now it is negative. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Shivdasan for reference of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service and term of office bill 2023 to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill to regulate the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Shri Ilamaram Karim, Shri A. Rahim, Shri Santosh Kumar P, Shri Binoy Vishwam, Dr. John Brittas, Dr. V. Shivdasan, with instructions to report by the last day of the first week of next 263rd session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. The question is that the Chief Election Commissioner and the other election commissioners' appointment, conditions of service and term of office bill 2023 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 4 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clauses 2 to 4 are adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 1 and 2 by Dr. John Brittas. Number 17 by Shri Ilamaram Karim. Are you moving the amendments? Sir. Are you moving amendments, yes or no? I am moving the amendment to make the EC amendments neutral. moved. I shall put the amendment moved by Dr. John Brittas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say. I think high decibel. I think the noes have it, the amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Ilamaram Karim to vote. Is he here? Yes, sir. Okay. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative.
I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 extends part of the bill. There are 4 amendments. Number 3 by Dr. John Britas. Number 18 by Shri Ilamaram Karim. Number 24 by K.C. Venugopal, not present. Number 33 by Shri Arjun Ram Meghwal. You move the amendments? Amendments moved. Except Shri K.C. Venugopal, who is not present. Shri Ilamaram Karim, is he present? Not present. Dr. John Britas? Yes. I shall put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. Ilamaram Karim not present. K.C. Venugopal not present. I shall now put the amendment moved by Shri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 6 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The clause 6 as amended is adopted. Clause 7 extends part of the bill. There are 8 amendments, 4 and 5 by Dr. John Britas. Number 19 and 20 Sir, I am moving the by amendments. Shri Ilamaram Karim, not present. Number 25 by Shri K.C. Venugopal, not present. Number 26 and 27 by Dr. V. Sivdasan, not present. Present, yes, noted. Good. Yes, I am moving. I have noted your presence. You are very elegantly dressed today. Yeah, because of Number 30 by Professor Manoj Kumar Jha, not present. Amendments moved as aforesaid. I shall put the amendments moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. You also think the same way. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. No. Vote. I'm putting it to vote. You say aye. So you are not convinced. So far not convinced. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. Well, Manoj Jha is not here. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 extends part of the bill. There are 2 amendments. Number 6 by Dr. John Britas. Number 31 by Professor Manoj Kumar Jha. You move the amendment? Dr. John Britas? Yes. No, your voice is loud At enough. least I need to say in mic, no? I move the amendment, sir. Honorable members, now it is 6 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6 p.m. for disposal of the bill. I shall first put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put the clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted.
Clause 9 instance part of the bill, there are 5 amendments. Number 7 and 8 by Dr. John Bitas. Number 21 by Sri Ilamaram Karim, not present. Number 28 by Dr. V. Sivdasan. Number 32 by Professor Manoj Kumar Jha, not present. I shall put the amendments moved by Dr. John Bitas to vote. Those in favor will please say aye. It's a feeble voice. Good. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. That's better. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. There are 8 amendments. Number 9 to 13 by Dr. John Bitas. Number 34 to 36 by Shri Arjun Ram Meghwal. Moving. I shall first put the amendments moved by Dr. John Bitas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Shri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 10 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 10 as amended is adopted. Clause 11 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 14 by Dr. John Bitas. Number 37 by Shri Arjuna Meghwal. Moving. Moved. I shall first put the amendment moved by Dr. John Bitas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 11 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 11 as amended is adopted. Clause 12 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13 stands part of the bill. There is 1 amendment. Number 15 by Dr. John Bitas. Amendment moved. Sir, I am moving the amendment, sir. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 15 stands part of the bill. There is 1 amendment. In the long race, at last, Dr. John Bitas has made an exit. Sir, number 38 sir, is by I am Shri moving, Arjun sir. Ram Meghwal. Sir, the amendment, Your amendment is not to there. protect the election commission. Amendment moved. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 15 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 15 as amended is adopted.
Insertion of new clause 15 capital A. There is one amendment for insertion of new clause 15 capital A number 39 by Shri Arjun Ram Meghwal. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put new clauses 15 capital A to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 capital A is adopted. Clause 16 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 stands part of the bill. There are two amendments. Number 16 by Dr. John Bitas. One second. Number 29 by Dr. V. Sivdasan. Yes, Dr. John Bitas. Thank you, sir. You move the amendment. Sir, I'm moving, sir. I'm moving the amendment, sir, to Thank protect you. election Amendment moved. I shall put the amendment moved by Dr. John Bitas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. You moved? Yes, sir. I'm putting it to vote now. Yeah. Those in favor will please say aye. Please. You have a support. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 17 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clause 18 stands part of the bill. There is one amendment. Number 22 by Shri Alamaram Karim, not there. I shall now put clause 18 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 is adopted. Clause 19 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 23 by Shri Ilamaram Karim. Numbers 40 to 43 by Shri Arjun Ram Meghwal. Amendments moved. I shall put the amendments moved by Shri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 19 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it, the ayes have it. Clause 19 as amended is adopted. Clause 20 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Arjun Ram Meghwal to move that the bill as amended be passed. Honorable Chairman, sir, I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. No, you were not required to stand. You were not required to stand. No, sitting. Sitting. Otherwise, if people rise to say yes, ayes and noes,
while sitting. The bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 13th December 2023.